una experiencia sin anuncios en chess.com. Aparecerás en nuestra lista de streamers en vivo. Tu stream en Twitch se visualizará en tu perfil de chess.com y tu transmisión estará vinculada a tus partidas en nuestro servidor de juegos. Escribe comando Community Streamer en el chat y empieza a desarrollar y hacer crecer tu stream hoy mismo. Hello, chat. We are live with day 8 of the Tata Steel Chess Tournament. What a match it has been. What a tournament it has been so far. मजा ही आ गया है बिकॉज सारे इंडियन प्लेयर्स धुआंधार बैटिंग करते हुए. वेलकम चैट. क्या मूड है आज भाई? रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे भाई. देश आगे बढ़ रहा है और होपफुली हमारे इंडियन प्लेयर्स उनके साथ साथ उनको देश को आगे ले जाते हुए. यू कैन सी कि आज की पेयरिंग्स भी बड़ी खतरनाक है. कैमरा भी बेचारा इतने वेट से अपना ऐसे क्रम्बल हो रहा है. एंड क्या खतरनाक पेयरिंग्स है नीरी भाई. एक बार हमें आज की दिखाई दो बिकॉज आज अगर आपने टाइटल पढ़ा है तो कुछ क्रेजी मैचअप है एंड स्टैंडिंग से हमें पता लगेगा उस मैचअप की एक्चुअल वैल्यू. लगा दो नीरी भाई जल्दी से. साज भाई 2 मिनट लेट है. आई थिंक उनको सुसु आ गई थी, वो आने वाले हैं. एंड यू कैन सी गुकेश on top with 5 points. कल हरे कृष्णा को हरा के वो भी लीडर्स को ज्वाइन करे. The leaders earlier were Nodirbek as well as Pragg. And दोनों इंडियन लीडर्स का आपस में मैच है. It is Praggnanandhaa R versus Gukesh Domar Raju. तो बड़ा मजा आएगा भाई. And you can see the pairings. Hari Krishna against Anish Giri will be an important match for Hari to strike back. वहां से Arjun against Sarana, such an important match. अगर अर्जुन को कॉन्फिडेंस वापस चाहिए, इससे बेटर ऑप्शन नहीं मिल सकता. एंड वाइट पीसेस है, स्लाइटली वीकर प्लेयर है,
लेट्स गो फॉर द विन. एंड लियोन अगेंस्ट जॉर्डन. जॉर्डन भी कल बढ़िया गेम खेले प्रग के साथ, बढ़कर एक भी गेम तक टूर्नामेंट जीते नहीं है. सो दैट कुड बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर लियोन टू गेट हिज फर्स्ट विन इन दिस टूर्नामेंट. चैट बहुत मजा मिला. लेट्स हैव द कैमरा ऑफ गुकेश वर्सेस प्रग, प्रग वर्सेस गुकेश, ताकि हम लोग देख सके दोनों प्लेयर्स की एंट्री. एंड चैट अपनी प्रेडिक्शन स्पैम कर दो भाई. हु डू यू थिंक विल विन? विल इट बी गुकेश विनिंग, विल इट बी प्रग विनिंग, और विल इट बी अ ड्रॉ? जल्दी स्पैम कर दो भाई. बड़ा 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 मजा आने वाला है भाई. एंड अनीश अगेंस्ट नोदरबेक. अच्छा कल का पता नहीं, शायद आई थिंक कैमरा लग गया, पता नहीं कल का कैमरा कैसे आ गया भाई. यो साहब वसा बस बढ़िया भाई, बिल्कुल चंगे सी रेडी सी, बस कैमरा लग जाए तो बस मजा आ जाए. कैमरा काफी हिल रहे हैं, ड्रैग हो रहे हैं. यू नो आई थिंक दे आर आल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट द मैचेस. Best case scenario, career won by Pragg and Gukesh draw and Nodrbek loses. I think that will be amazing for India overall. But I can assure you one thing. जो सारे इंडियन प्लेयर्स हैं, दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ दिस एज अ इंडिया इवेंट. दे आर थिंकिंग हाउ कैन आई प्ले माई बेस्ट चेस एंड गेट सम गुड रिजल्ट्स. तो मुझे लग रहा है प्रग विद द व्हाइट पीसेस विल ट्राई टू डिफीट गुकेश, बिकॉज एट द एंड गुकेश इज द वर्ल्ड चैंपियन. उनको हरा के ही कैन एक्चुअली मेक अ ह्यूज स्टेटमेंट. इमेजिन इफ प्रग डिफीट्स गुकेश, जैसे कार्लसन को हरा के ही इतना वो ट्विटर पे उन्होंने एंगेजमेंट लिया था, वैसे ही इस बार ही कुड मेक अ स्टेटमेंट कि ही इज देयर टू स्टे एंड 2025 इज गोइंग टू बी हिज ईयर. लेकिन गुकेश ऑन द अदर हैंड वुड लव टू एटलीस्ट ड्रॉ एंड इवन विन दिस गेम टू टेक सो लीड इन द इवेंट एंड ऑल्सो प्रूव व्हाई he is the world champion. तो एक राइवलरी जरूर होगी. एंड देयर वी सी इट. इस बार प्रग है अपनी हुडी है वहां पे रखते हुए, गुकेश की हुडी वर्सेस प्रग की हुडी. देखेंगे भाई कौन सी हुडी में ज्यादा वैल्यू है. रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया? रिजल्ट नहीं भाई, ये तो प्रिडिक्शंस है भाई. हम इंसानों का काम क्या सिर्फ प्रिडिक्शंस करना. वी कैन सी अना देयर टेकिंग सम पिक्चर्स एंड दोनों प्लेयर्स फुली फोकस. साथ में ही बड़े हुए हैं दोनों प्लेयर्स, साथ में ही कितने कोचिंग कैंप्स किए हैं, साथ में ही सीखे हैं, साथ में ही कैंडिडेट्स भी खेले थे. लेकिन एज वी नो फ्रॉम कैंडिडेट्स, दे विल नॉट शाई अवे फ्रॉम बेसिकली जस्ट चेजिंग अ विन इवन अगेंस्ट देयर ओन फ्रेंड्स. एंड दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ दोस केसेस. एंड यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैच. Oh man, मजा आने वाला है. प्रग लुकिंग एट द कैमरा. यो प्रग, व्हाट्स अप. मैंने प्रग से पूछा था व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द रेस्ट डे, जो कल है. ही सेड रेस्ट डे में मैं रेस्ट करता हूं. तो वेरी ब्रेव वर्ड्स बाय प्रग देयर. एंड कल ऑफ कोर्स दोनों प्लेयर्स रेस्ट करेंगे, बट नॉट आफ्टर बैटल फॉर ब्लड. आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है. गुकेश आराम आराम से पीसेस एडजस्ट करते हैं अपने टिपिकल स्टाइल में, एंड प्रग डूइंग इट वेरी वेरी क्विकली. चैट आई नो आपने कई लोगों ने प्रग लिखा, कई लोगों ने गुकेश लिखा, कई लोगों ने ड्रॉ लिखा. मैन आई डोंट नो यार, आई डोंट नो. I think either way the best part is we will be happy. कोई ना कोई इंडियन को रिजल्ट मिलने वाला है, सो हम लोग खुश रहेंगे. लेकिन a lot is at stake, क्योंकि जो जीतेगा he will likely be in sole lead, because वहां पे नोदरबेक is playing inform Fedosi. Fedosi खतरनाक फॉर्म में है, so will not be super easy to wait. हाँ, he's playing Nodrbek. Yeah. So will not be easy at all वहां से जीतना. So maybe let's expect a draw there. तो यहाँ पे जो भी जीतेगा very likely could take sole lead. गुकी विन कह रहे हैं, let's go गुकी विन draw. बहुत सारे रिजल्ट्स चैट में चल रहे हैं. प्रग ने पानी पीना चालू कर दिया है एंड गुकेश ने मेडिटेट करना. अपना अपना स्टार्टिंग मूव दोनों प्लेयर्स खेल चुके हैं. फिनिशिंग मूव आई थिंक प्रग का पानी पीना है, गुकेश का ओपोनेंट के पीछे चलना है. तो फिनिशिंग मूव किसका पहले आएगा वही देखना बाकी है. आज गेम खतरनाक है. एंड चैट नॉट टू फॉरगेट, एज तालियां बज रही है, आई थिंक इट्स इन प्रिक्लूड टू जो मैं अगला स्टेटमेंट मारने वाला हूं. टुडे वी विल हैव अ स्पेशल गेस्ट जॉइनिंग अस एट 8 PM. कैनेडा गेस्ट. अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं तो आपको पता है वो कौन है गेस्ट. बताओ भाई चैट, हु डू यू थिंक विल जॉइन द ब्रॉडकास्ट टुडे, इफ यू कैन टेक अ गेस और इफ यू ऑलरेडी नो. हिंट दूंगा कि भाई ही वाज वन ऑफ द रीजंस दैट गुकेश एक्चुअली वन द वर्ल्ड चैंपियनशिप. साल भाई कुछ देर पहले ही 3 आवर्स पकड़ के उठा. अरे भाई बहुत बढ़िया, सही टाइम पे उठे हो, क्योंकि रात हमारी है भाई एंड रात इन दोनों प्लेयर्स की. एंड चैट मेरा आपसे सवाल है कि व्हाट शुड बी प्रग्स फर्स्ट मूव, बिकॉज गुकेश विल बी इन क्रेजी ओपनिंग प्रिपरेशन, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप से जो तैयारी है. सो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रग को बहुत ही इज नोन टू प्ले सम क्रेजी टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक एंड ओपनिंग वेरिएशंस, जो कल भी उन्होंने देखा. तो आज क्या वो खेलेंगे पॉन E4, पॉन D4, पॉन C4, नाइट F3? व्हाट डू यू थिंक will be Prag's first move? And chat, some of you are absolutely correct. आज विशी आनंद will be joining us, the 5-time world champion. उनसे मेरे को ना गेम के बारे में तो पूछेंगे ही, उस एड के बारे में पूछेंगे यार कि हाउ वाज इट शूटिंग दैट एड विद गुकेश, बिकॉज आई थिंक इट वन ऑल आवर हार्ट्स. बड़ा मजा आया भाई वो एड देख के.
समय तो शो कर रहा है भाई। एंड देयर इट इज भाई, हैंडशेक्स। व्हाट विल बी द फर्स्ट मूव? चैट स्पैम कर दो। विल इट बी D4 E4 नाइट F3 C4 B3 G3? क्या लग रहा है फर्स्ट मूव होगी? प्रग थोड़ा टाइम लेते हुए इसके लिए, ऑलरेडी 15 सेकेंड्स इन। साज भाई आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं भाई। साज भाई अपना एलोवेरा का रूटीन करने में थोड़ा डिले हो गए थे आज। सो एलोवेरा का हंगरी में सारा खत्म कर दिया था उन्होंने। प्रोड्यूस तो ऑर्डर किया है इंडिया से, इंपोर्ट कराते हुए। Come on, Pragg bhai, let's go. Come on, E4, D4. Will he go for a theoretical line? That's the intent. Oh, Akela bhai. Sahaj bhai will join in the next 5 minutes and Vishista will join in the next 1.5 hours chat. So, aaj bada maza aane wala hai. We are looking at the future of Indian chess, bhai. The current and the future of Indian chess. Dono players. Well, this could be the world championship match of 2026 as well. हमने नोदुबे के अगेंस्ट भी कहा था, but Pragg is definitely a contender. And pawn to E4 played by Pragg. So critical variation. कोई opening battle होगी chat. Gukesh ने E5 खेला था last time, I think against one player, and this is what he plays today as well. E5 खेल चुके हैं, देखते क्या खेलेंगे यहाँ पे Pragg. Come on Pragg भाई, knight F3 कुछ, और knight F3 on the board. Knight C6 played very quickly by Gukesh. And यहाँ पे क्या Italian आएगा? Spanish. And Spanish played. सो नेपो ने कहा था भाई कि इटालियन के प्रो है प्रग, आज नई ओपनिंग ट्राई कर रहे हैं भाई। सो बिशप E5 नाइट टू F6। यो साज भाई, आज तो हाइप ही अलग है भाई। लुक एट द ओपनिंग, D3 आ चुका है भाई। वी हैव प्रग अगेंस्ट गुकेश। Wow, we have anti-Berlin on the board today. No more Berlin, but D3 भाई bishop ये C5. बर्लिन को ना बी स्टार नाम देते हैं ओपनिंग को, बिकॉज आई थिंक बर्लिन कहीं ना कहीं पे इट्स अ वेरी बोरिंग ओपनिंग। सो बी स्टार ओपनिंग आई है। एंड बिशप C6 प्लेड। साहब जहां तक मुझे आइडिया, विदित के अगेंस्ट कैंडिडेट्स में प्रग ने यही ओपनिंग खेली थी। एम आई करेक्ट और इनकरेक्ट? I it could be right, but there is someone joining who could actually answer this question very, very easily, just based off of his memory. So let's wait for that. नहीं, आई थिंक वो तो 8 बजे होगा। सो तब तक के लिए तो वी माइट इवन हैव सम क्रेजी टैक्टिक्स। तो वी माइट हैव सम करंट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, ऐड कैसे शूट किया मुकेश के साथ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट आज भाई। गेम तो देखते रहेंगे, गेम तो दोस्त देखते रहेंगे भाई। उनसे ट्रिप का मतलब पूछेंगे फिर से। What's up हाँ everyone? क्या चल रहा है? साज भाई बिल्कुल रेडी है। नीरी भाई लेट्स गो फुल स्क्रीन अगेन। ये छोटू बच्चू मुझे पसंद है, बट लेकिन वी वांट द प्रग कैमरा। जल्दी से प्रग विकेश लगा दो कैमरा, जल्दी से हमें देखना है। D6 के बाद डबल पॉन हो चुके हैं साज। एंड व्हाट कुड बी ब्लैक्स आइडिया? कुड इट बी बिशप G4? विल वी सी समथिंग बिशप G4 H3 H5? ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या साज भाई? मजा आ जाएगा भाई। ऐसा होता है एक्चुअली, बट लेकिन वो बिशप B5 A6 वाली लाइन में होता है, यहाँ पे तो नहीं होता। आई थिंक कि यू कैन टेक एंड आई थिंक गो ऑन नाइट टेक्स E5 एंड दैट कुड बी एन इशू। वेट, चल रहा है क्या ये? चल रहा है भाई, चल रहा है। भाई साहिल चल रहा है भाई भाई। ऑलरेडी नॉवेल्टीज निकाल चुके हैं भाई पोजीशन में। भाई व्हाट इज क्या करे गोइंग बस, ऑन? क्या करे भाई। विशेष के नाम से ही मेरी नॉवेल्टी निकल रही है। एंड 0 गेम्स इन द डेटाबेस हियर बाय द वे, एंड दिस इज अपेरेंटली वर्किंग। सो कांग्रेचुलेशंस टू जीएम भाई। चोर लो चोरी भाई, कर लो ओपनिंग थोड़ी यार। मैं कोई वो पेनल्टी नहीं डालूंगा भाई, रॉयल्टी नहीं चाहिए भाई कर लो। अगर उसने बिशप G4 H3 H5 खेला ना, तो आपको 5 मैगी मेरी तरफ से। भाई ये 5 मैगी भाई, फिर तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए भाई किसी का सेकंड होने का भाई। क्लियरली आई कैन फाइंड ओपनिंग आइडियाज भाई। वो भी 1 सेकंड में। क्या बात है भाई, क्या बात है। एंड हैप्पी रिपब्लिक डे साज भाई। अब तो देश भी आगे बढ़ रहा है एंड दोनों देश के प्लेयर्स आगे खेलते हुए। साज आई वाज जस्ट सेइंग कि भाई ये दिस मैचअप कुड बी द वर्ल्ड चैंपियनशिप मैचअप ऑफ 2026। या इट कुड बी आई मीन दिस नोदिरबेग प्रग। आई मीन 4 प्लेयर्स का हमने नाम लिया था बार बार, फाबी, हिकारू, नोदिरबेग, गुकेश। इन नोदिरबेग प्रग, इनमें से एक प्लेयर could very well be the next world championship challenger. क्या मैचअप होने वाला है भाई, we'll see. भाई प्रग मतलब ने do you पानी की think यहाँ बोतल। पे मतलब हाँ ज्यादा we will have a more करके साहज भाई का भाई ये क्या था? करके साहज भाई अटक चुके हैं भाई। हेलो साहज भाई, क्या हो गया था? I feel like जब भी मैं ज्वाइन करता हूँ ना, एक बारी तो होता है मेरा इंटरनेट। एक बारी मतलब शुरुआत में ज्वाइन करते ही जब तक it आप विशी सर के सामने नहीं अटकोगे ना, तब तक के लिए शगुन नहीं लगेगा उस बात पे भाई। सो वी नहीं हैव यार, टू आल्सो प्लीज शुभ गेट शुभ स्टक बोलो इन यार, फ्रंट ऑफ विशी सर। शुभ शुभ बोलो यार, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। एंड प्लीज। चैट जल्दी से 500 लाइक कर दो, मेंबरशिप जल्दी ले लो आज, बिकॉज विशेष आएंगे तो उस टाइम हम थोड़ी बिजी हो जाएंगे। एंड नो बिशप G4 बल्कि क्वीन टू E7। एंड साज आई डेफिनेटली रिमेंबर, आई थिंक ऐसे कुछ हुआ था जहां विदित वाज ब्लैक and Pragg was white and he had a couple of Pragg played a couple of games bishop C6, maybe it was after A6 yeah directly, but whatever. So Pragg is well knows the structure well, at least he understands this. And yahan pe what could be white's plan? Is it knight D2? Is it like rook E1? Is it exchanging bishops? What could white do here?
All of these are possible. Knight d2 is the most natural move यहाँ पे, जो सबसे logical चाल है. उसके बाद okay, he played actually, and उसके बाद idea होता है knight b3 and you harass the bishop. With a4 and bishop e3 something like that, you kind of force that bishop exchange. कभी bishop d2 भी खेलते हैं also, मतलब instead of bishop e3. That's also a plan. Knight c4 का भी plan हो सकता है. Both of them are possible in this position, but right now too early to say कि what he's planning. Too early. Yeah. Bishop g4 h5 तो अब भी possible है क्या साहिल भाई? I keep looking at this plan now. h3. Is it still possible? So let's figure it out. So bishop g4 is the main move here. And after h3, h5 apparently doesn't work now because of knight c4 and maybe there's some problem there. So maybe knight d2 is a preemptive move towards this. So it is kind of not the ideal version. Ab depth mein hum jate, but that is not relevant now because a5 played by Gukesh. Only 5 games on chess.com after a5. And look at Pragg. Second mein knight c4 khela. Bhai, he's like, मतलब हर ओपनिंग देख के आए हैं एंड नाउ 97 played quickly. By all both the players looking like very well prepared today. Yeah, I think they also could predict each other's, कि सामने वाला क्या खेलेगा, because they've worked with each other so many times. So maybe that could also be, a factor here. कि दोनों इतना fast इसलिए क्यों खेल रहे हैं. I'm pretty sure both of them could have kind of guessed कि ये opening आने वाली है आज board पे. But yeah. सहज साज भाई, भाई specs कहाँ है? हाँ, Wait a second, भाई. Wait a second. मैं दो ही सवाल पूछने वाला था. पहला ये था कि स्पेक्स कहाँ है. अरे नर्ड ओपन द चैट, लेट्स गो नर्ड ओपन द चैट. एंड दूसरा सवाल साहज भाई मेरा ये है कि डू यू थिंक गुकेश, बिकॉज ही इज अ डायनामिक प्लेयर, ही लव्स अटैकिंग एंड सो ऑन, हमें देखा कैसे उन्होंने बढ़िया ऐसे ग्राइंड करना पसंद है, इसलिए मे बी ही हैज गॉन फॉर दिस स्ट्रक्चरल ओपनिंग जहां पे ही इज डैमेजिंग द स्ट्रक्चर एंड ही इज सेइंग कि मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से खेलूंगा, मुझे कोई अटैकिंग पोजीशन नहीं खेलनी. इज दैट द लॉजिक हियर? Yeah, I mean, he wants to play a bit safe, solid, क्योंकि दोनों players, वो long game grind वाली, situation जहाँ पे आप रहती है, दोनों players are, very much up for that. So that could also be a reason. और also Berlin खेल रहे हैं. Berlin में तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो end game आती है या फिर, it's a long. One thing is for sure कि यहाँ पे game थोड़ा लंबा चलेगा भाई. भाई जितना लंबा उतना बेटर, बिकॉज विशी सर भी बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे एंड वी विल लव टू हियर फ्रॉम हिम, कि कैसा हाउ हैप्पी इज इट अबाउट इंडियन चेस ग्रोइंग सो वेल एंड कैसे दो इंडियंस टीम में से लीड कर रहे हैं. एवरीथिंग इज लुकिंग अमेजिंग. मे बी विल गेट हिज ओपिनियन ऑन अर्जुन, हाउ ही कैन कम बैक एज वेल फ्रॉम व्हाट ही इज फेसिंग राइट नाउ. बट फिलहाल के लिए बोथ द लीडर्स, टू टैलेंट्स फ्रॉम इंडिया, प्रग एंड गुकेश. एंड सहज, गुकेश के ब्लैक पीसेस हैं. सो do you think he's like, okay, draw is good enough, or is he just playing chess and he'll think later कि क्या करना है भाई? Draw is obviously a decent result, but दोनों player, अगर यहाँ पे प्रग भी black होता, it would be the same. अभी गुकेश भी black होता, it would be the same. ये हर game जीतने के लिए खेलते हैं. Doesn't matter the color, white and black. But yes, they're playing it safe, solid. इसका मतलब ये नहीं कि ये they are looking for a draw. But yeah, I mean, draw would be a very, a safe bet here. Yeah. दोनों प्लेयर्स को लगता तो नहीं कि कभी भी इनका एक्चुअली इनका क्लासिकल स्कोर क्या है. आई मीन साहिल भाई, इफ यू हैव टू टेक अ गेस कि क्लासिकल ओटीबी स्कोर इन प्लेयर्स में से ज्यादा, आई मीन, हु डू यू थिंक इज गेटिंग मोर विन्स हियर? I think Gukesh would be slightly ahead because, in my experience, dynamism holds power over static play somehow. But I could be wrong. Depends because they've played a lot. Yeah, growing up, they might have played in many age category tournaments. वहाँ पे क्या सिचुएशन रही होगी? But the best part is कि भाई जो भी आगे हो, आज हम खुश ही जाएंगे इस बोर्ड से, मुझे लग रहा है भाई, जो भी जीते. Absolutely भाई, absolutely. But मुझे लग रहा है actually Gukesh might have, from my memory, I could be right, but I'm not sure. Chat बता देना if you know any stat like that. Probably I could be right भाई, आपको भी मेरी तरह इनसिक्योरिटी है. लोग बोलते हैं probably I could be wrong. साहज भाई और मैं एक ही इनसिक्योरिटी की बोर्ड के अंदर है भाई. एंड फिलहाल के लिए बाय द वे, नाइट d7 के बाद इज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन प्रग इज थिंकिंग. यहाँ पे आई थिंक रफली कुछ 7-8-9 गेम में हुई है चेसकॉम पे जहां बिशप e3 हैज बीन द मोस्ट पॉपुलर मूव. a4 भी खेला गया है, c3 भी खेला गया है, इवन नाइट e3 भी खेला गया है गेम में. सो ऑप्शंस काफी हैं एंड प्रग इज कॉन्टेम्पलेटिंग क्या ऑप्शन. आई थिंक बिशप e3 लुक्स लॉजिकल, c3 a4 सब लॉजिकल लग रहे हैं. सो ही इज हैविंग हिज फर्स्ट थिंग एंड मे बी इट्स टाइम टू लुक एट अर्जुन्स गेम. चैट, मैं जहां पे कम्युनिटी पोस्ट पढ़ रहा हूं, जहां पे आर्टिकल पढ़ रहा हूं, अर्जुन के लिए एवरीबॉडी इज अ बिट वरिड समहाउ कि यार क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग विद अर्जुन, कैन वी हैव द अर्जुन कैमरा फॉर अ सेकंड. एंड आई थिंक दिस इज दैट क्वींस गैम्बिट लाइन विद क्वीन f3, yeah, and taking on f6 and damaging the structure.
Yeah. And यहाँ पे एक Magnus का game था, which was a model game as far as I can remember, because it was part Hmm. of my end game strategy course as well. कुछ तो Knight E2, Knight G3, Knight हाँ GF5 खेल के खेलना था. क्या बात है साहिल भाई को, हाँ देख रहे हो? साहिल भाई has read my course by the way. भाई, कोर्स नहीं भाई, मैं D4 खेलता था तो आपके कोर्स से मैंने अरे देख ली थी ये रहने गेम। दो. I will. जिस दिन साहिल जिस भाई दिन has read मैग्नस my ने course. Moving जिस on दिन chat. मैग्नस ने ये गेम देखी थी उसी दिन देख ली थी भाई मैंने जब खेला अच्छा था वो। अच्छा अच्छा. क्रेजी है. बट या नहीं नहीं नाइट नहीं, ई टू कोर्स नाइट जी कोर्स नाइट जी कोर्स एफ आई आसम, का हाँ होता है. हाँ हाँ, नाइट बोलो जी बोलो एफ भाई। आई का प्लान होता है एंड इसलिए प्रोबेबली मे बी सराना हैज पुट हिज बिशप ऑन बी4, मे बी ए3 प्रोवोक करेंगे तो कुछ कुछ वीकनेसेस आ सकती हैं, मे बी समथिंग अलोंग दोस लाइंस. अदरवाइज आपने नाइट तो पिन करके रखा ही है तो यू कैन नॉट गेट द एफ5 स्क्वायर. बट साहिल भाई, आई वुड से बिट ऑफ अ वियर्ड डिसीजन बाय अर्जुन in a position where probably he wants to play for a win. Of course, he wants to हम्म। play for a win. So it feels a bit strange, na, going into this endgame, which has a history of being a very safe, solid kind of an opening. And also, it goes against his style. Yeah, but the thing is, he might not have expected this opening. Yeah, कि black यहाँ bishop f5 खेल देगा. So he's just going with what he has prepared previously. So maybe this was a surprise for Arjun कि Hmm. यार bishop f5. I've not seen this being played for a while, at least the top level. So Arjun is going for what he considers is the best option here. And the question is, chat, what do you think? And Sahaj bhai, what do you think Arjun could do today to basically get his confidence back? Is it like a simple long grind? Is it just the result? Is it how he wins the game? Or is it just trying? I don't know. What can he do today to get his confidence back? I think winning the game would definitely bring some of it back for sure. और उसी के साथ साथ मुझे एक टैक्टिक भी दिख रही है यहाँ पे बढ़िया सी. Let's Hmm. say साहिल भाई, black goes rook g8, ठीक है? Hmm. White plays a3 Hmm. एंड ब्लैक कहता है मेरे को नाइट नहीं मारना, मेरे को बिशप d6 जाना है. White to play chat. What should white do? Ooh, nice, nice. Chat, let's go. White to play and get an advantage. What can he do? And chat कह रही कि भाई Arjun must win today. It's about the result. When his issues are coming, he'll come at around 8 p.m. or so. Chat. So जब you will be in the masala dala creme of the game, तब आएंगे वैसे सर अपनी insights देने के लिए. And फिलहाल के लिए how many rounds? 13 rounds in total. Chat. Yeah, ऊपर वो actually they are talking about the top left corner of the screen. Chat वो पता है हमें, वो फिक्स हो जाएगा before the next stream. नहीं 14 राउंड ही है, अच्छा 13 है, 13 राउंड्स है, नहीं भाई वो फिक्स कर देना, 14 8 बाई प्लेयर्स है ना 13. वो, हाँ इसलिए 8 इसलिए बाई इसलिए. 13 कर देना. सो नाइट d5 चैट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. वी विन अ फ्री पॉन बिकॉज यू कैन नॉट टेक. अगर मारोगे तो रुक c8 चेक एंड आई पिक अप योर रुक, एंड ये भी सब कुछ पिंड है. सो दिस वुड बी रियली रियली बैड. सो या अर्जुन राइट नाउ, आई यूजुअली लव प्लेइंग दिस विद वाइट पर्सनली. मेरे को अच्छा लगता है ऐसे स्ट्रक्चरल सॉलिड खेलना डबल डबल पॉन के अगेंस्ट. But yeah, it will not be easy to beat black here, and we are hoping कि Arjun can indeed do that. साज भाई एक काम करते हैं, जल्दी से हरिकृष्ण और लियोन की गेम देखते हैं. 30 seconds each, and then we rush back to the Pragg against Gukesh game. Leon first of all playing Jordan when Forest today. D4, okay, एक और मारा मारा, Grunfeld, knight d7. And what do you make of this opening with queen to a4? That's a surprise I think, क्योंकि usually knight f3, bishop e2 या bishop e3 इस तरह की कुछ moves होती हैं. Queen f4 usually you play after knight f3 as far as I Hmm. remember. तो it's a bit of a surprise. Knight d7 के बाद लियोन सोचते हुए, which is a bit of a strange thing for me because queen f4 के बाद knight d7 is the main move. So why is Leon Hmm. thinking here? No, I think he actually thought for cd5. Like this is where he thought. So he actually played knight f3 very Ah. quickly. So he So did not realize, he probably wasn't expecting Grunfeld from Jordan. हाँ, yeah, he must have gone back in his mental files कि भाई क्या opening थी, क्या lines थी queen f4 के बाद. And now black has castled, so we will of course see the part of this game आगे जाके. But most likely I'm hoping कि Leon can basically not lose time here. Opening में बहुत time उन्होंने lose किया है. Hoping he maintains his clock. And now we also go to the Hari Krishna game against Anish Giri. भाई अनीश गिरी हमने देखी नहीं ज़्यादा साज भाई इस tournament में. Like we've really not seen Indian हाँ. players play Anish a lot, yeah. Exactly. अब अभी तक नहीं हुआ, but आएगा I think वो. I think in the last few days maybe he plays an Indian every single day. Yeah, So we will cover it more, chat. Yeah, the yeah, next three rounds he has is with Hari, Pragg and Leon. So in the awesome, next three rounds probably awesome. it'll be cool. Awesome. So फिलहाल के लिए white seems to have the center. Sahaj, optically this looks slightly better for white somehow. हाँ, but we are still in opening preparation यहाँ पे. ये तो मॉलर है ना? Hmm. I think ये मॉलर है. Yeah, we're still very much in opening preparation even now.
बढ़िया किसका कोर्स था यहाँ पे मॉलर मॉलर में? आई थिंक इट वाज भाई, सेतु। चेसेबल कोर्स की लिस्ट रट के बैठे हो साज भाई आप, मुझे लगता है। यार ये करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है। बट आई थिंक इट वाज सेतु's कोर्स, सेतु का कोर्स था ये, E4 E5 पे लाइफ टाइम रिपोर्ट है जिसमें उसने मॉलर रेकमेंड किया था। सो या अब यहाँ पे वाइट के पास काफी सारी ऑप्शंस रहती हैं यूजुअली। बिशप E3 इज एन ऑप्शन, A4 इज एन ऑप्शन। एक चीज वेird हुई है कि वाइट ने H3 खेला है पहले, क्योंकि H3 आप हम्म यूजुअली थोड़ा लेट करते हो। H3 कब हुआ था बोर्ड पे साहिल भाई? पिछली मूव थी, लास्ट मूव। हाँ ओके ओके, सो H3 की जगह यूजुअली आई थिंक ही इज गोइंग फॉर द बिशप E3 या रुकी वन बिशप E3 वाला वाला ऑप्शन। एंड ही हम्म डेवलप विद नाइट B2। Yep, yep. So यहाँ पे हरी थोड़ा टाइम पे पीछे, बट डेवलपिंग, अनीश प्लेइंग वेरी क्विकली. सो वील ऑल्सो कम बैक टू दिस गेम. कोई कह रहा है नोदरबेक इज ऑलरेडी विनिंग. नहीं भाई, दिस इज ऑल ओपनिंग थ्योरी. इट माइट बी स्लाइटली बेटर, बट ब्लैक की एक्यूरेसी 99.7 है. So there is no way black हम्म। is losing with an accuracy of 99.7. So, and now time to go back to the star game, Sahaj, because I really want to go deep into this. Knight c4, knight d7 में देखा था, and after a 6 minute thought, Pragg plays pawn to c3. क्या हम d4 की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? And castles from वी Gukesh. आर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट बट नॉट राइट नाउ। Hmm. मे बी वी गो लाइक रुकी वन फर्स्ट, थोड़ा पहले प्रिपरेशन। मे बी D4 के बाद भी आप रुकी वन खेल ही सकते हो वैसे तो, बट आई वाज थिंकिंग रुकी वन फर्स्ट, पहले थोड़ा प्रिपरेशन करो, फिर उसके बाद D4, उसके बाद आप फेंक सकते हो। बट या C3 का आइडिया इज वेरी सिंपल, यू हैव टू प्ले D4, अदरवाइज द D3 पॉन बिकम्स अ टारगेट इन द फ्यूचर। तो उसको डिफेंड करना या फिर उसको उसको फॉलो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है चैट यहाँ पे। सो D4 इज हैपनिंग हियर। And Gukesh gets up from his seat. Both players playing very quickly. 9 moves हो चुके हैं. Both players only using 3 minutes so far. Where is Gukesh effect? भाई वो second half में last में आता है players को. We've seen people crumble, but फिलहाल के लिए this is the current position. अभी And तो Saj स्टॉक भाई, फिश if होगा ना, अभी तो स्टॉक फिश खेलेगा तो तो फिर गुकेश इफेक्ट नहीं आएगा, वो बाद में आएगा आराम से, जब जब प्लेयर्स खुद हाँ खेलते हैं। हाँ हाँ. तो पूछ रहा है And चैट Saj में, भाई, भाई व्हाट इज मॉलर? या प्लीज आस्क। नहीं मैं ये पूछ रहा था कि भाई what do you think, if you had to bet Maggies तो किस रिजल्ट पे bet करोगे? Win draw loss, क्या लग रहा है इस गेम में क्या होगा? यार साहिल भाई को तो ना मैगीज चाहिए बस, मेरे से। भाई कल एक जीत देखिए, गया, मैं 7 हो गई, अब देख लो. हाँ यार, आई नो। अर्जुन जीतेगा, लेट्स गो। भाई मॉलर। भाई अर्जुन आपने जीतेगा, लेट्स गो। आपने मैगी कल रेडी। भी यही कहा था भाई, लेकिन भाई अर्जुन कल हार गया, तो भाई देख नहीं, लो कल भाई. तो मैंने कहा था अर्जुन बचा लेगा, बट आज जीतेगा अर्जुन। आ, लेट्स गो मैगी। बट आ, लेकिन लेकिन टफ है, लेकिन वो पोजीशन भी इट्स वेरी वेरी सॉलिड। बट वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन देयर। इट्स लुक्स वेरी अनलाइकली। आई वुड नॉट, थिंग इज अर्जुन का जो गेम है ना, आई वुड नॉट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन जहाँ पे मतलब मेरे को पता है कि आई एम नॉट हैविंग द बेस्ट टूर्नामेंट इन माय ऑफ माय लाइफ, एंड आई हम्म, इफ आई विन इट विल ब्रिंग माय कॉन्फिडेंस बैक, एंड ये पोजीशन बोर्ड पे है। मतलब एकदम एंड गेम जहाँ पे हाँ, आप एकदम आपको लंबा सा आपको ग्राइंड करना है। आई वुड नॉट बी हैप्पी विद दैट गॉट इट, फॉर गॉट इट. श्योर। कुछ चैट में ये भी पूछ रहा था कि मॉलर क्या होती है। मॉलर वो होती है जो स्पेनिश के अगेंस्ट खेली जाती है ब्लैक से, जब आपका बिशप C5 पे आता है उसको मॉलर बोलते हैं। इट्स अ वेरिएशन। हम्म. एंड यहाँ पे बिशप C5 पे है और बिशप B5, तो यहाँ पे मार दिया गया नाइट यहाँ पे. एंड नाउ Pragg हम्म। इज थिंकिंग, सो D4 की तैयारी चल रही है. यू सेड साज भाई रुकी वन वुड बी द मोस्ट लॉजिकल मूव. सो व्हाट कुड ब्लैक प्ले हियर? विल ही प्ले लाइक रुक F6? एट विल ही प्ले रुक एट रूक F6, D8? या रुक D8 F6 समथिंग लाइक दैट, गोल्डन पॉन को टच करते हुए। अब तो खैर जरूरी भी है, बिकॉज वी नीड टू कीप आवर E5 पॉन इंटैक्ट। एक D4 के बाद ना, मतलब आई पर्सनली आई नेवर लाइक द पोजीशन विद ED4 CD4 फॉर ब्लैक, क्योंकि मुझे लगता है वाइट के पास पूरा सेंटर है। तो दैट समथिंग मे बी ही ट्राइज टू अवॉइड, बिकॉज सेंटर देना ओपनिंग में, even though you have the double bishop advantage, it just never felt right to me when I was preparing this, in my own games. तो I always liked bishop D6, मतलब थोड़ा पीछे जाके you play, keep the control of your center. That feels a bit more logical. And usually ऐसे ही जाती हैं games. And when the bishop goes to D6, Sahil bhai, then white takes knight D6, taking away your double bishop advantage, and वो slight सा advantage रहता है throughout the game. That's maybe what we could see today. Yep, and bishop pair key advantage है black के पास, but his pawns are doubled, and that's why the game is roughly balanced. So it's a structural advantage for white versus the double bishop dynamic advantage for black. And Gukesh यहाँ पे काफी काम लग रहे हैं. अनीश को देख रहे हैं. अनीश क्या कर रहा है भाई वहां पे? अनीश ये ऐसे टेढ़े मेढ़े एंगल से क्यों गेम देखता है? सीधा क्यों नहीं देखता है भाई? ये देखो अच्छी अलग अलग एंगल से देखता है अनीश भाई. ये देख, इस एंगल से देखता हूँ कैसी लग रही है, इस एंगल से देखता हूँ कैसी लग रही है. ये देखो ना भाई, Hmm. मस्त है यार अनीश. एब्सोल्युटली। एंड साहिल भाई, आपके लिए सवाल कि बिटवीन प्रग एंड गुकेश, व्हाट इज द लीस्ट लाइकली रिजल्ट, एंड व्हाई इज दैट रिजल्ट अ ड्रॉ?
for you? No, no, I don't think it's the least. Oh, Queen C2 played. So he avoids, all the known moves. We are already with 0 games on chess.com. So यहाँ पे D4 2 गेम में खेला गया था, Rook E1 2 गेम में खेला गया था. But लेकिन Queen C2, so we are in novel territory. Sahaj, what does this move mean? Yeah, to play d4, because after ed4 cd4 the e4 pawn is not hanging, so he's overprotecting that pawn, and also it's a developing move. Yeah, you're one step closer to connecting your rooks, which is great. Yeah, d4 का plan तो है यहाँ पे साहिल भाई. I think he's gonna that's gonna happen in the next 2-3 moves. Hmm. And now Gukesh is in deep think. Do you think Queen C2 preparation or do you think he's thought this over the board? Because he's taken 6 minutes for C3 and 3 minutes or 4 minutes for Queen C2. It feels like maybe this is still preparation, Sahaj. Like ऐसा मुझे feelings आ रहा है. I don't know. होगा यार, प्रिपरेशन होगा, बिल्कुल होगा, लग रहा है मेरे को. ऐसा ना मेरे पास साहिल भाई, आई डोंट नो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, बट मैच के बाद जब अपोनेंट आके बोलता है, एक एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि माय अपोनेंट वाज थिंकिंग राइट आफ्टर द ओपनिंग, मुझे लगा कि वो प्रिपरेशन में नहीं है, एंड वो मैच मतलब मैं आई वन द मैच, बट मैच के बाद मेरा अपोनेंट आके बोलता है, पता है, आई वाज एक्चुअली प्रिटेंडिंग, मेरे को पता था ये नहीं है. So that could be a reason. मतलब वो थोड़ा सोच के maybe he's gathering his thoughts together. And yeah, of course these players have a lot of time from the opening itself. लेकिन साज में तो लेकिन आप खेले कब हैंड से? ठीक है साहिल भाई, गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम, अभी 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 निकाल दो विजय सर के आने से पहले. विजय Anyways, I सर think Queen joke था भाई. I love hands. I love एक्चुअली Queen विजय C2. सर के आते ही ना मैं अपने चश्मा उतार दूंगा, क्योंकि मेरे को चेस बढ़िया दिखेगी, थोड़ी बेटर दिखेगी उसके बाद. कल बढ़िया नहीं दिख रही थी मुझे. Hmm. And यहाँ पे Supriya is shouting B6. I'm not sure B6 kind of limiting the bishop would be best. मुझे लग रहा है कि bishop का square है नहीं. Do you think B6 is a potential move, Sahaj? It is, because if you want to play bishop d6 and c5, देखो ब्लैक का ना आइडियल सेटअप एक बार एड्रेस कर देते हैं साहिल भाई. बिशप d6, c5, f6, सारे पॉन्स ब्लैक में, एंड वो जो बिशप भी है d6 का, वो भी एकदम डार्क स्क्वायर का बिशप बन गया, एकदम सब कुछ एकदम बढ़िया से बैठ गया. यू कैन सी दिस इज अ वेरी वेरी नाइस सेटअप फॉर ब्लैक. एंड ये बिशप कह रहा है कि भाई मैं बड़ा तो हो गया, लेकिन ये मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है, कोई मिल गया, रोहित तू बड़ा तो हो गया है लेकिन अभी तू छोटा है. ठीक है चैट, ठीक है डैड, वी जस्ट गेटिंग इट आउट ऑफ आवर सिस्टम. भाई बट बाय द ये हाँ. इसके बाद ब्लैक का जो आइडिया रहता है ना, वो ये रहता है कि नाइट b8, नाइट c6, या फिर नाइट f8 और नाइट e6. पॉइंट ये है कि भाई ब्लैक इज जस्ट सेइंग तो d4 खेल के दिखा, बिकॉज अगर व्हाइट का d4 सक्सेसफुली आ गया तो वी नो व्हाइट कंट्रोल्स द सेंटर. तो पूरा प्लान जो ब्लैक का रहता है वो ये रहता है कि भाई हाउ कैन आई प्रिवेंट d4 इन द मोस्ट सक्सेसफुल वे पॉसिबल. Got it, got it. So b6 definitely an option. Apparently not g3 king g2. I feel. Chat ध्यान रखो, इसके तो साथ से ही पूछने की जरूरत नहीं है, because you don't have a light square bishop. So once you play a move like g3, let's say कि यहाँ पे black ने खेला normal चाल, रुकिए, you play g3, आपने ये सारे squares weaken कर दिए हैं. जब भी ये knight move करेगा, bishop h3 आ सकता है, and this is just not looking comfortable, yeah. या इट फील्स अ बिट अननेसेसरी, फालतू के मतलब. चैट, आई मीन आई नो g3 king g2 लुक्स लाइक यू आर गेनिंग स्पेस, बट ओपनिंग में कभी भी ट्राई टू नॉट पुश पॉन्स अननेसेसरी. कोई भी पॉन ऐसा पुश मत करो जिसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है. Pawns are the soul of chess. तो never h3 फॉर एग्जाम्पल हैज सम रीजंस. मे बी आपको बिशप g4 प्रिवेंट करना हो कभी फ्यूचर में, एक आप घर भी खोल रहे हो किंग के लिए. और ये भी g3 और h3 में फर्क ये है कि आपका जो बिशप है वो डार्क कलर का है, तो आपको पॉन्स लाइट स्क्वायर में फिक्स करना ज्यादा बेटर है, बिकॉज यू विल कवर मोर स्क्वायर्स इन इफ यू लुक एट द एंटायर चेस बोर्ड. तो मतलब तो पॉन्स को लाइट पे फिक्स करना भी ज्यादा वुड बी अ बिट मोर पोजिशनली साउंड इन माई ओपिनियन. या गुकेश ने साज भाई की बात सुन ली ऐसा लग रहा था, वरना वो भी G3 खेलने ही वाला था अभी. तो हम्म. पूरा लगा था भाई ही वाज लिसनिंग, ऐसे फीलिंग आ रही थी मुझे ऐसे देख के उसकी बॉडी लैंग्वेज से. एंड राइट नाउ ही इज कैलकुलेटिंग क्वीन C2 का क्या डिफरेंस हो सकता है 5 मूव्स 10 मूव्स डाउन द लाइन. हाउ कैन दिस क्वीन बी बेटर फॉर वाइट, वर्स फॉर वाइट, प्रोज एंड कॉन्स कैलकुलेट करते हुए. वी आल्सो सी दिव्या इन द बैकग्राउंड. बाय द वे दिव्या आल्सो along with Arjun not having a great event. I think both of them, you're really hoping they strike back today, yeah.
I really really hope so यार, I really hope so. मैं तो मैगी पे लगाने के लिए तैयार हूँ भाई. Speaking of दिव्या, उसका मैच किससे है आज? Can we do a quick Uh, roundup of those matches too भाई? क्या चल रहा है वहाँ पे? हाँ, Divya is playing apparently Nogir Bek, हम्म. Kazi Bek. So in Bek है दो, and uh, Vaishali is playing Arthur Pipers. Oh wow, क्या opening है भाई ये? ये क्या हुआ यार? Vaishali Sorry, sorry. always finds this यार. Vaishali always finds these वो crazy वाली lines. What is going on here? Oh yeah, And she's sacked a this is pawn. some crazy preparation by Vaishali incoming. But I would prefer to be black Sahaj. I don't know. This looks really good for white. Yeah, You Bishop prefer है to be तैयार है. white? Yeah, Rook B1 आ रहा है. Rook See, B3 I attack. would not prefer to be white here क्योंकि first of all, I'm just looking at the time here. मतलब Vaishali has spent probably last night this morning मतलब at least उसने 2-3 घंटे इस position को analyze करते हुए मतलब she knows this way better than her opponent. Also, their ratings are not that far apart. 2 point का ही फर्क है. They are pretty evenly matched. I would not want to be white here क्योंकि it looks like Vaishali is very comfortable. चलो बढ़िया भाई बता optically white looks so good to me. I would love to play this as हाँ. white, but you're correct. I think Vaishali seems to be well prepared. Already 20 मिनट का difference है, and usually prepared हो तो इसका मतलब है कि you've seen most of the lines at home, and if you can play like an engine, you will probably do very very well in a tactical line. So Vaishali also fighting it out, and we go back to Gukesh game. Saj भाई आज कितने results expect करते हो आप in the Masters section among Indians? So we have Pragg against Gukesh, we have Hari Krishna against Anish, we have Arjun against Sarana, and we have Leon against Forrest. So we have 4 games. How many results do you expect today? हाँ, तो ये गेम तो मतलब आई एम गोना टेक द बोरिंग राउट. मुझे लगता है यहाँ पे ड्रॉ के काफ़ी चांसेस है, इवन दो आई फील कि प्रग पुश ज़रूर करेगा. बिकॉज दिस इज दैट प्रग वाली पोजिशन जो तीनों राउंड्स जो वो जीता प्रग. आई जस्ट वांट टू रिमाइंड एवरीवन, दे वर ऑल वेरी लॉन्ग गेम्स. स्लाइट एडवांटेज फ्रॉम द ओपनिंग जहाँ पे प्रग ने कुछ ही केप्ट पुटिंग द प्रेशर फॉर 5-6 hours एंड इवेंचुअली हिज ओपोनेंट क्रैक्स. दिस इज एग्जैक्टली दैट टाइप ऑफ अ पोजिशन. तो आई स्टिल फील कि कि ये मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ते हुए. लेट्स लुक एट द अदर गेम्स एंड बिटवीन Arjun and Sarana, I really hope कि Arjun can make a comeback here. तो यहाँ पे मैं win बोलूँगा. And then Leon versus Jordan. Leon was a bit surprised out of the opening with the Grunfield defense. I'm gonna say a draw there. I'm gonna say a draw there. And Hari And Krishna? Hari versus Giri, यार. Sorry, Anish, but win for Hari bhai. Oh wow. Win So for Hari. आपने बोला कि 2 results chat. What do you feel? How many results we'll get today? मेरे को expectation है साज भाई, it's a rest day tomorrow. Purely because of that, I am also going to say 2 results. Otherwise मैं 3 बोलता. I would say कि Arjun should probably win. And I don't know, looking at these two players, the rivalry they have, I think this will be a long, long game, and shayad somebody will crack. One of these players will crack. So I expect a result here. And I think Harish Anish may draw hoga, and I think Leon and Forrest maybe draw hoga. So these are my predictions. Chat क्या लगता है कितने results आएंगे आज? And Sahil bhai, what do you think? कितने results आएंगे? अभी तो बोला भाई 2 results. आपको अच्छा मुझे आपको भी लग रहा है अरे मैं तो साहिल बन गया. अरे What's up chat? ये Hello chat. How's it going chat? अरे यार नीरी भाई ने हटा दिया यार. पढ़े एकदम साहिल भाई की मिमिक वो करने वाला था, मिमिक्री करने वाला था. अरे अरे मेरे पास मेरे चश्मा भी है ना कैमरा अब तो. मेरे कैमरा के नाटक 100 है भाई, क्या करें. I'm back. हम्म. I'm back, Nidhi bhai. One result, Hari wins. हाँ, all good. One result, Hari wins. Chat करिए. हरीश अनीश नहीं भाई, हरी अनीश. नीति भाई बैकग्राउंड में गाने गाते हुए. चैट तुम्हें किसके गाने पसंद है? आई थिंक कोल्ड प्ले के पसंद है. तो भाई साहब डिड यू सी लाइक क्या कॉन्सर्ट का वो भरा हुआ था भाई, कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट. इट वाज लाइक क्रेजी. ना मैंने देखा नहीं यार, मैंने बिल्कुल नहीं देखा. कल एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो आई एक्चुअली हैड अ वेरी वेरी अर्ली नाइट. तो आई couldn't see a lot of what was happening today. सारे मैच ड्रॉ होंगे. मंदर भाई डेफिनेटली लव्स बोरिंग स्टफ. इन्वेस्टमेंट बैंकर लगते हैं. क्वीन C2 के बाद यहाँ पे सोच रहे हैं गुकेश जी क्या करना है. सो व्हाट इज द प्लान सहज? आई मीन वी सॉ F6. डज दैट चेंज समहाउ?
I still don't see a reason why. Maybe rook e8 as well, still a good move, yeah? Yeah, rook e8 good move, f6 good move, bishop d6. As you said, वो bishop d6, b6, c5 वाला plan looks amazing for black. So something along those lines, I would say. Saj, I thought rook e8, and there's this move that the engine recommends, which is queen to e6, which is a weird move because you block your own bishop and you move the queen again. But I get the point. d4 pe the knight can be hanging. And if you play b3, the idea is apparently to play a4 or even f5. Is this too much? Again, I'm gonna say my trademark यहाँ पे golden pawn मत touch करो, but in this scenario, this is being played for a tactical reason. पहले तो आप एफ फाइल खोल रहे हो, एफ टू पे थोड़ा प्रेशर आएगा, दूसरा डी थ्री पे थोड़ा प्रेशर आएगा, तो टैक्टिकली इट यू कैन जस्टिफाई इट। अब देखो पोजिशनली आप ई फाइव का पॉन आइसोलेट कर रहे हो, तो स्टिल दैट होल वो गोल्डन पॉन वाली चीज इट स्टिल स्टैंड, बट आप टैक्टिकली इसको जस्टिफाई कर सकते हो। सो मे बी इट्स पॉसिबल, बट गुकेश एकदम लंबा गेम खेलता है हमेशा, तो जस्ट जजिंग बाय द प्लेयर नॉट बाय द पोजिशन, आई वुड से कि भाई गुकेश एफ आई नहीं खेलेगा यहाँ पे। अगर एफ आई आएगा भी ना बोर्ड पे, तो अभी नहीं आएगा, थोड़ा बाद में आएगा, क्योंकि गुकेश हमेशा लंबा गेम खेलता है। And I agree, Saj. Kahin na kahin pe, usually this should be positionally bad, but why is it even equal? So let's say I play bishop e3. What is बिशप डी black's सिक्स, plan even here? बिशप डी सिक्स। यार आपके चाल खेलते ही बार तो मतलब ऊपर चला गया। Bishop d6, and now what? नाइट डी टू, नाइट डी फोर, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट लाइक दैट फॉर। तो बी फाइव आ रहा है Hmm. क्या? सॉरी सॉरी साहिल भाई, मेरे पास बी फाइव है शायद आफ्टर नाइट डी टू। b5, knight d6 maybe, yeah? सी डी सिक्स, अब ये तो ठीक होगी ना? Hmm. Hmm. ये तो ठीक होगी पोजीशन। इफ आई कैन अनटैंगल माय पॉन स्ट्रक्चर देन आई एम वेरी हैप्पी। Yep, yep. Looks एफ like a फाइव बढ़िया crazy. प्लान साहिल भाई, जी भाई जी। ये तो इंजन का प्लान है भाई, ये तो लॉजिकल प्लान है, बहुत अच्छा लॉजिकल है, इंजन क्या होता है? लॉजिक अच्छा अच्छा लॉजिकल, अच्छा 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 अच्छा, ये लॉजिक प्लस इंजन प्लस पता प्लान नहीं है है, ये। इंजन सो आप क्या एकदम नए वर्ड्स निकाल रहे हो कमेंट्री में, समझ नहीं आता मुझे। भाई सच में आज बहुत सारी वोकैबुलरी सीखने वाले हो आप। फॉर एग्जांपल इंजन, ड्रिप, किबिडी, बहुत सारी ओह चीजें सीखोगे आप, तो डोंट वरी, आज एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा हम सब के लिए। भाई आ, पूछना है वो तो उनसे भाई कि स्किबिडी का मतलब किसने गूगल किया था, विशी सर ने या गुकेश ने? किसी ने, एक ने तो किया था पक्का। अहमदाबाद राइट, आई मिस माई फ्लाइट एंड हेंस माई चांस। अरे भाई कोई ना, आजकल बहुत लोग फ्लाइट मिस कर रहे हैं, बट एनीवेज इट वाज अ क्रेजी कॉन्सर्ट। मैंने देखा, कुछ रील्स देखी मैंने, भाई साहब ऐसे लाखों लोग भरे पड़े हैं भाई उसमें, उफ, इट वाज क्रेजी। वाओ। एंड यहाँ पे एक दिन चेस के लिए भी लाखों लोग भरेंगे। आई थिंक दैट्स द डे चेस विल बिकम मेन स्ट्रीम, जब चेस के लिए भी ऐसे लाखों लोग एक जगह पे इकट्ठे होंगे आज। ट्रू, बट आई थिंक चेस ऑलरेडी एक वो मेन स्ट्रीम फॉर्म में तो आ रहा है, एंड आई एम लविंग इट, बट ऑफ कोर्स दैट वुड बी, जब लाखों लोग भरेंगे दैट वुड बी ऑसम टू सी। या या Sahil love kidding, Sahil love his take. Arey, you would even love my, take even better. So बढ़िया भाई। पता है साहिल भाई, बिकॉज आई हाँ। अटेंडेड अ सिमिलर कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट, ये जो म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स का इनका एक वो टूर है, इट्स द सेम थिंग, एंड बुडापेस्ट में आई आई वाज वेटिंग फॉर लाइक 2 hours जस्ट टू गेट इनसाइड, 2 घंटे, एंड बाप आई रे। कैन ओनली इमेजिन इंडिया में उसका उसका तो डबल होगा, बिकॉज इट्स अ मच बिगर स्टेडियम, आई एम assuming much more people as well, तो it would be crazy भाई। Yeah, it will be crazy. I think Vishy sir also went to the concert. No, I don't know. I heard somewhere if he, I don't know actually if he went or not, but yeah. Oh, पूछेंगे B6 अर्जुन से। played. So chat में जो भी वो बंदा था भाई, shout out to you. B6 played by Gukesh. Yeah, wow. ओके सो बिशप D6 इनकमिंग, या? Hmm. And now it's time for Pragg to have his think. How many minutes do you think Sahaj he will take now? Will he play quickly or will he take his time? I think he will definitely take time here. Hmm. I will definitely, because bishop e3 is a plan, d4 is a plan, rook e1 is a move, a4 is a move. And pata hai, all of these moves, maybe rook e1 is not as committal. Maybe he goes for rook e1, but d4 is a very committal move. Bishop e3 is a committal move. So committal moves खेलने से पहले you definitely think for quite some time. So unless he plays rook e1, which will be fast, अगर वो नहीं होता तो I think he might think a bit. Maybe bishop e3 he can play a bit fast. Who knows? Hmm. And bishop e3 pay, you're saying bishop d6. Yeah, we don't trade the bishops because we lose the bishop pair advantage and we still have the double pawn. Yeah.
या बिशप E3 बिशप नहीं, मैं नाइट से भी मार सकता हूँ ना साहिल भाई, क्योंकि अब बिकॉज मैंने C3 खेल दिया ना, तो आई एम नॉट एज इंक्लाइंड टू प्ले FE3 नाउ, क्योंकि फिर मैं D4 भी खेलूंगा तो इट्स लाइक मेरा पॉइंट स्ट्रक्चर एकदम वियर्ड सा बैठ गया यहाँ पे। तो आई वांट टू टेक विद द नाइट एंड पुश D4, दैट्स अभी नहीं, बाद में आराम से खेल के मैं D4 खेलूंगा। Yup, बढ़िया. So chat, we are looking at this current position. देखते हैं क्या होता है. Pragg is right now thinking, what a balanced poll. That's a good question, by the way. Pragg versus Gukesh का मैंने poll लगाया था. Usually it is like 98-2. It is Pragg versus Gukesh. Pragg wins 32%, draw 34%, and Gukesh wins is 33%. भाई क्या चल रहा है? इतना neck to neck poll चल रहा है यार. Wow, that is crazy actually. That is crazy. So we are keeping the glasses then? Oh yes, actually मैंने नहीं पहने थे glasses actually when I started, but someone kept pointing, तो फिर विशी सर के आने के बाद फिर मैं निकाल दूंगा, फिर there will be 3 people with the glasses. वैसे ही मुझे ज़्यादा चेस दिखती है when I don't wear glasses, so yeah. या वैसे भी कल कमेंट्स आ रहे थे साज को देख के, तो साज भाई लाइक दोस कमेंट्स, तो इज लाइक आज स्पेक्स पहनेंगे भाई. एब्सोल्युटली. बाय द वे हमारे मॉड जी ने एक फॉर्म कुछ तो शेयर किया है यहाँ पे, अगर अगर एंड सम पीपल हैव रिटन देयर क्वेश्चंस फॉर विशी सर, अगर हमें पूछना है तो वो साहिल भाई. ये फॉर्म बनाया किसने? आई थिंक श्रेय ने बनाया होगा, नॉट श्योर. अच्छा भाई, बढ़िया बढ़िया भाई. यार. तो दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू, फिल अप अ फॉर्म एंड आस्क चैट टू लाइव ब्रॉडकास्ट ऑडियंस, चैट टू फिल अप अ फॉर्म. डायरेक्ट फॉर्म मत दिखा देना विषय को प्लीज. हाँ साज वो भाई, तो आई नहीं. रिक्वेस्ट, आई फोल्ड माय हैंड्स इन प्रे नहीं नहीं, टू वो देख प्रेयर रहा है, भाई. वो देख रहा है. आई होप भाई. भाई वो बार बार मतलब यार, थोड़ा थोड़ा आराम से. श्रेय भाई, उसमें से टॉप 3 क्वेश्चंस निकाल देना एंड सेंड इट एज अ लाइक डीएम टू मे बी साहज और लाइक मी, समवन. या आप मुझे भेज टॉप 3. देना, मुझे व्हाट्सएप कर दो या फिर डिस्कॉर्ड हाँ. पे डाल दो, एंड देन आई कैन आस्क हिम दैट. एंड बाय द वे, 20 के बाद अभी भी प्रग इज स्टिल थिंकिंग. एंड साज, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है? मैग्नस ने एक क्लिप में बोला था व्हेन नोदरबेक एंड गुकेश वर प्लेइंग कि बिकॉज गुकेश इज द वर्ल्ड चैंपियन, ही इज मोर लाइकली टू रिटेन इट नाउ because he will have more resources, I'm guessing, and so on, and he's won it before. If Pragg versus Gukesh hoga, do you think like Gukesh is still the favorite, or what do you think, like what do you predict there? देखो, रिसोर्सेज की बात करें तो प्रग आई थिंक ऑल्सो इज प्रीटी रिसोर्सफुल. आई एम हाँ. नॉट श्योर अगर हम लोग स्पॉन्सर्स वगैरह के नाम ले सकते हैं तो नहीं, बट लेकिन वी नो दैट. तो रिसोर्सेज की बात अगर हम करें तो आई एम नॉट, आई डोंट थिंक प्रग इज would have less resources, but लेकिन हाँ, probably having the world champion title gives you some benefit, but Deng भी तो हारा. And Magnus का भी, against Karyakin when he played, but which year was it? 2016 था, 16. 2018 था? 16. 16 था ना? So that was, I think, his first WC after Vishy sir, correct? That was his third one, right? So वहाँ पर he had the biggest problem, I would say, because it was the only match where he was trailing. I think for 2 days he was trailing. So yeah, I mean, we never know. We never know. अभी world champion बना तो maybe after 2-3 it's a bit different, but yeah, that's my intake. आपको what do you think? Do you think he has an advantage or no? So मेरे को समझ नहीं, आपने अंत में बोला क्या? Is does he have an advantage or not? No. Not No. not in the next world championship, I think. I'm saying if he wins 2 or 3, then yes, probably, because then I think you are in a completely different world. But उससे पहले probably not. And also resources की अगर हम बात करें तो I think yeah, I think Pragg will have enough. I think Nodirbek also will have enough. Hikaru, अगर Hikaru होगा तो I mean we are talking about resources here. Come on. बट एक that कमिटमेंट भी would. है ना भाई, उसको 6 घंटा 8 घंटा स्ट्रीम भी करना है, वीडियो भी डालनी है. सो इमेजिन लाइक इट विल नॉट बी इजी. इमेजिन वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के रिकैप देना भाई. ही हैज कमिटमेंट्स भाई. But I mean, he was doing the same in candidates as well, and he was so close. He was only half a point away. I mean, Hikaru World Championship Vidit की वजह से नहीं खेला. If you think about it, without भाई it, it रात would be रात Hikaru में there. दो रात को तो नाइट में आया होगा विदित का, हिकारू का भाई. बिल्कुल. 100%. सिर्फ एक प्लेयर की वजह से हुआ, and he did all of that while maintaining his thing. I mean, it's very very impressive. ट्रू. एंड चैट देखेंगे, मजा आएगा. एंड फिलहाल के लिए ये वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच तो हो ही सकता है अगले साल. उसके लिए प्रग को पहले कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाई करना है. एंड विनिंग दिस इवेंट
would give him a head start because he would gain a lot of points for the FIDE Circuit 2025. So उसी के लिए battle करते हुए, and Sahaj, we can see all the four Indian boards. If आपने कहा two results, looking at all four boards together, would you stick with that? Yeah, I think two is okay. Arjun का maybe it's looking less क्योंकि एक piece और exchange हो गया यहाँ पे. It's looking a bit more unlikely for a result here. Also A4 is a very nice move by Sarana because अगर हम bishop से trade करते हैं तो black का knight भी C4 पे बैठ सकता है, which can be a problem. Arjun का game is looking a bit shaky. It could be a win, but let's see. And Hari takes D takes E5. Oh. नहीं, that changes a lot. यही तो मेरे दो गेम्स थे जहाँ पे मैं कह रहा था रिजल्ट आएगा, बट डी टेक C5 के बाद तो वही लग नहीं रहा. बट okay, I'll say one result now, bhai. Slight One change. result. One So result. What Sahaj do you bhai, think? if you want to bet a Maggie on the Arjun game, I will say he wins. So if you are ready to say like नहीं bet नहीं for नहीं a मैं draw, अर्जुन के I know. अगेंस्ट मैगी तो कभी नहीं लगाऊंगा मैं. नो वेस. अरे अभी तो बोले भाई कि ड्रॉ होने के चांसेस ज्यादा है. चांसेस है बट फिर भी यार मतलब कल भी तो चांसेस. आई मीन when I was doing the Maggies yesterday, I mean I knew कि उसकी पोजीशन खराब है. Of course I knew that, but यार we have to support Arjun, we have to support Gukesh, we have to support Pragg. That's a वो तो मतलब है ही मतलब वो तो यहाँ पे नहीं. बढ़िया. So chat by एक the way, काम मयंक करते भाई हैं. एक हाँ. काम करते हैं, अर्जुन जीतेगा तो मैं तो मतलब आप फिर मैं आपको मैगी देता हूँ. अगर ड्रॉ होता है तो फिर हम चैट में से किसी को मैगी देते हैं. मैं मेरा ब्रेन कैलकुलेशन कर रहा है भाई. इसके भाई ये क्या मतलब था इसका भाई. ये लॉजिक ही नहीं बनी इस बात की कोई भाई. एनीवेज, सो आएंगे भाई, मैगी रहने दो, वैसे भी एक्स्ट्रा साथ में बस सही है. हम्म. कोई कह रहा है मैं भाई सेइंग मॉड चैलेंज व्हेन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. मॉड चैलेंज करना चाहिए. सो चैट 500 लाइक जब होंगी हमारी तो हम एक मॉड चैलेंज करेंगे गोल्ड मेंबरशिप के बदले आज. सो लेट्स गेट टू 500 लाइक्स ताकि एक बंदे को हम मॉड की शक्ति दे सके भाई. बॉर्नवीटा की शक्ति इज मच मच लेसर देन मॉड की शक्ति. साज भाई, डू यू एग्री? और हॉर्लिक्स इज ऑल्सो ग्रेट. पता है मैंने एक्चुअली आपको याद है एक अच्छा एक्चुअली एक मॉड क्वेश्चन मेरे को अभी याद आया यार. क्या है यार अभी याद आया. ओके बाद में याद दिलाना जैसे बॉर्नविटा मेरे को याद आ जाएगा. ठीक है अगर मैं ठीक भूल है, गया तो. डन डन. मेरे बॉर्नवीटा को बोलूंगा आपको याद आ जाएगा. नाइस, हाँ टोटली अंडरस्टैंडेबल. बॉर्नविटा से तो याद आता है ये चीज़ें. एंड दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन चैट. डन डन. मतलब मॉड भी नहीं हो तो मतलब बाद में जाके कभी अगर मेंबरशिप का क्वेश्चन करना हो तो वी कैन डू दैट. हाँ डन. एंड फिलहाल के लिए 99.1 एक्यूरेसी से प्रग खेलते हुए 98.8 से गुकेश. जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, दे आर प्लेइंग at 99.1% strength of a supercomputer right now. So this just tells you how strong they are. And Avivi Pragg calculating the position, he's still not sure what should he play. भाई साहिल भाई अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई ऐसा एक क्लासिकल इवेंट करते हैं जहाँ पे वाइट से E4 E5 बैंड है, D4 D5 बैंड है. वुड यू वांट टू सी वुड यू से कि दैट्स अ बिट मोर एक्साइटिंग या वुड यू बी लाइक नहीं नहीं ये आइडिया अच्छा नहीं है. E4 पे E5 नहीं खेल सकते और D4 पे D5 नहीं खेल सकते भाई. दैट्स इट. I think it would be slightly more exciting than normal chess, like 5%, but not much because D4 पे mostly लोग knight f6 ही खेलते हैं. E4 के against it will be a better fix, but लोग D4 खेलना चालू कर देंगे फिर. I feel कहीं ना यार कहीं पे D4 पे भी तो D5 लोग ज्यादा खेलते ही है ना. D4 नाइट F6 कम लोग खेल रहे हैं. मैं किंग्स इंडियन कहाँ देखने को मिलती है नहीं, मतलब they ब्रंटफील्ड. play the opposite move order. Like D4 के बाद knight f6 में they sometimes go into the d5 lines, but they start with knight f6 mostly. But E4 में क्या है, you can't transpose, तो E5 खेलते. तो if E4 में I think we will have more sharper games. ओके ओके मतलब वही मैं देख रहा हूँ कि E4 E5 ऑलमोस्ट एवरीवेयर वाइट प्लेस E4 E5 एकदम एक्सपेक्टेड ही रहता है हर प्लेयर से. अनलेस मे बी इन द फर्स्ट राउंड वी सॉ अर्जुन प्लेइंग सिसिलियन समवेयर. वो बिशप C4 वाली जो लाइन हुई थी अगेंस्ट हरी इफ आई रिमेंबर इट वाज द फर्स्ट राउंड जहाँ पे E4 C5 हुआ था. बट आफ्टर अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम स्ट्रगलिंग टू रिमेंबर अ गेम जहाँ पे सिसिलियन या अभी फ्रेंच हुआ था. ऑफ कोर्स दैट हैज हैपेंड क्वाइट बिट बट यूजुअली E4 E5 ही रहता है. बट या Hmm. पीछे से एक बंदा मस्त उबासी लेके गया भाई. तो ग्लैड टू नो कि प्लेयर्स को भी ये गेम्स लंबी लग रही हैं. एंड वी रेड दिस, नॉट रेड एक्चुअली, आई सॉ दिस ऑन जो रोगन वंस, आई थिंक 2-3 years बैक, कि फैबी का उन्होंने कुछ डीप एनालिसिस किया था. लाइक ही लॉस्ट लाइक आई डोंट नो 5-7 kgs इन अ टूर्नामेंट. भाई ये लोग कैसे वेट लूज कर रहे हैं भाई, हम लोग तो गेन कर रहे हैं भाई.
How यार are चेस top chess खेलते players वक्त losing weight? कितना स्ट्रेस लेने की जरूरत है कि वेट लॉस हो सहज भाई? उतना स्ट्रेस यार मैं अगर लूं? आप 6 6 घंटे का गेम हर रोज खेल रहे हो तो ऑब्वियसली वेट लॉस तो होगा ना यार कुछ भाई तो एक कहाँ स्टडी हो रहा थी है ना भाई? इसमें। मैं खेला ना भाई पूरा, मतलब वेट बढ़ गया भाई। 6 घंटे खेल रहे थे आप? अरे क्या मतलब बात व्हेन आई है। यूज्ड टू प्ले लाइक 16 हम्म। से 20 के बीच में, तो वेट बढ़ गया भाई, इतना फिट था मैं, मोटू हो गया पर भाई खेल खेल के। ये कौन पर से यूजुअली एक आर्टिकल है भाई? एक वो स्टोरी है ना कुछ तो कि मतलब एक एक देर स्टोरी करो, देयर इज अ थ्योरी अबाउट दिस कि एक 4 घंटे का चेस मैच इज सिमिलर टू लाइक 90 मिनट्स ऑफ फुटबॉल मैच, समथिंग लाइक दैट इन टर्म्स ऑफ 6 hours आई कैलोरीज। थिंक, हाँ 6 hours सिक्स आई थिंक। आवर्स अच्छा 6 आवर्स, सॉरी मेरे को चार हाँ याद था हाँ। बट या समथिंग लाइक दैट। सही बात है भाई, रॉजर फेडरर भी यही सोच रहा है आज रिटायरमेंट के बाद, मैं भी आई विल रिप्लेस माय 90 मिनट्स ऑफ टेनिस विद 6 hours ऑफ चेस। आई विल अर्न द सेम इसी मनी के एंड आई विल साथ मैं बर्न द अपना सेम चश्मा कैल, थोड़ा साइड कर देता हूँ। आई विल बर्न द सेम कैलोरीज एंड आई विल अर्न द सेम मनी भाई। फेडरर यही सोच रहा है। Absolutely. Okay, so b6 on the board. अब प्रग सोचते हुए भाई we have rook e1, bishop e3, d4 as we mentioned. But rook d1 also looks like an interesting option for me क्योंकि मेरे को d4 फेंकना है. That also looks like an interesting move. For sure, these players have studied this structure many times. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि they've done it together as well. तो yeah, looks pretty complicated. You know, I think your basics are not clear. Help me. एक नॉदिरबेक है जो, अरे यार भाई, हाउ आर वी सपोज टू रीड दैट? ये क्वेश्चन मत डालना फॉर्म में भाई। एंड बाय द वे चैट, कोई फॉर्म वॉर्म है, पता नहीं किसने डाला था, आई थिंक आई एम नॉट डॉक्टर श्योर। श्रे ने बनाया। ये फॉर्म का आइडिया आया कहाँ से? ओ लेट मी पिन दिस फॉर नाउ। हाँ। आई थिंक वो विशी सर आ रहे हैं ना इसलिए। हाँ बाय द वे विशी, नहीं मतलब आइडिया किसका था फॉर्म का? विशी से आ रहे चैट, सो यू कैन प्रॉब्ली पुट सम क्वेश्चंस एंड डॉक्टर श्रे 3 टॉप क्वेश्चंस साज भाई को डीएम कर देंगे। सो यू कैन आस्क विशी सर समथिंग इफ यू वांट, चेस रिलेटेड या एड रिलेटेड या फिर एनीथिंग, एनीथिंग व्हिच यू थिंक ही विल बी कंफर्टेबल आंसरिंग। बाय द वे नाइट टेक्स ईफा मार दिया बिटवीन हरी एंड गिरी। सो ओके। डू वी गो नाइट टेक्स e5 एंड जस्ट सिंपलीफाई द पोजीशन, या डू वी जस्ट नॉट टेक दैट? ये तो इक्वल सी होगी ना यार टी टेक्स e5 के बाद। Huh, I think Hari's probably okay with the draw before the rest day. After his loss, I think his chances of winning the event have gone down drastically. And maybe he's okay with the draw, yeah? Matlab, he's like, okay, let me just take a quick draw. Anish is a strong player, and yeah, maybe that's the strategy. I don't know. Yeah, looking like a very very solid position right now. By the way, Hmm. Luke versus Jordan, you just played h6. That's also an update. H6. भाई बिशप को धक्का लगेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट अर्जुन गेम। आई डोंट नो सर, आपने कहा कि लाइक वो ड्रॉ वैसा, मेरे को तो पूरी उम्मीद है अर्जुन जीतने वाला आज। आई थिंक व्हेन यू आर रियली रियली लो इन फॉर्म ना, आई थिंक यू रियली वांट अ गेम जहां पे यू कैन नॉट लूज, एंड आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ गेम, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, स्ट्रेटेजिक सॉलिड व्हेन ब्लैक हैज डबल पॉन्स। मे बी दिस इज द काइंड ऑफ विन ही नीड्स, आई डोंट नो। I think it would be a big. I mean, if he wins this, देखो ये match, I mean, जल्दी खत्म तो नहीं होगा. I mean, we can already see that it's an end game and Black has that slight, pawn structure issue, वो f6 और f7 के pawns. अगर ये game, if Arjun wins, then it will be a very long game. So अगर जीतता है तो it will be a big growth moment also because अर्जुन को कभी ऐसे long grind करते हुए नहीं देखा, in like, for before any game. So I think that would be quite nice to see from Arjun's side as well. या साहब, जो लोगों ने कहा जो अच्छा चेस खेलते हैं उनका वेट लॉस होता है भाई, स्ट्रेस लेने से मतलब होता है भाई। इज योर बॉडी मेटाबॉलिज्म ये वो, स्ट्रेस लेवल्स हाई। स्ट्रेस तो भाई तो अगर 400 वाला भी उतना ही लेता है जितना 2800 वाला लेता है, क्यों साज भाई? आई डोंट नो, 2800 कभी हुई नहीं ना सैडली 400 भी कभी नहीं हुई ना भाई, लेकिन कभी तो होगी यार। बाय द वे अब पता है 400 की रेटिंग होती ही नहीं है। आई हर्ड दिस यस्टरडे कि अगर आपकी 1400 से कम की रेटिंग हो इन FIDE तो वापस इट गोज अवे एंड देन यू हाँ हैव ऑफ टू गेट कोर्स। द रेटिंग बैक अगेन। या पहले पहले हाँ लेकिन बिकॉज, होता था ना, यू हैड नहीं 1000 1100 था मिनिमम। 1200। 1000 वाज द 1000 मिनिमम था। पहले, आई थिंक दे शिफ्टेड इट फ्रॉम 1000 टू 1400 टू वो जो रेटिंग डिफ्लेशन को काउंटर करने के लिए। अच्छा 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 अच्छा, दैट मेक सेंस। Sahil bhai, can Vishy sir play matches now? Of course he can, but he's also very busy now. Like it's very easy to difficult to find time. And of course, like if he plays an event, he will have to prepare for it. That will take some time. So I think his role is
more of being a mentor, helping the next generation get better at the game, and also with Fide, he's helping organize events and doing a bunch of stuff. So we don't see most of it because he's not really at the board. But काम बहुत है यार, है ना? हम्म, एब्सोल्युटली। वीडियोस बनाना, एड्स बनाना, स्किबिडी गूगल करना। अभी आएंगे तो पूछ लेना भाई. मैं तो नहीं पूछ रहा। भाई ये पूछना चाहूंगा कि वो गूगल किसी ने मतलब किसी ने किया तो मैं नाम नहीं लूंगा उसका, लेकिन यार। अक्षर चावला, हेलो जी, हेलो चैट, हम रेडी हैं भाई. एंड नीरी भाई, मे बी इट्स टाइम टू गो फुल स्क्रीन ऑन द गुकेश बोर्ड अगेन. एंड कोई और गेम में कुछ क्रेजी अपडेट हुई है क्या? फिलहाल के लिए तो नहीं दिख रही मुझे कोई, है ना? नो नो नो, नथिंग लाइक दैट। मास्टर्स अरे लीग में चेक कर रहा हूँ कि वैशाली का गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे। आफ्टर दैट क्वीन टेक्स B2, शी वाज वेरी मच इन प्रिपरेशन। आई एम जस्ट चेकिंग वहाँ पे कुछ अपडेट हुआ है कि नहीं। भाई वैशाली का कैन वी गेम हैव एक्चुअली द लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। कैन वी हैव द बोर्ड नीरी भाई बिफोर वी हेड ऑफ टू वैशाली's game? I just want to show Nodirbek's game for a second. We are already in an end game. भाई ये तो गेम खत्म होने को आ गई यार. वाओ, वी हैव ओके, गुड नाइट वर्सेस बैड बिशप सॉर्ट ऑफ, बट या इक्वलिश सी पोजीशन। भाई एक क्वेश्चन आपसे भी और चैट से भी, वैशाली की एक्यूरेसी गेस करो। एक्यूरेसी I आप don't know. गेस करो उसकी। 99.9. नो। 100. Yeah, she has 100 accuracy right now after move 13. भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, क्रेजी क्रेजी क्रेजी. हरी बार डाउन, रियली? नहीं नहीं, आई थिंक इट्स ओके. आई डोंट थिंक इट्स गॉन डाउन. वो हल्का सा पॉइंट 1 2, भाई इसका कोई फायदा नहीं है. एंड वी कैन चेक आउट वैशाली's गेम, आई थिंक, जस्ट टू काइंड ऑफ मेक श्योर. Oh, they have traded queens. So after Mhm. queen takes b2, rook b1, queen a3, castles, queen d6, which was the best move, f4 takes d6, and now maybe white has compensation for a pawn. Yeah, no attack though. But I think queens exchange करने के बाद you don't have that scary attack anymore, and still Vaishali has that extra pawn. Um, the white would have to play pretty actively. Yeah, compensation तो है. You have all of your pieces are fully developed, they're fully active, and black के चार pieces अभी भी घर में बैठे हैं. So definitely there is some compensation here, but to find the next few moves from the white side is not easy, especially if you haven't prepared it on the day. So it's not easy. ट्रो ट्रो प्रग फिर से पानी पीते हुए. साज भाई, कितना लीटर पानी एक गेम में लोग यूजुअली खत्म कर लेते हैं प्लेयर? हाउ मेनी लीटर्स डू यू लाइक यूज्ड टू हैव ड्यूरिंग अ गेम? पर मेरा गेम नॉर्मली मतलब 4 साढ़े 4 घंटे ऑन एवरेज चलता था, एंड आई वुड ड्रिंक लाइक 2 बॉटल्स ऑफ वाटर पूरी। तो लाइक आप समझो 1 लीटर या समथिंग लाइक दैट। हम्म. एंड यू? मेरा भी सेम भाई, 1 1.5 लीटर प्रग तो, लेकिन ज्यादा होगा आई थिंक कंजम्पशन, मोस्ट फॉर लाइकली. श्योर, फॉर श्योर। एंड फिलहाल के लिए दिव्या इज अपेरेंटली सैक्ड अ पॉन टेम्परेरीली, आई थिंक समथिंग लाइक दैट. बट ठीक है, क्रेजी पोजीशन है वैसे तो ये. या एब्सोल्युटली। नाइट D4, क्वीन D4 पॉसिबिलिटीज। बाय द वे नीरी भाई लिख रहे हैं, Abdul Sataro Fedosiv has raised to move 27 already. Can you guess the rating performance of Fedosiv so far? Okay, I'm gonna take a guess, and ये भी 100 होगा मेरे हिसाब से। रेटिंग Because परफॉर्मेंस भाई, रेटिंग परफॉर्मेंस, अच्छा, नॉट. रेटिंग परफॉर्मेंस, अच्छा अच्छा आई वुड अच्छा। से 2869. नहीं भाई, 20 वो सराना से हारा था ना, लेकिन वो and he drew a few बट games, so let's कालुआना say और अर्जुन दोनों को हराया भाई. that's true, that's true। मैं 2769 बोलूंगा। निरी भाई, व्हाट्स द आंसर बता दो. 2845. ओ, आई वाज क्लोजर. लेट्स गो, अरे लेट्स गो. साज भाई, एक और मैगी हारते हुए. मैगी मैं लगाऊंगा ही नहीं अब। गुकेश का एंग्री शॉट कितने टेक्स में हुआ था? वो मैनेजर वाला। आई थिंक वी शुड रिएक्ट टू दैट वीडियो विद विशी सर. भाई क्या मस्त बनेगा रे वो. That was crazy। बट कॉपीराइट लग जाएगा भाई, छोड़ो. कि रुकी वन खेल दिया उसने। अगेन नॉन कमिटल मूव विद द प्लान ऑफ D4, बिशप E3, ऑल ऑफ दिस आर स्टिल ऑन द कार्ड्स। आप वो क्वीन E6 और F5 वाला प्लान बोल रहे थे साहिल भाई, इज दैट स्टिल पॉसिबल, या फिर मे बी नॉट? या मे बी आई कैन जस्ट किक योर क्वीन ऑल्सो विद नाइट G5, बट ओके नो, मे प्रॉब्ली बी नॉट।
queen e6 पे apparently a potential plan is simply taking on e5 and अच्छा knight कर takes दूँ. queen takes d4 takes and this I don't know ये तो जल्दी से draw लग जाएगी मुझे लग रहा है. So do you think this is a draw or is one side better? No, I think white has some chances here. In the Hmm. long term. Hmm. बिशप एक बार फॉर एग्जांपल c3 पे बैठ गया, b2 पे बैठ गया, दैट्स वाइट का बिशप, देन दैट वुड बी वेरी स्केरी आई थिंक फॉर ब्लैक. एक बार e5 पुश हो गया, फिर वो g7 पे थोड़ा प्रेशर आ जाएगा. या दिस इज नॉट, आई थिंक प्रग खेलेगा ये फॉर श्योर. Got it. Got it. So there are some lines here. Queen e6 maybe is a bit risky. If that is like, if you think that white has some chance, maybe it's not the best. Maybe he can develop a piece. Um, Probably bishop a6. Can he play that? It also prevents d4 to some extent. बिशप a6 आई वाज थिंकिंग knight e3 बिकॉज नाउ यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर द f5 का स्क्वायर. तो आई एम काइंड ऑफ इनवाइटिंग बिशप e3 हियर फ्रॉम यू. Got it. Got it. Also queen e6 के बाद ना साहिल भाई, I think knight e5 may not be, it might be too committal. आप b3 भी खेल सकते हो with the idea of just playing d4. या Hmm. b3 बिशप b2 d4 ये भी पॉसिबल है. तो आई मीन d4 तो आ रहा है बोर्ड पे, दैट्स फॉर श्योर. Hmm. Both the players having the same. Oh, he plays बिशप, bishop a6 though, Sahaj. He goes for bishop नाइस a6. Bhai नाइस. सो sahab. knight e3 Knight e3 नाइस. पे क्या आई थिंक प्लान इट्स अ है? गुड मूव, बट knight e3 आई थिंक इज, ये तो ओनली मूव हुई ना. बिशप c4 तो आप अलाउ करोगे नहीं यहाँ पे साहिल भाई, राइट? हाँ नहीं आई डोंट थिंक सो. ये तो कितने सारे पॉन हो जाएंगे भाई एक ही लाइन पे. हम्म. 4 5 6 भाई. भाई एक रुक सी बनता है यार साज भाई. व्हाट डू यू थिंक? एक रुक सी तो बनता है जस्ट फॉर चैट. मीम्स. कभी हैव यू एवर सीन like 8 pieces stacked up on a single SA file? Have you ever? Oh, he allows bishop c4. Oh, he's gonna go bc4. He still keeps the option of d4 alive. But no, in a file never. Rank में तो देखा है, but in a file never. नहीं फाइल में तो हमेशा 8 स्टार्टिंग में थे. कभी रैंक में ऐसे देखा है क्या? मतलब I meant सॉरी सॉरी like सॉरी in the क्या बोल रहा हूँ मैं. the रैंक actual में देखा game. है, फाइल में कभी देखा है क्या? नहीं नहीं, फाइल में I can't remember. चैट कम ऑन भाई. रुक सी बनता है यार. वी नीड ऑल 8 pieces on a single file, the C file. That will be freaky भाई. मजा आ जाएगा. Oof, man. Has Vishy sir ever won Tata Steel? Yeah, I think he has won it like a bunch of times, right? 5 times or something. It's an insane number, if I'm not mistaken, Sahaj. For sure, for sure, for sure. I can check the stats on that also. Wait a second. Um, he has won it I in think Magnus and Vishy 98. have won it 5 times each, I think. 1, 2, 3, 4. Yeah, 4 times he has won Tata Steel. 4 times. 4 times. Got it, got it. Yeah. No, 5 actually. You're right. 5. Three अरे तीन बार शेयर भाई. हुआ था. भाई आप क्या बात है. 89 में भी था एक बार, right? But it was shared. Oh. वाह, तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था यार. Damn. Why is Olympic playing in both Masters and Challengers section? वो दूसरा नोदरबेक है. देखो बॉन्क जी, आपका सरनेम काफी यूनिक लग रहा है मुझे बॉन्क. तो ऐसा कोई और दूसरा होगा नहीं, बट डजंट मीन कि नोदरबेक कॉमन नहीं है. दैट इज अनदर नोदरबेक. आई वांट रुकी 8 टू गेट अ रुक टैंगल. नहीं नहीं यार, आई वांट 8 pieces यार. वी बट एक सेकेंड साहज भाई. सो यहां पे तो 8 pieces थे ही ना. वी हैड 8 ऑन अ सिंगल फाइल बिफोर बिशप a6. Yeah, but I mean वो piece move नहीं किया ना अभी भाई तक. डजंट I मैटर. was लाइक बिशप का भी मूव नहीं किया है. वी हैड like 8 pieces ऑन ऐसे भाई 8 जब भी मैं स्क्वायर. 8th रैंक की बात कर रहा था ना, जैसे इन द 8th रैंक ऑफ कोर्स ओरिजिनल पोजीशन में वो रहता है, बट दैट्स नॉट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. लाइक आई हैव सीन इट इन अ गेम जहाँ पे वो पीसेस हैव मूव्ड फर्स्ट. दैट वाज माय थिंग. हाँ. Maybe गॉट that इट. same thing applies for the bishop on c1 also, I guess. हाँ भाई, बड़ा मजा आएगा भाई. मेरे तो रिकॉर्ड हो गया भाई. ये मेरे तो हो गया भाई. 8 पीस आ गए. बिशप a6 एंड नाउ b3. Yeah, bishop c4, bc4. He keeps the option of d4 alive. My question to GM says, does it affect player concentration when cameramen focus camera too close to your face when you're playing? Maybe to an extent, but I mean they are used to probably these things and they should get used to it as well. But maybe to You an know, extent, but इतना नहीं होगा यार. you know when I was recording, like
पहली बार आई वेंट ऑन साइट ड्यूरिंग चेन्नई एंड टाटा स्टील, स्पेशली चेन्नई में. सो उसमें क्या था कि प्लेयर्स के बिल्कुल पास जाके इसे रिकॉर्ड करना पड़ता था. तो आई यूज टू फील कि भाई यार ये बंदा डिस्टर्ब होता होगा यार, मतलब क्या सीन है यार, मतलब ऑब्वियसली होता होगा ना यार, ये कैमरा मुंह में किसी ने डाल दिया ऐसे ऐसे करके. तो भाई फिर मैंने विदित से पूछा एक्चुअली, तो एवरी ऑल द चेस टेकिंग द सेम फ्लाइट, तो विदित से मैंने पूछा कि लाइक डज इट एवर बॉदर यू, तो कहता कि नहीं, लाइक इट डजंट बॉदर मी एट ऑल बिकॉज आदत हो गई है. सो बिकॉज इट्स हैपेंड मल्टीपल टाइम्स, आई थिंक इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर प्लेइंग रूटीन, सो या सो टू स्पीक, की फोटोज कैमरा ऐसे चलता रहेगा. That actually makes sense. That makes a lot of sense. That's what Fisher complained in the first game against Pasky regarding camera, right? Yeah, but I think that's a very different way to see it. Usko ek, he wanted to play in a different hall, in like a smaller in in a smaller space, so a different thing. But yeah, you can compare the two. Saj bhai, you know what we really need here? We need h6, bishop e3, bishop c4, bc4, sorry, king h7, bishop c5 and bc5. भाई ये चाहिए भाई हमें यहाँ पे. आ हा भाई कितने सारे प्यादे गुकेश एक ही कितना लाइन में. खुश होगा ना ये देख के कि आपने उसके 3 पॉइंट सी फाइल पर डाल दिए उसके वो भी आइसोलेटेड. बट बट स्टिल इक्वल है भाई द गेम. एंड यार देखो, ये मत देखो कि हमारा गया क्या मिला क्या, सारे स्क्वायर्स बी फाइल पे कवर्ड है भाई, सब कुछ कवर्ड है भाई. Yeah, but C pawns themselves are not covered by. This is very bad, I think, for Gukesh. अरे यार साज Hmm. भाई, यू आर किलिंग माय क्रिएटिविटी भाई. Hmm. Sorry, why? Sorry. One is Northern Bag. Yes, exactly. भाई है वो. Actually, no, भाई नहीं है, but yeah. एंड फिलहाल के लिए टाइम बराबर है, दैट इज यू नो गुड फॉर बोथ प्लेयर्स, बोथ ऑफ देम यू नो मेंटेनिंग देयर क्लॉक्स, नोबडी रनिंग टू अहेड ऑन द क्लॉक. सो मजा आएगा, लंबी गेम चलेगी. वी आर ऑल रेडी फॉर अ क्रेजी क्लैश हियर चैट. नीरी भाई ने फोटो, नीरी भाई डालनी है फोटो तो पूरे 8 पीस की डाल दो ना. अच्छा वेट, व्हाट व्हाट. क्या हुआ? अच्छा ओ, अरे दे आर जस्ट कैप्शनिंग इट भाई, दे जस्ट कैप्शनिंग इट नीरी भाई. आई डोंट Oh. थिंक दे आर एक्चुअली राइटिंग इट भाई. ओ हमारी ये फोटो ना नीरी भाई ने ट्विटर पे डाली, और apparently Tata Steel Chess reacted to it somehow with probably a very confusing वो लिखा हुआ था ना, wrong answers only, something like that. Their captions or something like that. I Yeah. think. Hmm. I'm guessing this is just a caption, yeah? This didn't Of happen. course, of course, of course, of course. Why would he why would he resign? क्योंकि सारे squares आ गए. I think it's just a caption. But yeah. Ooh, because भाई chat, I don't know, but what happened was कि उन्होंने उसको नीचे में डाला कैप्शन दिस, ठीक है, ऐसे 8-7 पीस आके कैप्शन दिस. और टाटा स्टील ने ट्वीट किया, ब्रेकिंग न्यूज, प्रग चेस डिफीट्स गुकेश इन द राउंड 8 ऑफ टाटा स्टील कनेक्ट 4 टूर्नामेंट है भाई, नॉट टाटा स्टील टूर्नामेंट. ओ अच्छा अच्छा अच्छा. अच्छा 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 अच्छा, कनेक्ट हम्म. टूर्नामेंट. मैं साहिल भाई, कंफ्यूज हो गया एक्शन के लिए भाई. मैं 1 सेकंड में आया. बी राइट बैक. हाँ. साज मैंने लगता है बेट्स लगा दी थी भाई, बेट्स कैंसिल करने गए अपनी सोच. जी सर, आई थिंक 8 अगले 10-15 मिनट में आ जाएंगे चैट. एंड रुक E8 खेल चुके हैं यहाँ पे, सो ही डिफेंस पुट्स मोर यू नो प्रोटेक्शन फॉर द E5 पॉन. कल को D4 के बाद दैट पॉन इज सॉलिडली डिफेंडेड. एंड ऑल्सो रुक यहाँ पे आता है हाफ पन फाइल पे, एंड ऑफ कोर्स दीज रुक्स आर नाउ कनेक्टेड. सारे पीस डेवलप हो चुके हैं, एंड नाउ इट्स जस्ट अबाउट हु कैन स्ट्रेटेजाइज बेटर. Can a chess tournament be held in a football cricket stadium? Of course, it's been held before. I think not with an audience, but हो चुका है. 1 सेकंड हो गया भाई. साज भाई का 1 सेकंड डिफरेंट है भाई. साज भाई थोड़े डिफरेंट है भाई, इनका 1 सेकंड डिफरेंट होता है. Whose accuracy is higher? I think फिलहाल के लिए 98.3 is for white and 97.9 is for black. So काफी close. एंड अभी हम लोग चैट जल्दी से 500 लाइक कर दो भाई. 420 लाइक है. लेट्स गेट टू 1K लाइक्स एज सून एज पॉसिबल. विशी सर विल जॉइन सून. एंड फिलहाल के लिए प्रगनंदा कैलकुलेटिंग इन दिस पोजीशन विद द वाइट पीसेस कि भाई क्या करना चाहिए.
बिशप E3 हम तब से देख रहे थे, काफी लॉजिकल चाल है. नाइट E3 आई थिंक एज साहज मेंशन्ड इज अ डिसेंट ट्राई बिकॉज F5 पे नाइट जा सकता है. एंड अगर ब्लैक ये बिशप दे दे तो ही हैज बेसिकली, या बिशप से मारो रुक से मारो, डजंट मैटर. द पॉइंट इज कि ही हैज बेसिकली काइंड ऑफ गिवन अप द बिशप पेयर विदाउट फिक्सिंग हिज पॉन स्ट्रक्चर. सो मे बी दिस इज लाइक अ स्लाइटली बेटर पोजीशन फॉर व्हाइट, ऑल्दो C5 आ रहा है, सो यू नेवर नो. Time is slow for Sahaj. He walks at speed of light. Absolutely. Speed of light पे चलते नहीं, दौड़ते नहीं, कूदते हैं साज भाई. When Vishy sir was playing Magnus in Chennai, Ramesh sir was commenting that time he performed about upcoming talent. Is there any upcoming talent we should watch? I think इतने सारे players है यार. मतलब it's just we have 3-year-old talents now. एंड दैट इज अनीस सरकार. आई मीन जस्ट इमेजिन कि इंडिया में इतना टैलेंट भर चुका है. उस टाइम पे क्या था, वी हैड वन विशी सर प्लेइंग द टॉप लेवल इवेंट्स, हरि कृष्णा काइंड ऑफ देयर, Sasikiran sometimes, Adiban, but he was the one who was leading the front. And now there are 3, 4, 5 at the top itself, and इतने सारे 2600. उस टाइम पे 2600 ही 2 या 3 हुआ करते थे. I remember Sethuraman was 2600, Adiban was 2600, and like Sasikiran maybe, अभिजीत and that's it. Go Saj bhai. अभिजीत भी था ना, अभिजीत भी था ना. Abhijit sir, yeah. Abhijit Gupta was there, and I think, yeah, I think that was it. That was That it, was it. exactly. 2600 was enough to make the Olympiad team, yeah? Yeah, बिल्कुल. इनफैक्ट जो फर्स्ट ओलंपियाड हमारा ब्रॉन्ज आया था उसमें ललित was 2550. He won the Uh, national championship, मुझे याद है. He won he it won that the year, national ना? championship, yes, हाँ, and he was 2550. तो मतलब वहाँ से अगर हम लेवल हम कंपेयर करें तो there is a massive difference in the last 10 years. हाँ. अब तो भाई 2500 पे तो भाई 2600 भी कोई चांस नहीं है. अब तो 25 2700 पे भी कोई चांस नहीं है भाई ओलंपियाड टीम में. 2750 होना पड़ेगा. मतलब I was thinking कि जब चेन्नई में हो रहा था तो we had 3 teams ABC, and जो लास्ट जो C टीम थी उसमें भी सारे 26 होते. Like the fifth player was also a 2600 player. मतलब मुझे तो मतलब EF पता नहीं कहाँ मतलब लेटर्स ही मतलब निकल जाएंगे. And तब से it's gotten worse, Sahaj. So हम्म. now if we had an Olympiad in India, I think टीम B भी 2700 में ही रहेगी हमारी. Like there's a हाँ genuine chance team B can win the Olympiad. There's a genuine chance. बिल्कुल भाई, क्योंकि चेन्नई में भी जब टीम बी थी उसमें 2 प्लेयर्स 2699 थे. Uh, एंड अर्जुन एंड गुकेश, एंड वो मतलब वो क्या कहते हैं, ओलंपियाड के बाद ही दे बिकेम 2700 रेटेड. yeah. I went to watch India Masters this time. This the day I went, Arjun lost his main game. So yeah. Oh, you went on the last day, yeah, when he played Arvind. Yeah, that was a heartbreak for him. But yeah, फिलहाल के लिए rook e8 के बाद Pragg is still calculating. I also am going to quickly check if there's an update in the Arjun game, but not really. Not even a single move has been played. Bishop e2 last move. And Nodir की game में कोई update नहीं है. Hari Krishna game, no update whatsoever. And yeah, I think game slow चलती हुई आज before the rest day. Nobody willing to take any risks. एब्सोल्युटली. बट एक गेम में अभी भी मुझे थोड़ा सा रिस्क दिख रहा है, व्हिच इज वैशालीज मैच. उसके ओपोनेंट ने बड़ी क्रेजी से चाल चली है लास्ट मूव. आई जस्ट वांट टू चेक दैट आउट. क्योंकि वो लास्ट मूव वी कैन डू अ डीप डाइव हियर. बाय H4 ही इज ऑफरिंग अ सेकंड पॉन. But if you take it, I Wow. think I can play F5 and I can trap your knight. Probably that's my plan. तो H4 तो आप नहीं मार सकते ना? Yeah, नहीं मार सकते because next G3 आएगा and the knight will Exactly. be trapped. So great move H4, kicking the knight away. And if black plays H5 तो ये pawn हमेशा के लिए यहाँ पे target बना रहेगा. So Vaishali, she's played H5. Oh, hello, Chad. I think it's time we have a legend joining our panel, and it is none other than 5-time world champion Vishy Anand, sir. Welcome, Hi, sir. how Can are you hear you? us? Yes, I can Hi, hear you. Vishy Can you sir. hear me? Yes, sir. We can hear you. We can hear you. Good. Awesome. So it's so glad to have you on the panel, sir. Have you been following the event? How is everything going? Yes, I've been following it every chance I get, and amazing. The fighting chess here is incredible. So many exciting. Oh, my video is not on. Okay. No, Yeah, I so now was we can see you. We talking can about. see you now. You can see me. Okay. Yes. क्या बात है, Vishy sir with the merch. I'm jealous now. Absolutely.
So have you been following the event, and who has impressed you in this event? Because two Indian leaders we have on 5 points and some fantastic games, some fantastic resilience. How has your experience been following this event? Great. As I said, so many interesting struggles, decisive games, all that. Um, I started out very impressed with Pragg. He seemed to be really in control in many, many games. But really, all the leaders, I mean, Gukesh, in his slightly risky, um, treading danger, but never quite succumbing method, he gets there in the end. And of course, Abdusattorov also a very clinical, impressive performance. So, I mean, it's not very original to say I'm impressed by the three leaders. No, it'd be nice to add a bit more depth, but honestly, all three are looking good. Also, Fedosiev, I was quite impressed by, though he's +2. But Fedosiev, I think, beating Caruana, Arjun was a bit dicier. I mean, his games also strike me as just very interesting. Yeah. So this actually actually makes me think And of on the other side, the veteran Irvin Lamy in the challengers. Yeah, he's doing very yeah, reading the event. So that's very interesting as well. Yeah, it looks like it's going to be like this the next few rounds. So Yeah. sure. Good. But sir, this makes me think of a question between Gukesh and Pragg, because you said that Gukesh has a bit of a he takes slightly more risks. Would you say that in when it comes to their natural style, Gukesh is taking more risk in comparison to Pragg, or is it the other way around, or is it very similar? Actually, I don't think you can generalize like that. If you see Pragg in the candidates, he was taking very, very high levels of risk. But the nice thing is here, he has not had to take on inordinate risk, extraordinary risk. In this tournament, the positions he's getting are really up to the kind he likes, and he's able to then do it more balanced. Whereas, for Gukesh, obviously playing his own seconds just to find some space, something to play without getting bogged down right away, he had to try some unusual schemes and things like that. I mean, against Hari Krishna is not at all an easy player to beat. And Gukesh, found some idea in the French, put it out there. Yeah, even Norderbeck, he was pushing the limits a little bit against Jordan in the opening. I mean, very soon it turned in his favor, but in the opening, these days, you're forced to push a little bit just to provoke some response, provoke an unbalanced position, and that's what they're all doing successfully. And it also shows a lot of confidence in their own abilities. And which is we've seen somehow, Gukesh, in quotes, getting lucky, so to speak, like having that determination to keep fighting till the very end. He had a couple of games where he was worse and he came back, and people are calling it the Gukesh effect now. So how does he kind of maintain that resilience and never gives up? That's a start. If you give up and resign, you lose points. So that's a very nice strategy for them at the start. But more seriously, he puts resistance. That's the position is winning with an engine running, but it's not winning at the board. And he puts up resistance. He finds ideas. Like his game with Norderbeck, he's been outplayed for a very long time. But in the end, is it obvious to a human eye that a rook on e2 is so much better than a rook on e8 when you play knight e6 and so on? These wins seem obvious with hindsight, but at the board, it's easy to mix one or two up. And I wouldn't call it luck. He's doing what his style permits him to do, and that's it. He's a very good calculator, and I think when
other players defend well and win positions that they were maybe doing badly in the beginning, nobody says it's luck. It's just assumed to be their strength. So why shouldn't we give Gukesh that luxury? That's a great point, sir. And Vishy sir, we've seen, I think, Arjun struggle a bit, and he's gone for aggressive lines as he usually does, and usually it works out. So, from his perspective, what can he do today in this moment to get his confidence and his mojo back? He has to wait for that break. It's happened to me once or twice. It's obviously, we watched Arjun last year, and it was hard to imagine that it's ever going to stop, and he seems like some sort of unstoppable force. But in this tournament, it simply hasn't worked out for him. Hari Krishna did this to him once before in the Chennai Masters last year. And in between, he beat Hari a couple of times. And then here, I think, if I'm not mistaken, they're now at 4 decisive results in a row. But and look, Vamadam played a very good game. Arjun, of course, is taking some risks, and this G5. I've seen this G5 against the bishop sitting on F1 instead of being on D3 and going to C2. Even there, G5 is supposed to give white an edge. He tried it here, but in this position, in the end, this weakness on the G5 turned out to be more than worth more than the central pawn. But he's kind of you get angry that the tournament isn't going your way, and you try to bend it to your will. And now the problem for him is that every day he continues this. If he wins, he's back to -3. But if he loses, it's -5. I mean, it's on the other end also. The scale is it's tough. But I feel if Arjun wins one game, he might win 2. You need that break, and then he'll feel better about himself and so on. But sir, do you think having this time control has any effect on the performance? Because of course here, we have an hour and 40 minutes, and then we get 50 minutes extra. I mean, and Arjun's style, of course, is very, very dynamic, which gives his opponent more time to think. Do you think that has an effect to this in this event, or is that like a second, or am I overthinking this? I have not considered that aspect very much, but it's usually Arjun's method. In the tournaments that he does well, he usually puts a lot of pressure before the first time control even. So it's not even the additional time that changes it. He puts a lot of pressure and creates a crisis on move 32 or 33, and then it's usually there that something dramatic happens. But it's an interesting point. I would have to look at his games a bit more closely with the time control and see how they map out. I don't have an instant answer to that. It could well be that because his opponents are getting more time to think in the second wave. But how many of his games have gone to that situation? Yeah, it's a good point. Not a lot, I would say. Just yesterday, I think it was because yesterday with the game of Max, it went past the 40 move mark, and there was a situation where this is where I was thinking about this point, that maybe if Max had less time, there would be more chances of a mistake. But of course, the position and once the 40 move mark was done, it felt like it was it was just a clear game. Right. I thought that as soon as Max got the setup with King H2, Knight H5, F4 or something, that essentially the only way Max could go wrong was some tactical blunder or something like that, oversight. Because the positions are to place itself. Once you play E5, all the axes are all here. You go bishop E4, rook A6 or A7 somewhere. There's rook on D1. The usual ideas work. And in fact, white broke through simply capturing on B5 even.
I honestly don't know the answer to that. But if we want to know, then we should see how many of his games here have gotten to that second time and also in what state he got there, and then we have to compare with before. To be honest, you just mentally file them as classical, rapid, and blitz, but within classical, this time control and that control is a kind of depth I've not achieved. So you'll have to excuse me on that. So. And so does this position give him any chances? I mean, there's a double pawn here, but that's what black has aimed for. So what would you expect in this position? If black can bring that knight to b6, I would say, and then to c8 and d6, sorry. I would say there are not a lot of chances. But right now, I think the problem for black is if he plays knight b6, white can maybe play b4. And exactly here, ab3 is not possible because rook b3 and I take on b7, and that ending is quite unpleasant. So, and black has no other easy way of rotating that knight to d6. Either he's got to wait a move to play rook a7 and then do this plan, knight b6, c8, d6, or play king b8 to c7 and then do the same plan. Once that happens, it's hard to see how white can break through because there are some interesting plans, but like I could play bishop g4, bishop f5, then lock that bishop with a pawn and try. But if that knight rotates to d6, that bishop will be kicked out instantly. So you lose control of that square. In fact, I think rook a7 may be a decent move here. Just to play knight b6, c8, d6. Okay, and while the knight goes from b6 to d6, what should white do? How should white break through in this position instead? Should I go f3, e4, or should I? Yeah, I'm not sure. I'm not sure myself. I mean, one idea is to play f3, g3, and then knight g2, f4, and then try to push something up. What happens after the castles here? Let's say knight b6. What does it want to do? Knight b6, and then what? I was thinking some f3, e4 before you can settle your knight to d6, but I'm not sure if that is working. Yeah, it could be, no? Maybe I can go f3? Okay, if I go king d8 or something. Okay, you're taking it away from the file. So I can't take on f6 now because you have knight d5. Maybe I have e4, and if you take on e4, then I'll take on g6. Maybe. Yes, but then my pawn structure sorts itself out. Let's say I play, I don't know, fg6 and bishop f things. I could either attack e4 or just defend f6. And it's true, my rook on a7 is slightly awkward. But I don't see an easy plan for white. If white had kept his second knight, then sometimes it goes e2, knight e2, knight g3. But here white was not in time to achieve anything like that. Black came and took that knight quite quickly. Okay. I mean, this is not the most exciting position you will see today or any day. So, I mean, but this is what you have to work with. So it's, I mean, Arjun really couldn't avoid it, but normally he provokes much more of a struggle. So here his opponent is going ultra solid on him. And so switching from Arjun to Gukesh, so how was it shooting an advertisement with him? I mean, the world loved that. So we've learned some new words in the advertisement. And did you know them before? Did you Google them up? How was that experience? I guess some of the words I knew, but the way they are used and, well, once it's explained, then it's pretty clear. And after that, it was fairly straightforward. Both of us struggled a little bit. I mean, when I had to do this Michael Jackson thing, every time I do it, Gukesh would just start laughing uncontrollably. Then I told him to stop because we will never get the shoot out of the way. And then when he stopped, I started giggling. And so this sort of thing. I mean, there were moments like that when
Both of us couldn't keep a straight face at the same time. That was the longest. The bit where he tells his manager, "Whose manager are you?" I think is quite uncharacteristic of Gukesh. So he must have struggled a little bit with that one. And some of the other ones I struggled with. I mean, this sort of I was the principal of the school where you are just studying now kind of thing seemed like overly making a big attempt to be insulting or something, but we got through. So slightly out of character for both, but I think more for Gukesh. Yeah. And so how long did it take to shoot the entire thing? We did a pretty good job, actually. We started, I think I started at quite early, 9 or something. I reached the venue and then we started to the studio and then we started to record some of my stuff. I mean, we could obviously record some of the dialogue separately, so they tried to get that out of the way. And then Gukesh came and he did a bunch together. We were done by 4 o'clock. So we are talking 6-7 hours. And that's pretty good for, well, for his first advertisement, certainly. With so many more to come, I think, in the coming years. Absolutely. Yeah, And also, it was good fun. It was good fun. I will grant you that. Also, sir, which is your favorite slang and why? We have a question from the chat. That's why I'm asking. I mean, for a while, I was using Riz because I just heard the word and I think everyone here got sick of it. I still have no idea what it means, but it means a bit of everything. I still don't know what Gukesh's flex means. A nice flex, I don't know. And they gave us a cheat sheet of Gen Z lingo. But I was quite out of my depth in the beginning. I think even Gukesh wasn't completely familiar with it. But okay, once you see the translation, so to speak, that's just it. So. Would you say that you were more that you knew the slangs more than Gukesh, or was it the other way around? I had a head start. Really? Where I discussed the script maybe earlier than Gukesh, so I had a head start on some of the terms. But I didn't know. I didn't know most of them. I still don't know most of them. So, yeah, what can I say? Awesome. And so I think Gukesh must have been very busy, right? In the past month with meeting the Prime Minister, with this advertisement, with getting the medal from the President. So how much time would he have had to prepare for the event? Like how must have his last month gone overall? You'll have to ask him, but he seemed to be everywhere constantly. And but I think for this tournament, preparation is not the issue. Maybe fatigue, maybe coming back from the sky, the clouds. Those are bigger problems, but not preparation, because he must have so much left over. He can easily, I mean, they can easily pull something out of the match that never got used and said, okay, play this today, and that's it. Yeah. So I think the bigger problem for him would have been actually understanding that he has to play a tournament again, and this La La Land kind of has to put it back and go from there. So, yeah, sounds like a fantastic month, sir. And so, looking at the position, what do you make of this right now? it looks pretty dead. I'm wondering what are the things I would need to do. Like one thing I would probably want to do is to play A4, because I think if Black plays A4, I would start to feel a little bit that maybe Black could do something on the queen side or something, but it's not much. At most, Black is going to play Queen E6 or F6 and Queen F7 and probe a bit, but White's pawn is easily defended. It's like it reminds me of some semi Schnimzo. Okay. With the C3 and C4 pawns, not the C6 and C7, of course, but the C3 and C4 ones.
If black plays f6, white could try to bring a knight to f5 or provoke more pawn weaknesses. But if black simply plays queen e6 or something, and bishop e7 just to stop anything happening on the king side, and simply wait. How is white going to improve? So this looks Right. pretty even to me, yeah. Okay. And so After. looking, Yeah, go ahead. yeah, Sajba, please go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Bye. Yeah, so and looking at 2025, I think we have the candidate cycle which has started again, and we can see how Fabi qualified. He's the first one to qualify. So we have the World Cup, we have the Grand Swiss. So what do you expect, like looking forward, which players from India could potentially get into the event? I guess there are multiple people who would get in, especially if the World Cup is happening in India. That would be a chance for a lot of them. The World Cup is slightly the more unpredictable format, but in a knockout, you survive one day and then you survive 2 days later and then you survive 2 days later again. Suddenly, you're getting close and your chances are pretty decent. I think still the number of people who are going to have a chance at least of qualifying is quite high. Not in the circuit, because obviously the circuit itself limits how many people can do it. But in the World Cup, I guess a lot of people might have a chance. In the Grand Swiss as well, but the format is not necessarily so unpredictable. But in theory, that's the idea, right? To keep the qualification as open as possible. So it's not only Indians who are going to have a chance to qualify. Most strong players from most countries will have a decent shot at it. And that's kind of the idea. So it's good. And yes, Fabi's through already. And so, I mean, would you think that an India versus India clash like this has never happened before? Would that be something you're looking forward to in the World Championship? I mean, the prospect of it does sound very, very, very interesting. And I think we'll enjoy that a lot. But okay, it's a long way from here to there. I mean, we're only talking of qualifying with the candidates now, and then whoever does that is still got to win the candidates. So I think it's just way too early for that. Yeah. And so also, I think we had Nodirbek push a lot against Gukesh. It's so glad to have you here, and you can probably let us know about the psychological aspect of it. So somehow Nodirbek seems to have that, pressure on Gukesh, and he seems to put up a challenge every time. So what's the dynamic do you feel between these two players? There's a rivalry. They're very similar ages. And of course, it must be quite I don't know what's the word, surprise or something, that suddenly somebody who was in the junior thing with you has become world champion already. It motivates the others to work a lot. But I don't think the reason Nodirbek put pressure on Gukesh is because of some hidden rivalry. I think it's simply that he's a good player. Nodirbek is a very, very strong player, and he has the ability to do that. Last year was not so smooth for him, but you know that the best players are going to snap out of it and come up sometime. Yes, but I don't think their rivalry is necessarily because of some past battle. I mean, easy assumption was that Olympiad game might have bothered Gukesh because Nodirbek was quite lucky and so on. But they're both fighters, and they seem to take this very much in their stride. So I'm not sure I have some idea what the clever reason is. I think it's simply they're good players, and therefore they will put good pressure on each other, and that's it. Yeah. And so I think Chad just informed us that E5 apparently, I think Leon seems to have a better game. Probably you can shed some light for us. How does the position look to you? If I go D5, I'm guessing F5 is going to be a problem.
So h3 seems possible. You mean here or in this Yeah, position? here h3. And I guess Jordan's idea must be e takes d4 because if knight f6, knight e5, I don't think there's any compensation. Yeah. No. Here, if I go h g4, you take on c3. So I take with the pawn. Yeah, this works. So I take this. Maybe here knight f6. d5 now or rook c5? I guess I'll play d5 somehow doesn't. Queen e8 maybe is very strong. Yeah. Oh, yeah. Because I gain a tempo like that and then I hit on e4. So rook c5. Then I don't know, maybe b6 and bishop b7 or queen e8 again, but now I can play e5 after taking, so that is different. Slight risk then. Yeah, he seems to be better, yeah? And so Leon, from his perspective, like winning the challenges and kind of showing up at the Masters, and what would you expect from him, and what mindset should he have playing at this event? I guess he should enjoy the opportunity. I mean, he did a brilliant job qualifying for it, and he should enjoy the opportunity and the chance it gives him to try his game against all these players. But nobody goes there in that frame of mind. You go there thinking, I want to do well, and that's what he's going to try to do. But since he hasn't had the best event so far, he just tries something interesting every day and just hope for a fun game. Yeah. And so we'd love to get your opinion on the women's, the challenger section as well, actually. Sure. So we have Divya and Vaishali playing the tournament. And have you followed the games? How has your experience been? We've also seen that Divya has also struggled a bit, similar to how Arjun has in the Masters section. So what can you advise to her as well? I mean, her mistakes have been a little bit all over the place. And sometimes you're not in good form. In those moments, what you try to do is, I mean, one thing I do when I have a bad score is to pretend so many rounds didn't happen and the tournament starts today. It's just finding some way to clear your head and be enthusiastic about today's game and not worry about what happened yesterday or day before. But this is, I mean, every person will have their own way of coping with this. There is no universal method or something. Every person will find their own little trick, and that's what will happen. I think here the problem is only for an exchange. Black has these amazing pawns on c4 and d3, and that's worth a good exchange. So I like Black here. Oh, you will take Black in this position. Wow. I think so. I mean, there are moves like Queen b1 and Rook b1 and what have you. But somehow, let's try Queen b1 and see what happens. Okay. Okay, b7 is your threat. Maybe I go Queen a6 or Queen I mean, I'm thinking of Queen c3, but Queen a6 somehow feels illogical. Queen a6 is very passive. Maybe I could even play a4 or something. But you could just develop the knight. Let's say knight bd7. Yeah, knight bd7. Because if I go Queen b5, now you have Queen takes c3. Aha. So this is the reason this is maybe not effective. So maybe something else instead of Queen b1, sir? I mean, there's Queen c1 or Queen d2. Well, the thing is, after, let's say, some move like Queen c5, even if white wins that b7 pawn, black's position is still a very good compensation for the exchange.
Yeah. Maybe rook b1, knight c6. But yeah, this feels quite good for black. Yeah. Knight Initially, c6 could be a move. Hang on. Yeah, maybe this is a were knight you bd7 considering as knight? well, really. Yeah, Sorry? knight bd7. So yeah, I was asking, were you considering knight bd7 as well instead of knight c6? Yes. I mean, my idea is if you take on b7, I'm very happy, as long as it's only that one pawn, and then Mm-hmm. just maybe to bring my knight to queen to d5 or some centralizing-ish move. Mm-hmm. Or play a6 first so you don't have any rook b5 and then bring some pieces out. Yeah. Yeah, looking a It's like bit it's an interesting difficult for imbalance for there. sure. Mhm. Yeah. And so, actually, I just noticed, I think we had this discussion earlier that we had 7 players above the rating of 2,700 now. I mean, I don't think we even come close before. Like, how does that make you feel overall to see so many Indian players at the top? I didn't know that, but look, you can say this in many ways, and we have that. We have a lot of very, very good players, and somehow also it's difficult to get excited about every little milestone. But Yeah. oh, they all broke 2,700. Oh, they all qualified for this tournament. They all, the basic point is there. It is very exciting. But maybe even more significant was the results they showed. I mean, the Olympiad domination, and incidentally in the with amongst the women as well, and those kinds of things are very meaningful. So I think the rating thing is more of a confirmation rather than a. It confirms what we already knew, sort of. And so, for you personally, what can we see you doing in the entire year? Are you planning to play any events? Where would you be for the important events happening overall? I don't know yet. I might play something, but it's not yet very clear what I would play. I don't have a very thing. I'm playing in Leon again, and maybe something after that. Got it. And Niva, maybe we can have the cameras for the Arjun game again. Would love to get Vishis's opinion. And so I think we have a few moves. So King E7 was played, G3, King D6, King D2, and Knight went to F8. So who Okay, do you think so favored? Yeah. I really love the knight on d6. It's not that I see something wrong with knight e6, but it's just it's kind of sad that instead of the knight on d6, he put his king on d6. But knight e6 again. The thing is, black's position is the pawn structure is slightly messed up, but black's whole concept in this opening is that there's not much white can do with that. And in fact, white doesn't look too much better at this stage. Maybe I can play bishop d3 and then just f3, and then your bishop is stuck for a while. And then I can play rook b1 and b3, because b7 now has to be defended by some other piece, not the knight, which kind of was what I was obsessing about. But it's not I don't think it's a big deal anyway. So after a move like bishop d3, would f4 ever be a plan for white? Just to invite the bishop trade, or is that not? At the risk of repeating myself, if I had put my knight on d6, this would not be a problem. But this king on d6 is really standing out. Yes, I mean, if knight e6 and you go f4, I'll probably have to take on d3 at some point. Yeah, well, now let's say king d3, and then I don't know, you can bring the king to f3 and maybe play knight f5 check or something, but it's still very hard to make progress. And I could also just play knight g7 and say haha. So exactly those words. And so it's black's very solid. I don't. Shall we see what Hari is doing against Anish? Yeah.
Yeah, absolutely. Understood. And I think so. We kind of came from this. This is where we Mhm. last left it. We've had a bunch of moves. He took on e5, which I think Saj was mentioning was an interesting decision. Eh, Perhaps, but it's also a slight concession, right? Because you've released the tension in a way, and I don't know if it's that helpful for white to be better. Hmm. I mean, at least if Right. you played a3 or bishop c2 and think you're, I don't know that white's better, but at least you're fighting Yeah. for some sort of, you're fighting with this. Also, this pawn on d4 was like a wall blocking the black bishop. Mhm. Um, Whereas the white bishop still has hopes on the king side. Maybe I go g4, g5 somewhere or something like that. Hmm. But after you exchange those bishops, I must admit, I don't see a lot of advantage for white or anything like that. Hmm. Bishop c2 was played afterwards. Bishop exchange, c5, rook goes back, and knight g6 takes, and b4 and queen b6. And this is the current position. Now it's hard for white to move the bishop on c2 or the knight on d2 because everybody has to defend e4. Hmm. Um, and so my feeling is it's slightly unpleasant for white, but probably nothing dramatic. But it's easier to play as black. I mean, if you're short of time with black, you can just play bishop c6 or something and just make a move and pass. But for Hmm. white, moves are a bit harder. You can play with the queen, you can play with the rook, but the minor pieces can barely move. Yeah. And so that's a bit of a problem. And so where would the queen go? I'm not sure what the best square is. Well, c1 or b1. Yeah, I mean, b1 at least protects the e4 square. No, if I play queen b1, then I freed the knight. I can then play knight f1, knight g3. That's Hmm. maybe an idea. Hmm. But Would still, I feel something black like is pushing e5 white. would something like e5 be beneficial for white here, or is this no, not immediately. I'm just saying if I plan it, or is this not a It's a threat. If black plays d5, the problem for black, he cannot play d5 because e5 is quite strong. Mhm. But as long as the pawn is on d6, I don't see how white is going to accomplish anything. And if the white knight was already on g3, then white's position would be excellent because I have moves like queen d2, rook b d1. You know, everybody has squares, but that knight is taking a lot of. First of all, it's taking the d file from white. It's also taking the d2 square from white. Hmm. So Yeah. And so Yeah. we've already had that classification, let's say, in terms of classical chess being different in two formats. So what would be your favorite time control in the classical format, let's say, time control? 50 minutes or less time? I think most classical formats still keep the essence of a lot of time. The way I think of it is, if you're playing a blitz tournament and then you go to a rapid tournament, you'll think you're in a classical tournament because it feels like there's so much time. But after you get used to it, suddenly maybe you want a bit more time. In which case, you can go to the 1 hour per game range, or even 1 hour something. Then you can get to 90 minutes plus seconds. That's thing. Or you can go the whole range, which is 90 minutes for 40, and then you get some extra time and so on, which is much longer, similar to what we're having here. I don't think the minutiae matter. Once you've got more than an hour and a bit or 2 hours, I mean, so close to 2 hours, once you get to the range of 2 hours, I think that's enough time to be able to think through a lot of stuff. So um, then I think you can talk of a proper classical game. And blitz and rapid are obviously rapid. Well, you have 10 minutes, 15 minutes, 20, 25. So there's maybe we need more names there, but it's trust me, after you play blitz, it feels like a lot of time. So everything is relative in a way. And Well, there's one question Niranjan I had and that asked that was, which is one opening you have never ever played in your life and nobody ever could convince you to play it? can I guess? Just one. Tell me. Yes. It's Bonk Cloud.
That is true. I have not played. I played King E2 against Daniel Friedman, but it was a no castling thing in which it actually was a good move. So I have never played that. It is true. Um, there are obviously openings that I haven't played in a very long time, but I think I've tried all of them at least once. No, I remember I asked you this question during the Tata Steel event in Kolkata, whether what are your opinions of the Bong Cloud, and you said you would never play, you would never consider playing something like this. That's how I remember this. But by the way, Yes, my hand would hurt, but anyway. But yeah, two updates by the way. One in Pragg and Gukesh's game, he did eventually play A4. And by the way, in Leon's game, also something very interesting happened, which we had discussed with Vishy sir with D5. But I would love to check that out Oh, as well. He played d5. okay. So this seemed complicated for me. If you castle and I go back knight f6, isn't my center kind of collapsing? Maybe we take on Just- e5. Oh, knight e5 is possible. Knight e4 maybe? Or knight d5, I don't know. fe4 maybe. Yeah, fe4 and bishop f5, yeah? Because again, my favorite trick, if you go bishop takes e4, I play queen e8. Ah, nice. Nice. Uh, So yeah, this is on the board. Knight f6 is it's now black to play, right? Yeah, knight f6 on the yeah. board is what we're looking at. But black still got a lot of weaknesses. And so even if black ends up with an extra pawn, I might be able to hang in there. Only thing is I don't know what to do with that knight on e5. If it gets kicked around, if I capture, let's say in a castle's knight f6 and I take, then you play fe4. I'm probably going to lose a pawn, but I'm slightly more concerned what to do that night. Absolutely, and Maybe at bishop some f5 point- is just coming with a Yeah, tempo, bishop yeah? f5. Bishop f5 would It's save coming it. with a tempo, defending everything, and d5 pawn is also hanging. Mhm. Looks a bit worrying for Leon, right, sir? It looks like it's going to be a pawn down, but it might not matter that much. White may have enough play for the pawn. Mm-hmm. I see. Sahil, do you want to look at the game with a4 as well with Yeah. with Pragg and Gukesh? That's Sure. also something we looked at a bit There it is. earlier. Yeah, it's very annoying when you say that you want to stop one move and then they just allow it. But nothing disastrous at any rate. Rook a d1. I mean, even if black attacks, white has enough ways to defend the pawn on c4. It's just well, I wouldn't have let it, but I can't say that it's bad. Would you had to a3 choose be my plan here as black at any point, or do I just keep? Well, let's say you play a3 and I go c5. Does that work? bc5? c5, d takes e5. Knight takes, queen takes, and then f4. But the other problem is if you just wait queen e6 or queen e8, also or queen h5. And maybe the a2 pawn is weak. I grant it's not obvious right away, but I think there could be a rook b2 somewhere, and or a c4 and bishop c5 maybe. So it's not easy to push this all the way. So if you Then had to again, I don't choose know. one, If I play e5, bishop f8 and c4, am I not clamping down everywhere? Oh, that's a beautiful color show there. We could have Yeah, some. I think- We could have some LEDs go off. It'll be like a Coldplay. It'll be like a Coldplay concert. All the pink. So So did you did you attend the attend the concert?
I did. And Vidit also did. Oh wow. Oh, wow. And unfortunately, the way we were, we didn't meet at all. And the problem was we had no connectivity in the venue, in the concert arena. So we couldn't even message each other hey, where are you? Where am I? And so I sent him a message. He sent me a message, or we thought we had sent each other messages. Then when I went back home, I received his message saying, I'm here. Where are you? Useless. And so on. So our plans for meeting each other did not work out. But luckily, he was able to come. He was sweet enough to come to Chennai, and we managed to get that done. So that was nice. That was an amazing event. So, I mean, I think when Vidit also came, like, how did you come up with that idea, and how was that entire process? It kind of was spontaneous last year, and then this year we thought, well, let's do it again. It's nice. Uh, I had quite a few friends who had a kind of open house system. There are houses where many people would come and visit and thing. And I always thought that was very cool. So I'm happy to do it in a way, to try it myself. And Aruna also likes it a lot. So we invite everybody, and everyone comes, and it's good fun. Yeah, it looked amazing. I think we saw you dancing as well. So I mean, I don't know where you. I think maybe you took inspiration from Gukesh for the steps. Uh, Thank you for calling it dancing. Essentially, it was a leg swing to the left and then a leg swing to the right. But if you call it dancing, I'm not going to argue with you. And yes, I mean, we were trying to do the Gukesh dance, but it didn't. Let's leave it there. No, it looked amazing. I think it went viral across social media. Yeah, I think you were getting millions of views on all those reels. Yeah, sure. Which is perhaps Salil, more a comment. Which is perhaps more a comment on social media than it is on my dancing. But anyway, so, okay. No, this let's doesn't go to the work live mode, yeah? because Black seems to be quite active. No, Yeah. I don't know. I might just have enough control on the dark squares to stop anything. Okay, but otherwise, well, nothing going on for white, I think. Yeah. And so maybe it's the rest day and most people are like kind of playing it safe. And he just played, I think, F6 on the board. Maybe knight h4, knight f5 could be a plan. Yeah, at least you provoke g6. Or you could go bishop e3 and knight d2. That's also possible. Vishy sir, I have a question for you. When I was younger, I used to be trained by I don't know if I can say the name, but I had a coach who used to tell me that the F pawn is the golden pawn, and you should try to touch it as less as possible. Is this something you would agree with, or is there a rule like that, or not really? Was it regarding certain openings? I mean, in general, in all open systems, the F pawn isn't ideal to touch because your king is then weakened in thing. But beyond that, I've never seen this principle. And there are so many openings now where people do things with the F pawn that at least I've not heard of such a principle being broadly applied. Wow, the golden pawn being debunked here. It's the weakest pawn, at least, on the chessboard because it's right next to the king. On the other hand, what do you think of the king's gambit then? Well, Samay did play it against Magnus, so maybe it's not as. And you did have faith in it. That's not the strongest recommendation I've heard for the king's gambit, but anyway. Also, Nepo had come on, Sahaj, you didn't answer my question. What do you think of the king's gambit? I don't like it with either colors. When I was younger, I used to never take EF4. I would play D5 because I hated playing this as a kid. So I didn't like it with either color. But I also remember Nepo had a course right before the World Championship match against Magnus. He released a course on Chess and it was on the King's Gambit, actually. And
It was It's not as refuted as I thought it was. I mean, a couple of years ago, I thought we could just sit with the computer and shut it down. mhm. But White does have considerable resources, and it's maybe a good way to study how to attack, because you learn to squeeze the last bit out of every piece you have and so on. Right. Having said that, yeah, there's an opening for you that I have not played. So You've never played King's Gambit? I have never played King's Gambit. Wow. Might have done in my childhood, but I don't remember for the last how many other years. So. It's a G3 played, By the way. so Knight h4, f4, knight f5, something like, maybe not f4, but yeah, knight h4 ideas. Pragg is kind of relaxed, isn't he? If I go queen f7 now, he's going to play what? Queen d3? Well, he has to, right? And then I can play either a3 and try for rook a4, threaten rook a4. oh wow, that's nice. It's not easy to say. White will play bishop e3 and bring the knight to d2, and there we go. But We'll get f4 here as well, maybe at some point afterwards. your golden pawn. So, I mean, my coach used to say that, you shouldn't touch it unnecessarily, only when there is only when there is a tactical reason behind it. Otherwise, f4, of course, f6 I understand is a logical move here and all of that. But yeah, it's just something that he told me to think about throughout as a general principle. Sure. Okay, should we go to maybe any other board, Sahil? Maybe we can check. Oh, by the way, some updates in Leon's board as well. The line that Vishy sir was showing us with knight f6 is on the board already. I think knight f6, yeah. Knight f6 on the board, and now Leon has to make a choice. Does he take the pawn or is there something else? Also, taking a quick look at the Arjun game, also he has offered a pretty interesting exchange in this position with knight f5 check. Vishy sir, you were saying bishop f5 at some point, I remember, was a likely. What do you think about this trade with the bishop in the knight endgame? Does it suit him or is it not as good? Let's try. Bishop takes f5, bishop takes f5. And what should I do here? Play h5. Maybe h4. And then knight g7 and then f5 maybe. Something like that, which... And eventually we'll have your move with the knight on d6. Yeah, king e6, knight e8, knight d6, something like that. Am I so unimaginative? Is that the only plan I... No, sir. Yes, but no, I think I will have that pawn. I'll need to defend with the king so that I can release my knight. So at least king e6 and then rotate the knight around. Yeah. But maybe the pieces are a bit overloaded. So we have to do this more accurately. Maybe play h5 later. Because here, if I play king e6 and then I bring the knight to d6, then assuming lots of things happen, still the h5 pawn also has to be defended. So the rook will have to sit around. Maybe black's best is to have the knight on f6 or something like that. But still well within the margin of for black, so no big deal here. Yeah. And so black is right now thinking, and all players... Sorry. Have you ever been able to figure out how important do you think body language is? Like, is it possible? Do you think somebody who's very confident at the board, like usually is playing good moves, or do you think there's no correlation there? There could be an element of bluff, but in general, somebody who looks confident probably is confident. There are people who try to look more confident than they are, and when they're blundered, then looking cool and totally unperturbed is an art form. But mostly, confidence is a very natural thing, and you should show it freely. Yeah. And maybe we would love to get. Shall we have a look at Norderbeck, by the way? Yeah. And so this is the position, and he's also one of the leaders, and this is the current position.
And seems like Fedosiev is just played a good move, b4. Yes. So he's saying he doesn't want his pawn to be stuck on b5, which is fair enough. And also that now if you capture the pawn on b4, black will capture on a2. So if you take twice on b4, rook b8, and not exactly this way, but rook b8, I'm counterattacking on a2. So I don't know how white should play. No, I just made the move to explain the point. Obviously, I would not do it without preparing it with rook b8 or something. But and if black plays king c6, he's threatening king b5 or something. So again, white will have to respond. Maybe So what white about plays rook b8? rook b8. Yeah, rook b8. I can go king c7. And now maybe rook g8 I was thinking. Because Sure, and then I go king c6. And you have much better than back to b8. Yeah. Or maybe rook h8 instead of rook g8 then. So after king c7, I go rook h8. If I go king c6. Okay, I'll take the pawn on h5 maybe. Oh, wait, you have bishop b1, I think. You have bishop b1, yeah. Yes, apparently I do. Yeah, that looks risky. So is it repetition incoming, sir? Or for or rook b6, rook a6 maybe you can try also, but yeah, looks like a repetition. Oh, so let's see your idea. C takes b4. A takes Sorry, b4. One you mean move. which position, sir? With the rook on b8. Okay. And Rook on g8, I think. So rook b8, king c7, right? Yeah. And I never have the time to do this. Yeah. Also No, bishop this b1. doesn't work actually. Yeah, this is looking like a. Yeah, this looks likely a repetition. Yeah. Hmm. And so I think we can have one look at the Pragg game. I think something has changed there. So after He has played queen- d5 actually. Yeah, d5 played, and that gives the c5 square. So how does that change the position here? Looks interesting. First of all, black has a plan. Maybe knight c5, knight b7. And then either move the bishop and bring the knight to d6 or put the knight on a5. But I suspect this is quite slow, so white will have time for bishop e3, knight d2, in which case the knights balance each other out. I mean, really, if black wants to break through here, you'll have to play g6, f5, but that has its own risks, so it has to be prepared kind of carefully. Otherwise, it looks equalish. Unless there is some cd5, rook fc8 kind of thing. Rook e8, sorry, and then I play c6 somewhere. But that is hard to justify. I mean, black's pawns are also not that great. There is a weakness on b5 and so on. So I'm not quite sure how black will execute this plan. Yeah. Whatever I say about this position, I end up saying it's probably equal. I still think it's probably and equal. also the knight should be on d6. And this is not the second position because in the previous one. Well, thank you, Saj. So knight c5, b7 play, c5, move that bishop to f8, play knight d6. And maybe Sarana will then understand the right plan and copy it there. And then maybe. But it's a plan, sir. It's a plan for Gukesh, and he has one good square at least now for his pieces. Yeah, it becomes well. It's not so much a good square for the pieces as much a good roundabout. All the pieces will have to go there and then move. Let the other one come, and they'll be looking around. But so now I know Vishy sir's answer if I ask him what is the best square for the black knight, like in chess. Yeah, it's on d6, not e6. Just remember that. Not the king. But yeah. Okay, checking other Anish's games. kind of look. Is that Anish's game, which looks equal? The end game, yeah.
Hare Krishna Yes. against Anish. Yes. I think he took I on don't- c5. Uh, And then d5 he played. Traded a bunch of pieces, knight e5, and this is the current position. yeah, and I think they'll be going home. So going to the room. So Yeah. Yep, this is over. And Arjun's games, by the way, an interesting thing he did. He opted to not exchange the knight on f5. He went king d7 instead. Potentially giving me that g4 idea, but not sure if that I does like anything. knight h6 also as an idea. I mean, then I could almost go h4 and so on, force you to take on d3, and then you like squares. I mean, my king can go via e2, f3. All this assumes that nothing disastrous happens on b2 and so on, but seems to me at least a possibility. Yeah. Arjun is 20 minutes behind. Do you think that's a problem here with 20 moves to go? Not in this position. And so if you had to take a guess, Niribhai, maybe we can have that scene of all 4 games. How many results would you expect today out of 4? We've made our bets. Sahaj and I have like 1 Maggie on bet as of now. No, we Sahil, bhai, you didn't just we tell. were spoiled yesterday or day before, right? With a lot of wins. Yeah. So I think today does not look like a high number. I don't know. 2 decisive results in both tournaments combined. Oh wow. Yeah. I'm still trying to digest the fact that No, Sahil it should be just 3. told It should be Rishi 3. sir. Something will happen there. I think Arthur against Vaishali is looking very interesting and so on. So not obvious to me. Those are draws. We haven't looked enough at the B group. Let's have the challengers group. Let's have a look. Yeah. So we're going to look at Vaishali's game, and the game looks very interesting. I think she had some opening prep there, and this is the. In fact, White has also done some pretty good opening prep. This Ponsac idea I've seen, and then White plays G3 and H4, and it's long computer stuff. Bishop D3 and then Bishop C4. Yeah, to play. I think he might just be confused by this point, but it's. You can see that Black Knight on G6 is slightly awkward and so on. Maybe this was inaccurate because if he had moved his bishop, Black will have to decide how to stop knight d4. And I think playing bishop f7 allowed Black to play bishop g4 quicker. When the White knight cannot go to d4. So maybe White had to move his bishop from d4. And he took the knight, takes, and this is the current position. But this looks already better for Black. So this is good for Vaishali, I think. And she has a score of 4 out of 7. So she genuinely still has a chance of winning this event, and she's played very well. Yeah. And I think Divya game, that imbalance has not really changed too much, I think. Rook b1, knight b6, and rook b4. But okay, it's a kind of balance of terror, no? You can't move that knight very easily. Because I'll take and if you put it on d5, I'll take on c4, and then d3 is weak. Maybe Black's threat is rook c8. No. Yeah. By the way, also a very crazy game happening between Suleimanli and Faustino Oro. Let's have a look at that. Oh, wow. And so how has Faustino's play been for you? Like, I think he's so young and playing at this level. It's so amazing to watch him, go around, watch other games, play his games. He's amazing. Yeah, definitely. I mean, he's also had a patchy, choppy tournament, but come on, he's so young and he's done a great job. Yeah. And this is the current position. Yeah. I mean, I would probably take on G7 and try to play H3 and F4. And that looks nice, but. Okay, this is tough for Faustino because his knights are going to be squashed for space. If White can play F4, G5, F5, whatever,
Black's knights are not going to have many squares left. Yeah. And so Mhm. it's been an honor to have you. We would love to ask you one more question. I think Sure. we've seen how chess has gotten younger. We have a 3-year-old who's rated now. I mean, have you followed Anish Sarkar's journey? And I mean, how does it, like, what's your opinion on chess becoming younger and younger? It's been getting younger and younger, but for me, the really surprising thing is for a long time, our grandmaster thing plateaued at 12 and some months and dates and whatever. But 12, and you think, okay, this has been tested for quite some time and people are not becoming grandmasters at an even younger age. But now, if there's a grandmaster at 10 or something, it would shock me because I mentally set the age at 12. Um, it'll be fascinating to see if any records are broken and so on. Um, it it doesn't shock me that they are young, but sometimes it shocks me how young they are. Let maybe answer it like that. Yeah, maybe we'll see a world championship between 2 15-year-olds at some point. So I don't know what's the limit there. Yeah, exactly. Um, one still feels that for the titles that come much later, at the moment, you still need some time. But already Gukesh has brought it down to 18. So Yeah. there's no saying that it can't creep down a bit lower. I don't think it can go much lower, but maybe that's a failure of the imagination. Yeah. Rishi sir, we really, really want to thank you for your time. It's been an honor on Republic Day to have you here. And we can see, Gukesh fighting it out, Pragg, Arjun, all of them, Divya, and kind of making the country proud, just like you've done for so many years. So thanks a lot for your time. Thank you so much, Sahil. Thank you, Saj, and Sir, Happy Republic Day, everyone. So Thank you, sir. Happy Same to you, Republic Day. sir. Thank you Have a so good much, day. sir. yeah, thanks. Bye. And everyone, that was Vishy sir with us. What an amazing! His insights of the game are so crazy. That knight b6, knight d6 Saj, even though it became a tradition, like it would have taken me half an hour to see that very quickly. Yeah, I mean, his insights are so amazing. Yeah, also another thing that Vishy sir said about the a4 pawn, I don't think I will ever think about that. It would take me a long time to even consider something like that. So that's why I wanted to keep going back to that game just so I can, keep asking him if he can, and let us know more. But yeah, a4 was just the positional understanding is just on. It's absolutely insane. By the way, Sahil bhai, there is a short update on Arjun's game. Hmm. वहाँ पे he is not he actually there was a repetition with knight f5 knight h4 Hmm. एक repetition हुआ फिर अर्जुन ने वो deny किया, Hmm. just Hmm. putting it out there. Yeah, interesting. So he at least this is on the table now. So both players considering this, and that's interesting to see. So Arjun declining it for now, and we will obviously uh, keep an eye on this. Sahaj, I really want to get your opinion. So knight has come to c5. We might just see Vishy sir's plan incoming, yeah, with knight b7, bishop c5, knight d6. Yeah, now I'm just thinking about that idea in every position basically. True, 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 true. Yeah. Sorry chat, हम लोग obviously सब कुछ address नहीं कर पा रहे थे when Vishy sir was हाँ, here. It's very hard to kind of do both. I'm हाँ. looking at Sahaj getting instant what? नहीं नहीं यार आई थिंक चैट बाय द वे एक बार विश यू ओपन द चैट बनता है आई मीन टेकिंग आउट टाइम ऑन टुडे व्हेन maybe he could have spent time with family he came out and can we have Vishy open the chat here not only for coming out today for just kind of starting this trend overall yeah I mean without him there would be no Arjun no Gukesh I feel Saj what do you feel Yeah, absolutely. And it's always such a pleasure discussing, chess with him and he's so humble and it's so nice. I always become, it's like I'm always in awe of him every time he's here. या एंड तभी बाय चांस हम दोनों थोड़े से शांत से बैठे होते बीच में 2 मिनट भाई कि वी आर लाइक आल्सो एडमायरिंग कि भाई विशी सर के सामने कॉल पे है भाई Exactly, यार विशी सर के साथ chess discuss करना has always been my dream. I'm sure Sahil bhai, it's been a हाँ dream of many chess players as well. It's या just it's different. When Vishi sir speaks, you listen. या And I think आज गेम्स भी थोड़ी सी वैसी है लाइक स्लो है लाइक आई थिंक थोड़ा सा वो भी एक चीज था बट एनीवेज
Thanks out to Vishi sir again for joining and membership का challenge जरूर करेंगे हम and साहज भाई maybe एक trivia question आपको तैयार करना है for the first challenge mod challenge होगा rather than actually the membership challenge, so let's go. Absolutely. I'm ready, chat. आप बता देना जब भी होगा. I'm ready. हाँ, चैट रेडी स्पैम कर दो, नीली पर मेंबरशिप का लिंक पिन कर दो प्लीज जल्दी से. एंड वी आर रेडी फॉर डे नंबर 8 ऑफ टाटा स्टील, द सेकंड हाफ ऑफ टुडे स्टार्टिंग. एंड बड़ा मजा आने वाला है. अभी गुकेश ने नाइट B7 खेला है, बिल्कुल विशी सर का प्लान. लाइक इट्स क्रेजी यार, हाउ ही फाउंड दिस इन सेकंड्स. साज, आई एम बीइंग ऑनेस्ट यार, somebody plays deep. Can we have the camera of Pragg also? I think Arjun is drawing, yeah? They were doing something. I don't know what they were doing there. They're talking about something. Something. Oh, is he claiming a draw? Oh, I think he's claiming a draw. He's claiming a draw. Wait, who is claiming a draw? You mean his opponent is claiming a draw? Yeah. I think he's going to photograph a draw, I think. Oh, because knight f5, knight h4 happened once and bishop c2, bishop d3 happened once as well. Probably that's why. Wow. Ooh. And also, chat, you have to keep in mind, you have to claim before you play the move. And there it is. We have a draw. So Arjun draws his game and he goes to 2 points. I know not the ideal result, but I think the position itself warrants an equal draw. I think that's pretty fair, yeah? Absolutely. Absolutely. Also, right before the rest day, I think it is much needed. You know, we hope that Arjun can come back even stronger from the rest. Yeah. And chat, that is a draw. So Arjun probably loses a couple of points more. Probably not the ideal result, but he has to stop the bleeding and hopefully he can strike back in the second half of the tournament. Now, going back quickly to the Pragg against Gukesh game, the star game of today. Let's have the cameras. And Saj bhai, let's have your mod challenge question. Mod challenge questions. 1 second. I'm just preparing it. 1 second. I'm just double checking everything. Chat, अगर आप ready हो तो please ready spam कर दो. Look at Oro. भाई Oro को तो मैं देख ही रहा हूँ भाई. I don't know, it sounds weird, but I think he's just hilarious. Like ऐसे cute सा बंदा घूमता रहता लगता है. भाई, I mean, it's insane. भाई, he's really cute. Yeah, he's really cute. हाँ, हो जाए challenge. गर्मा गर्म. हो गया. Okay. So ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है चैट, बट क्योंकि विशी सर भी अभी थे यू नो इन द कमेंट्री, एंड उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बट वेरी वेरी चेस रिलेटेड क्वेश्चन. इन द टाटा स्टील चैम्पियनशिप, टाटा स्टील ए ग्रुप 2013, विशी सर प्लेड एन इनक्रेडिबल नॉवेल्टी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्लेयर. ठीक है, इट वाज एन इनक्रेडिबल नॉवेल्टी. who was that? Who was it against? What was that player's name? ये गेम ना, like, is one of the only games I will never forget. Why? Never ever will I forget. Why? क्या game थी? This was one of my, I think, top, maybe my favorite game of all time. This one, like, very very likely. Yep, and I Saj bhai. think we already have an answer actually. Chat knew it. Yatharth Sharma. यथार्थ भाई द लेजेंड विनिंग अ 1 month membership अगेन. यथार्थ भाई अपना आईडी डाल दो, मैं आपको सॉरी मॉड मिलता है यथार्थ भाई को. ओ यथार्थ भाई के हाथ में मॉड देना बहुत रिस्की रहेगा भाई. यथार्थ भाई आप मॉड चाहेंगे गोल्ड मेंबरशिप? मुझे डर लग रहा है आपको मॉड देने से. But the answer is correct. It is indeed Levon Aronian, and the move was C5. Sahila wo jo, I remember I think I was playing a tournament somewhere, and someone told me right afterwards, and I was just, bhai ye kya ho gaya? भाई C5, I think bishop C5, knight E5 or something, like crazy था भाई वो. No, C5, and you had that knight G5, knight H7, something like that. हाँ, You but remember? knight भी आया था ना, I think bishop भी C5 पे आया था, I think बाद में. if I remember हाँ, correctly. bishop is C5. But वो मतलब that's like middle game already. But C5, bishop C5 was हाँ. crazy. So उसके बाद हाँ. crazy. It's my best, like my favorite game of all time. There's no doubt. 1 month gold membership cost. अरे भाई तुम cost देख रहे हो. मॉड चाहिए कि गोल्ड मेंबरशिप चाहिए भाई? अर्थात भाई एनीथिंग योर विश. चलो भाई आई डाल दो फिर. आपको ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी. पावर का मुझे डर है तो आप मेंबरशिप का आई डाल दो. आपको गोल्ड मेंबरशिप देता हूं भाई. एंड पहला चैलेंज हो चुका है, अगला चैलेंज होगा 1000 लाइक पे. एंड तब तक सहज भाई आई थिंक वील हैव सम मोर मूव्स. नाइट C5, बिशप E3 एंड नाइट टू B7. मुझे ऐसा जेन्युइन फीलिंग आ रहा है, this is the start of a Gukesh squeeze. Pragg has to put the brakes on right now, or something might go wrong. Like I can sense that Gukesh typical, slightly push करने वाली position लग रही है मुझे.
Yeah, Gukesh, if you remember Sahil bhai, he was also, Vishy sir also said this exact plan, knight b7, move the bishop away and put the knight on d6. So when, I think he's doing exactly that. And uske baad, there's f5, all of these breaks are going to be happening as well. And the c4, e4 pawns are quite weak. Um, so yeah, looks like you're right. He has to put the breaks now. But how do you do that? There is no breakthrough. There is no way to exchange pieces. So how do you do that? Knight h4 That's a maybe. Oh, that's like saying कि घर में आग लगी है और मैं दूसरे घर में आग लगाने जा रहा हूँ, ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है सहज. uh, yeah, it's a very good move. Knight wants to come to f5. Do we play g6 or not? That's a question. मैं तो नाइट एच फोर सिर्फ एफ फोर के लिए खेल रहा था. अब विशी सर ने बोल दिया Oh, ना गोल्डन पॉन का कोई रूल नहीं है. तो मैंने अब हर गेम में अब एफ फोर ही टच करना है सबसे पहले. दैट्स द गोल. भाई लेट्स you गो. got to talk about the golden pawn with Vishy भाई. That's like childhood का ऐसा सपना होगा भाई में भी. आई नो भाई. अब मैं अपने कोच को जाके बोलूंगा ऐसा कोई रूल नहीं था. क्या बोल रहा था तुम, क्या बोल रहे थे आप मेरे को? क्या बोल रहा था तू? My God, सहज नहीं नहीं भाई नहीं नहीं, showing तू यार, history. तू तो कभी भी नहीं यार. नेवर नेवर. एंड ही वाज सहज नॉट एन भाई, इंडियन, ही वाज नॉट एन इंडियन कोच, सो आई डोंट अच्छा, थिंक ही वुड. को, फॉर कोच मेरे कहेगा मन में वो जज्बा, यू था. वो हिंदी में ही रहता है ना. कहेगा वो भाई इंडियन पार्टी कोच नहीं. बदल दिया साला. कोच नहीं यही नहीं नहीं. बोलेगा भाई. इंडियन कोच नहीं थे. तो मेरे दिमाग में यू ही था, बट या. भाई ये हाँ, 7 draws and he must win today. 7 draws, yeah, yeah, that's true, that's true. Playing a very नहीं very नहीं solid match. नहीं, आई थिंक वेई का तो दिस टूर्नामेंट इज नॉट गॉन आइडियली फॉर हिम. सो आई डोंट नो क्या सीन है. तो या, so फिलहाल के लिए chat, we are looking at the game. Hare Krishna and Anish have also drawn their games. So Sahaj, out of 4 games, we already have 2 results. That's a huge update just in like couple of 3 hours of play. So we have 2 more games to go in the Masters section. Maybe it's time to really go deep into the Pragg game because we have a couple of moves. यहाँ पे knight b7, d takes c6 played, and now again Vishy sir's move knight to a5 played, attacking both c4 and c6. I still cannot believe he found this in 2 seconds. Sahaj bhai, when I started streaming, I had like 400, 500 subs. I remember I was doing like a puzzle stream, like giving the audience puzzles to solve, and Anish Giri showed up in the chat. Okay, and I had अच्छा. given like a crazy strategic puzzle, like it was very difficult. Okay, and chat 15 मिनट से लगी है यार, maybe it is this, maybe it is this, maybe it is this. अनीश आता है, yeah, this, yeah, बिशप f4 है. मैं कह रहा हूँ भाई what? भाई 2 सेकंड में निकाल दिया बंदे ने. So I'm like, Crazy. top players are just insane. You can see with Vishy sir as well, like his understanding is, I mean, it's जो भी वो बोल रहा है, it makes sense, but he just gets there, like 100 times faster than you would. It's crazy. या एंड चैट, फिलहाल के लिए एक कैमरा पे तो ऐसे थोड़ा ब्लरी लग रहा है, पता नहीं कैमरा पे धूल तो नहीं आ गई, ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है. बट कलर कंट्रास्ट का कैमरा का चेंज करना चाहिए साथ में. व्हाट डू यू थिंक? अब विशी सर नहीं है, थोड़ा अब लेम जोक्स भी मार सकते हैं ना भाई. हाँ, अब चलेगा, अब चलेगा. By the way, कोई कह रहा है bishop b6. That's a good question, yeah. So why can't we just pick up this pawn? Because pawn takes पे there is rook d6 and I just saved everything. I have rook d7 incoming. But the problem is black is not forced to take. Yeah, checkers नहीं है. I'm guessing he will just chop on c4, yeah. Yeah, and by the way, in checkers में forced होता है. हाँ, चल you have to करना. capture. It's अच्छा. forced. I didn't know that. Okay, that's cool. Yeah, I mean, Okay, so once you become a chess player chat, so when FIDE gives you a contract या whatever, उसमें topmost clause होता है, you will roast checkers at with every fiber of your being. So it is just a part and parcel of the game. So do not worry too much. Yeah, Saad bhai. yeah, by the way, is DC6 already played here? Hello, Yes, hello D6 and chat. 95. हाँ, मेरा कैमरा गया, मैं चेंज कर रहा हूँ. सही टाइम पे गया यार. Can we have the camera of Gukesh Diri bhai? We can see Frostino in the background calculating, and Gukesh looks fully motivated now. Somehow he looks more motivated than before. Absolutely, and you might be right that he is definitely pushing here. You know, first of all, you see these 3 pawns in on
on the queen side, which definitely is not a good sign. Sure, one of the pawns is going to get taken here. I think probably c5 looks like the most logical move from Pragg's side, because I want to damage your structure on the queen side. And that's so in a way, if you go knight c4 or queen c4, then you probably win another pawn as well. But with c5, I'm at least damaging your pawn structure. So c5 looks like the most logical move. bc5 will happen, and probably something like rook d5 or queen takes a4. I can't decide between the two. Because queen a4, I don't think I'm losing the a2 pawn immediately. Also, rook d5 looks good because I wanted to, target your c5 wala pawn. After c5, I mean, after c5, base c5. c5, though, I think it's almost like a hand move, but I'm not sure rook d5 is if it's working or not. Can we have it on the board, Sahil, and see if it's working? Rook d5, apparently knight c6 and Oh, there is bishop c5, knight e7. I'm blind, actually. Never mind. bishop It's not c5 the and glasses, chat. It's not the glasses that wasn't making me see moves. it's my company, bhai. It's my It's company, me. No, so no, it's me. 100% me. अभी विशी सर की कंपनी हुई ना तो दोनों की रेटिंग अभी 50 पॉइंट बढ़ेगी शायद why भाई. that is true, by the way. Just imagine how strong Vishy sir is. जितना डिफरेंस मेरे सहज में रफली उतना ही डिफरेंस है आप में और विशी सर में. बाय गॉड भाई. हाँ, भाई actually भाई साहब a bit more actually. bit more. क्योंकि mine That's is insane. 2186 and Sahaj is what 2476. 2468. हाँ तो 300 पॉइंट से हल्का सा 10 पॉइंट कम है ना. हाँ. And he is 300 plus points ahead of you. Yeah, 27. Yeah, Wow. basically around the same. हाँ Just a same little bit difference है, more. same difference है, same Same difference. 270 points something. भाई it's insane यार, it's insane. No, but that difference is, has way more weight. I have to say, True. the difference between Vishi sir and me, that has way more weight. True. Although my weight is higher, but yeah, overall उसका भी weight काफी है. हाँ, आ By the गए way, अब. भाई, लग रहा है विशी सर oh, चले गए. he took on b6. He took on b6. I can't believe he took on b6. Wait, But if I knight take on, c4. yeah, knight c4 and I bring the bishop back to e3. So I would say Gukesh is very comfortable now. Sure, he's a pawn down for the moment, but he has rook b8, and okay, the c6 pawn will fall eventually at some point. And yeah, there is no counterplay actually for Pragg. Counterplay जब नहीं होता ना chat, तो it becomes an issue. So I had a question, Saj. Why not take with the queen ताकि c6 भी मार ही दे? Like because the knight will be awkward, yeah. I don't want to take. Yeah, I don't want to. I will just take bishop a5 also. I'll feel more comfortable there. Bishop a5 मारने के बाद. Very, very interesting position. So he takes, by the way, instantly taken on c4 with the knight, and Pragg drops the bishop back, literally the only square. And maybe it's time to take over the b file with rook b8 and rook b2 incoming. I am sensing that the squeeze has started, Sahaj. The Gukesh effect is taking, its first shape. Could be. And also, just for the chat, rook a b8 bhi possible hota, but we are dropping the a4 pawn there. So that's why, I mean, maybe not immediately because you have knight b2, but in the future you can take the b2 pawn at some point. Let's say when black plays rook b2 or something like that. So rook Yeah. e b8 makes a lot of sense. Many times I have this question as well that, which, अगर एक open file है तो कौन सा rook वहाँ पे रखे? It's always a bit of a complicated question. But in this case, the e rook doesn't do much. I agree, Saj. In fact, मुझे याद है when I played the Dairen Open, I think Sagar bhai said that's when I met him for the first time. There was Sandeepan Chanda who won that event, and he mentioned that he had two choices, like rook a d1 or rook f d1, and he took like 35 minutes to calculate which one is better. So that's how important sometimes it can be. And यहाँ पे rook on the e file is actually not even doing much, yeah. So it makes some sense to defend this pawn and play rook b8. Yes, rook b8 makes a lot of sense. I think I have rook b1. Okay, not rook b1. Rook b1, there might be some. No, You not rook always b1. have to take care of this, yeah. No, there's rook b8 check there. I saw that, but I didn't like that. I can always go knight e3, and then you would probably have to capture with the f pawn, which I didn't like so much for white. This I don't like. आज तो डबल पॉन्स की पार्टी हो रही है. चैट कितने डबल पॉन आने हैं आज?
है ना, Hmm. डबल पॉन ट्रिपल, ये देखो यहाँ पे डबल पॉन व्हाइट के थे, डबल पॉन ब्लैक के थे, यहाँ एक और डबल पॉन, चल क्या रहा है आज? Yeah, and also Gukesh looking very, very comfortable here. Oh भाई man, C6 का chess pawn तो मर रहा है, Rook B8 भी आ रहा है, Knight A3 भी आ रहा है. chess is beautiful, chat, and this is going to be a super fire, game, because Gukesh has started walking. We know what happens when he starts walking. उसके 10,000 steps पूरे हो जाते हैं and opponent के 10,000 सपने टूट जाते हैं. लेकिन Pragg, of course, is informed this event has gone his way. He's been the star of this event because Gukesh came back and Pragg was leading throughout. So this game will be crazy. Rook B8 played by Gukesh and Rook B2 is incoming. Rook B1, any other option, Sahaj? Rook B1 I think feels forced, yeah, almost. क्योंकि Rook B2 तो आ ही रहा है and you cannot afford to lose the A2 pawn. So it's either Rook B1 or Bishop C1, and I mean, of course, optically also Bishop C1 doesn't feel like the best move. So Rook B1 is what I would be worried about the most here as black. Yeah, the bishop भाई going back. हाँ आप ये भी सोचो ना, देखो क्वीन सेट पे तो इतना प्ले है ही, एक पॉन ही तो है, वो एक पॉन को मैंने क्वीन E8 क्वीन C6 करके आई कैन जस्ट कैप्चर इट. हाँ हाँ. Now the whole no, the whole advantage is still there without the compensation. So Not Sahaj looking bhai, easy. Yeah, Sahaj bhai, बोलो. I was also reading the comments. Sahaj bhai, once you reach 2000 rating, what you do to Sahaj, I'll back increase in 30 rating? seconds, yeah? Yeah, sure bhai. What do you do to increase rating? Bhai, I was trying to work. I mean, it's the same procedure, but you try to, change your openings. You increase the intensity of the amount of work you do, the type of work you do. Yeah, basically that. It depends, yeah. There is no general guideline here. It looks like their candidate game. What do you think, Saj? By kiska candidate game? I'm not sure which one do you mean. Stockfish says rook to d5. Okay, rook to d5 looks interesting, but I think I have rook b2. You want to play queen d3 and to target my knight on c4. But that's not an easy move because you're voluntarily giving me the a2 pawn, first of all. Yeah, rook d5 could be logical actually, now that I think about it. Because a2 का pawn उतना dangerous होगा नहीं. Maybe actually, maybe. Maybe actually. Give update about others games. So Sahil bhai तो नहीं है अभी, तो we cannot change the board. I'm just gonna do a quick roundup. भाई सबका ही equalish सा ही game है. सबका equalish सा ही game है, but maybe Vincent has a slightly better position against Fabi for now. So Vincent का result आना सबसे ज़्यादा likely I think. And okay, Gukesh also has I would say a pretty good advantage here. या तो इन दोनों गेम्स में मे बी रिजल्ट आ सकता है, बट बाकी आर लुकिंग वेरी वेरी इक्वलिश. Nordirbeck Fedosiv can actually end up in a draw in the next 5 to 10 moves, but we'll have to see what happens there. And Luke versus Jordan also is heating up. End game है वहाँ पे, but it looks interesting. Draw is not the most likely result always there. Maybe क्या Stockfish कह रहा है Rook D5. Yeah, Rook D5 is Stockfish according to the people वहाँ पे, मतलब chat में जो लिख रहे हैं लोग. Rook B8, Rook takes Rook is forced. So do we have any other option? After Rook B8 is Rook takes Rook. You mean after Rook B1? Rook B1 forced तो नहीं है बिल्कुल भी. I think Queen E8 भी खेल सकते हो जैसे उन्होंने arrows में दिखाया हुआ है. और Rook B1 भी खेल सकते हो. That's also possible. Actually, maybe Rook B1 might be a good move also because you cannot. मतलब point यह चार्ट कि Rook B1 के बाद अगर मैंने Rook से Rook मारा, then you cannot recapture with the Rook because I have Knight A3. तो क्वीन से मारना होगा, एंड क्वीन ऑन द ओपन फाइल मे नॉट बी द बेस्ट पीस इन दैट पोजीशन. That's the difference there. Sahil bhai, we're discussing हाँ. rook to d5 and rook Oh, to by the way, b1. Rook to d5 he apparently played Rook Stockfish B1. He played Rook B1. Oh wow. Yeah, rook b1 as I was saying looks more logical. Rook d5 मुझे इतना practical नहीं लग रहा था देख के. हाँ. It's like Rook B1 is the human move, na? Like, matlab, you get a challenge on the B file, you counter challenge on the B file. And chat, by the way, Knight A3 important. Fork.
अगर लग रहा है उस पे वाइट क्या खेल सकता है, व्हाट इज द सेविंग मूव फॉर वाइट? आई थिंक सिंपल टैक्टिक्स है, Yeah. बट आपके बीच में ही वो है एक 250 रेटेड प्लेयर जिसको ये समझना बहुत जरूरी है, एक्चुअली काफी सारे होंगे। तो कम ऑन चैट, व्हाट्स द वाइट मूव दैट सेव्स वाइट हियर? Sahil, I just went through this as well, and I also explained कि rook अच्छा, b1 पे rook b1 आप नहीं मार सकते because of the same thing. हाँ हाँ, राइट राइट राइट। सो रुक बी एट इज द मूव, चेक। एंड अगर आप पहले यहाँ पे मारते तो आपको क्वीन से मारना पड़ेगा, बिकॉज रुक बी वन पे देयर इज नाइट ए थ्री, एंड दैट वुड बी अ फोक। चैट इज एब्सोल्युटली Exactly. ऑन फायर भाई। Exactly. अब कोई पूछ रहा है rook d8 is not easy, right? So I'm assuming after rook b1, rook d8 is the best move for Gukesh. वेट, रुक Uh, डी एट, व्हाट्स द आइडिया दो? आपका रुक e8 पे था पहले, एंड देन आपको उसने रीग्रुप करके d8 पे डाल दिया. The point is कि you are still threatening knight a3 after rook d8. You've put the rook on an open file, and you vacated that square on e8 for the queen. So you have still have queen e8, queen c6 wala plan. So I mean, in hindsight, I think this is it doesn't look but of course, if I didn't know the move, I would say it's a very hard move to play. हाँ I would not. हाँ, This is not something I would consider over the board. In या hindsight, when you explain it, it seems easier. यथार्थ भाई अपनी आईडी लिख दो यार, मैं 2 मिनट के लिए उठ किया था। डू राइट योर आईडी एंड ऐड द मेंबरशिप, या एंड चैट आई एम गोइंग टू आस्क यू, ठीक है? सो वी हैव सीन टू क्विक, नॉट क्विक, लाइक डिसेंट लेवल ड्रॉज, एंड वी हैव 2 गेम्स गोइंग ऑन। गुकेश प्रग, हमने प्रिडिक्ट किया था, कई लोगों ने गुकेश बोला, कई लोगों ने प्रग बोला, बहुत लोगों ने ड्रॉ बोला। अब क्या लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन दिस गेम? विल गुकेश विन and reach the rating of 2793 or 2794, which is like 1.5 wins away from 2000? Will Pragg win and reach around 2760 and enter a new league, right? Because I don't think he's ever been 2760, Sahaj. Actually, what do you mean? Oh, maybe actually, maybe. But Yeah? Pragg winning, I think, is not very likely here because just looking at the position doesn't feel very promising for Pragg. Mukesh win is definitely a possibility here. And draw pick दोनों का बराबर है, and A3 apparently that's a question mark. Okay, he's Wait, planning rook b2 or something or what? yeah. Is it a mistake or is it like just missing the best move? Because there's a difference between these two, yeah? Not sure actually why it's a best move. It feels logical that he wants to get rook b2, but कोई अगर direct reason होगा, then I'm not sure. Is there something like rook b7? Yes, it is rook to b7, and you don't really want to allow a passed pawn on b7, and ये pawn जो है ये खुद ही का कीड़ा कर रहा है, मतलब हमारे ही knight में बीच में घुस गया, and suddenly this is not clear. Maybe you have knight b2, I don't know what that turns the game into. So My maybe position not तो अभी rook, भी difficult लग रही है. How is that still equal actually with the pawn on b7? Knight b2 is a but very strong move here. c4. I think c4 holds the game for white, and Okay, you can't capture because of bishop a7. yeah, if knight c4, there is bishop a7 winning the game on the spot. And साहब आप पूछ रहे थे कि प्रग कैसे जीतेगा, गुकेश उबासी ले रहा है, but maybe there are some chances and maybe there could be mistakes. ऐसा तो नहीं होगा यार. ऐसा तो नहीं होगा. Okay, a3 on the board, and now is rook b7 my only move in this position? So not rook b3, not rook b3 at all, yeah? Rook Yeah, b7 is this is important. the only move to get equality. बाकी moves तो बहुत है. So I think if he So wants, let's do a bit of a deep dive after rook b7. Like for example, if I go queen e8, then you have rook b1, I think, because I don't have queen takes oh, c6. queen b3, Queen queen b3. b3 winning the Queen game. Oh, Hmm. tactics है भाई यहाँ पे खतरनाक. Wonder what he looked at after rook b7. Do I have knight a5? Knight a5. That feels like a good move. Attacking the pawn, attacking the rook, and maybe you are forced to now trade. Maybe. Trade. I will trade back. ठीक है. ठीक, queen a4 पे ना, queen a4 एक अच्छी चाल लग रही है देखिए, because you want to defend the c6 pawn, but queen takes a2. I mean, खेल सकते हैं शायद यहाँ पे. I'm not sure अरे though. बाप रे. Queen Is this takes working? a2. I mean, it's almost working. Let's put it that way. I think queen a5, rook b1. Okay, maybe it's not No, perfect. Yeah. doesn't look so easy. Doesn't look so easy Uh, for white. ये pawn promote हो सकता है, I think.
Maybe he will not go for this though. I think risk hai bhai. Maybe you just play something more solid. Hmm. Anyways, so फिलहाल के लिए chat rook b8 के बाद rook b7 would be great and knight a5 takes. Uh, Saj bhai, so queen a4 is interesting. Is there something else which is not going to sacrifice Rook like forced b1, I aggression? was saying rook b1 is the simple move जो मतलब मैंने purposefully ignore किया था पहले because I thought queen f4 could be working. This whole queen f4 Rook, queen a2 stuff could be working. do But we rook take? b1 takes. ये भी लेकिन black push करेगा ना यहाँ पे थोड़ा I think. Queen c4, knight c6. C4. Black push करेगा ना यहाँ पे तो. करना तो चाहिए यार, देखने में तो लग रहा है कि this should be better, but the bar doesn't agree somehow because if I flip the board, I think most of us would certainly choose black. Yeah, it just looks like queen is active, but the pawn is advanced. But कहीं ना कहीं पे the bar doesn't agree, and ये pawn तो जाएगा ही जाएगा free का, and then this pawn is weak. Yeah. Looks still looks a bit scary for Pragg, I would say. Unless you know कुछ king side पे कुछ वो queen knight के combination से कुछ issues आ जाए like queen b8 knight h4 I don't know something like that. Um, And also queen b8, if you try to go for this king f7 and you can see the bar go down. So the counterplay is probably a bit slow because queen e4 be hanging hai. And that will तो not queen only right queen b1 पे ही रखो फिर. So going back, chat, this is the current position. I think a3 was a slight error objectively, but practically it makes a lot of sense. Rook b2 का idea है and Pragg को यहाँ पे rook b7 निकालना पड़ेगा. Chat में कई लोग कह रहे हैं, why not rook b3? Why can't I just do the same, Sahaj here? So that was my question before, but I think it has something to do with queen b3 becoming a possibility for white after rook b7. That could be I think a point here. Rook b7. नहीं जब white का rook b7 पे था ना and I हाँ was playing queen e8 there was queen b3 as a possibility and हाँ. I think that is probably one of the reasons. Yeah, this variation. But rook b3 पे there is no queen b3 anymore. Yeah, so So maybe I queen can go e8 queen maybe. e8. Yeah, Yeah, this looks looks like a good, no? decent move. Yeah, looks Hmm. like a decent move. And यहाँ पे रुक कुछ कर नहीं रहा है. It's not threatening anything. So just sitting there. And also, even if you take, you at the end have to take with the queen and not with the pawn, I think. ये pawn दौड़ सकता है, yeah? Exactly, that pawn is quite risky. Chat के पूछ रहा है सहज, who will be the remaining candidates 2026 participant as per you? साहिल भाई help करनी है मेरी. Remaining 20 candidates. यार अभी 7 लोग pending है. So I think you're basically asking कि कौन select होंगे. So it's very hard to say. I think जो players पक्का होंगे वहाँ पे जो if I could definitely bet Maggie's on would be Arjun, Nodirbek, and Karu? Pragg. Hikaru, I'm not sure. Because Hikaru तो will only play 2 events. Grand हाँ Slam and हिकारू भी World Cup. बोलूंगा और फिर बाकी I agree all of it. I'll just add Hikaru to your list. बाकी it's not confirmed for me. आज क्या होगा बिल्कुल 1000 लाइक पे होगा पहला दूसरा मेंबरशिप क्वेश्चन। यथत भाई ने अब तक मेंबरशिप आईडी लिखा नहीं है, लगता है थोड़े दानी आदमी है, तो कोई स्ट्रेस नहीं है उनको। Okay, so rook b7 or rook b3, this is where we're thinking, bhai. Looking भाई at the other games, चैट करिए नेपो, डू यू वांट टू सी नेपो इन द कैंडिडेट्स सहज, बिकॉज ही इज बीन देयर फॉर सो मेनी इयर्स। आई एम लाइक थोड़ा चेंज चाहिए भाई लाइफ में। व्हाट डू यू फील सहज? I feel होना चाहिए उसे because you would have to say his name many times and that would be very entertaining. भाई But नहीं मैं उसका but मैं बोल दूंगा उसका नाम पहले ही। सो वन प्लेयर हु डिड नॉट क्वालिफाई वाज नेपो। मैं 100 हर दिन से पहले मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। सो या डॉक्टर शेर उसका आईडी लिख दो प्लीज यार, इफ यू नो द आईडी। आई मिस्ड इट एट सम पॉइंट आई थिंक। कम ऑन, अरे रिस्पेक्ट तो है भाई। लाइक इट्स जस्ट कि he's been there, he's played 2 world championships. I don't want to see Gukesh against Nepo. मेरा personal वो है। I want to see Gukesh against Nodibbe, Gukesh against Pragg, Arjun, even Caruana. I don't want to personally see Gukesh Nepo maybe. That's my only thing. Gukesh Even Gukesh Hikaru. Hikaru. Gukesh Hikaru That will would be be the crazy, I think. that will be insane.
चैट इफ यू हैड अ चॉइस, चलते करते चैट का पूछते हैं, गुकेश वर्सेस ऑप्शन ए is Arjun, option B is Pragg, option 3 is Caruana, option 4 is Hikaru. Who would you prefer? तो Ah, ऑप्शन है ए बी 3 और 4. sorry, A, B, C, D. सॉरी भाई लोग, यस, मजे अनपढ़ ले हूं रहा मैं हूँ भाई, मुझे ज्यादा पता मैं. नहीं है, एक ही बात बी आता है सी आता है, मुझे पता नहीं है. यथार्थ भाई आपने आईडी 3 घंटा पहले बनाया है, एंड यू नो 2 आईडी अलाउड नहीं होते, तो आई विल नॉट गिव द मेंबरशिप हियर. सब लोग हिकारू मैक्सिमम लिख रहे हैं यार, ऑप्शन 4. That would be crazy, actually. I think Hikaru versus Gukesh. That definitely, I think it's a possibility. डू यू थिंक वो वीडियो डालेगा? तो प्रिपेयरिंग फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप इन दिस ओपनिंग, गुकेश की टीम को एक बंदा हायर करना पड़ेगा जस्ट टू गो थ्रू हिकारूज वीडियोस एंड स्ट्रीम्स. भाई मजा तो तभी आएगा ना. मजा तो तभी आएगा बिकॉज वो हर हर मैच के बाद वो रिकैप डालेगा. आई विल डू दैट गुकेश भाई, मुझे हायर कर लेना. भाई आई विल गो थ्रू हिज स्ट्रीम्स भाई, मैं तैयार हूं करने के लिए भाई. Awesome. Sahil bhai, be right back in just a minute. हाँ हाँ, साज भाई अपना पेट भरने के लिए गए हैं, एंड हम यहाँ पे दिमाग भरेंगे भाई लोग, बिकॉज गुकेश इज स्टिल थिंकिंग. सॉरी, प्रग स्टिल 17 मिनट, बाय द वे आई डिडंट नोटिस दैट. Why? I just noticed Pragg has 17 minutes to play 17 moves. So even though this position is not like super essay complicated tactical, but it is still not an easy task. And as long as there is life in the position, Pragg will be under pressure. He has to find rook b7, or I think Gukesh could have a chance to take over the game here. Chat, for example, okay, let's say white were to pass. He were to play king g2. Can you find what is Gukesh's move? Come on, chat. मैंने बोला है पहले ये. What is Gukesh's move if Pragg were to do nothing for one move? Let's go. Leon might get his first win. I'm really cheering for Leon. I met him and his dad, I think, at Chennai Grandmasters. They also, I think, have been pushing very hard, training. So hoping he wins today as well, gets his first victory. साहिर इज टू गिगलिंग. अरे भाई क्या है भाई, है मेरे कुछ टीनेज लड़की वाले शौक, तुम्हें क्या प्रॉब्लम भाई, मैं जितना गिगल करूं, चुगली करूं, क्या मतलब भाई, करना चाहिए लाइफ में कुछ. यथार्थ ऐसे चीट, हाँ ये हुई ना बात. अब होपफुली पहले से मेंबरशिप नहीं होगी इस पे. ओके ओके, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो. किंग E3 तो नहीं हो सकती भाई. रुक B2, एब्सोल्युटली. रुक टू बी, सॉरी क्या, किंग G2 एंड रुक टू B2, एंड सडनली यहां पे यू आर स्ट्रगलिंग, बिकॉज व्हाट डू यू डू इफ यू डोंट टेक, आई मीन क्वीन D3, रुक हमारा B2 बैठा हुआ है, दिस इज सो स्कैरी. A2 pawn इज हैंगिंग, रुक A2 एंड पास pawn बन रहा है, एंड इफ यू टेक, आई विल टेक विद द ये pawn. भाई ये pawn तो क्वीनिंग स्क्वायर पे आ चुका है. So you really have to be, you know, careful. तो कहीं ना कहीं पे, yeah, this is not easy, not easy. तो Gukesh has his chances. Pragg को खेलना पड़ेगा रुक B7. टाइम स्क्रैम्बल, बिल्कुल टाइम स्क्रैम्बल. एंड भाई आपकी गोल्ड मेंबरशिप ऐड कर दी गई है, यू कैन चेक इट नाउ. So first membership challenge has been done. Second challenge will be done at 1K likes chat. So let's go. Like करते चलो और खुश करते रहो, खुश रहो भाई. You want सालिस गुकेश, बिल्कुल भाई करेंगे भाई, कभी हम चेस बॉक्सिंग करेंगे, बट फिलहाल के लिए आई हैव टू मच रिस्पेक्ट भाई गुकेश के लिए. आई थिंक दिट विल नॉट बी एन इजी मैच. आई थिंक हिकारू इज द मोस्ट फेमस प्लेयर इन पास्ट टेंस. व्हाट डज दैट मीन? Salbhai, Correct. yesterday you told you would bring some guests. We did. Vishy sir was here for more than an hour, from 8 p.m. to 9 p.m. roughly. Vihar bhai, you can go back and check. Why is he thinking for so long? I think he understands that this is the critical moment. So all strong players have that intuition कि कब time लेना है और कब नहीं लेना. Sahaj, what do you think? Absolutely. And उसको probably he's deciding between rook b3 and rook b7. There must be some line there where it's not as clear. So rook b7 and rook b3 is what he's thinking here. And चैट कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है इंजन से देख के या कंफर्मेशन मिल जाता है. वी प्ले रुक B7, वी सी बार हिलानी, वी आर श्योर नाउ दैट दिस इज गुड इन एवरी वेरिएशन.
बट कई बार कोई टेढ़ी मेढ़ी वेरिएशन होती है, मान लो नाइट T3 जो हमने कैलकुलेट नहीं किया, एंड एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ प्लेयर टू बी श्योर बिकॉज को बाहर का कंफर्मेशन नहीं है, सो ऑफ कोर्स ही इज टेकिंग हिज टाइम. बट सहज 17 moves to go and 14 minutes remaining. This is getting a bit scary clockwise. Indeed, 17 moves to play still. By okay, He rook b7 on the finds board. he finds Ugi 7. Crazy move by Pragg, showing up that he's ready for this challenge against Gukesh. And abhi ke liye ye position hai. And now Gukesh has to find some good moves, Sahaj. True, knight a5 looks interesting. Queen e8 was a blunder here, which allows queen b3, which definitely is not going to happen on the board. Hmm. Mm. Rook b7 can also be a possibility. Hmm. Takes and rook b8, and then you capture the b7 pawn at some point. Do you think Gukesh missed this or did he underestimate this? Because if knight a5 is the best move, then he ideally did not want to go back, yeah, when he came to c4. So do you think he missed rook b7 or underestimated it? I don't know. Optically, it feels okay to even put the queen there. With queen c4, and you can reroute the queen back to c6, and then may play knight c4, or you can go knight c6 with some pinning wale ideas. Sorry, knight c6, knight b4 wale ideas. Something like that. Hmm. It Hmm. feels logical to put the queen there as well. But okay, Hmm. you are kicking the queen with knight d2 though, so Yeah, yeah, yeah. So knights are tricky pieces. ये knight यहाँ पे drama करेगा तो ये कहेगा why should the black knight have all the fun? It's now draw 90%. See, most chess games between top players in the starting position itself are draw 95%. So I don't think that's really a good judge because I think this game is still complicated enough. Sahaj, what do you feel? yeah, 100%. Gukesh still has some chances, I would say here. As I said, knight a5 looks interesting. The pawn on a3, I think, is what complicates things for Pragg the most, because this is, not just the pawn itself, because of course it's very close to, a promotion. And secondly, you also have some ideas like rook b2 if the b file was open. So that also creates some complications. So it's In not fact, the zero queen is zero. tied down, right? Because if you want to do something crazy, queen d3, you can't really do that. Let's say h6, queen d3, already knight e3 and queen a2, and goodbye. Exactly. So your queen is tied down to defending a mere pawn, भाई. इस प्यादे के पीछे पूरी जनता कह रही है, भाई please. He's like that one guy ना जो वो स्क्विड गेम में जो वो रोप वाला पुलिंग कॉन्टेस्ट होता है ना, ही इज द गाय लाइक हु हैज नो मसल्स, नो पावर, नथिंग, एंड सब लोग कह रहे हैं भाई प्लीज होल्ड कर लेना. सो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि या इट्स स्टिल अ बैटल एंड इट्स द गेम इज नॉट ओवर, नॉट इवन क्लोज. Absolutely. Squid Game का reference साहिल भाई, that's क्या बात है. बस भाई लाइफ हमारे साथ गेम्स खेल रही है तो हम गेम्स वाले शो ही देखेंगे भाई. Wow. Can we play रुक. en passant while playing a chess match? यस. साहिल भाई hang हो गए with that question. इज दैट 40 केजी गाय फ्रॉम छिछोरे? अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? एंड चैट, स्ट्रीम लाइक करो, 1000 2000 लाइक जल्दी से कर दो. एक चैलेंज करने का मेरा मन में दिमाग कर रहा है यार. चैट करूं? चैट एक चैलेंज करते हैं, ठीक है? अभी 950 लाइक है, 1000 लाइक पे मेंबरशिप आएगी आएगी. मैं बोलूंगा 1 2 3 नाउ. अगर सबने लाइक बटन दबाया और 1500 लाइक हो गए, ठीक है, तो मैं प्लैटिनम मेंबरशिप का सीधा डायमंड ही कर दूंगा भाई. सो लेट्स गो चैट, ठीक है? आपके हाथ में है. मैं बोलूंगा 1 2 3 नाउ, सब साथ मिलके एक ही सेकंड में यूनिटी दिखानी है भाई. रिपब्लिक डे है भाई, रिपब्लिक डे को यूनिटी दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे? मे बी इंडिपेंडेंस डे, बट ठीक है वो 8 महीने दूर है. सो 1 2 3 नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है? 1 2 3 एंड नाउ क्लिक करो भाई. लेट्स सी क्या 1500 लाइक कर सकती है चैट. साथ में क्या लगता है? Definitely possible. आपके बोलने 1 2 3 से पहले ही I was seeing the likes were going up, so definitely possible today भाई. लेट्स सी. प्लीज डोंट डू एनी चैलेंज भाई. ये तो भाई खुद तो जीत गए, आप चाहते नहीं बाकियों को कुछ मिले. इज लाइक डोंट डू एनी चैलेंज. Wow. नाइस नाइस. फिलहाल लाइक्स मैं वेट कर रहा हूँ बढ़ने का, बट रुक B7 के बाद गुकेश इज हैविंग हिज थिंग. ही हैज दैट एक्स्ट्रा टाइम टू स्पेंड हियर, सो दैट्स गुड न्यूज.
But yeah, he will have to make a choice soon. Knight a5 is the move we are considering. Saj, also knight e3 is always in the air. Rook se marna padega, but then yeah, what do you do about this rook? Yeah, it's a I problem. don't want to give up the knight though. Hmm. I don't want to give up the knight unless I get the a2 pawn. नहीं तो it True, doesn't make sense. ट्रू 1200 हो चुके हैं चैट। जल्दी से आपको मैं 2 मिनट, चलो 3 मिनट और दूंगा 1500 करने के लिए। जल्दी कर दो भाई ताकि आपको सीधा डायमंड मेंबरशिप मिले। We're on track for that. By the way, while people think एक Leon के game पे भाई एक नजर मार सकते हैं because he looks like he has some chances in this end game. Okay, this is the position and bishop end game है slightly better but very close to a draw still. चारों बिशप ओपन डायगोनल्स पे घूम रहे हैं, पूरा बोर्ड उनके कदमों पे परी की तरह उड़ रहे हैं। मजा आएगा भाई एंड गेम देखने में। But Sahil bhai, it looks equalish, yes. But if I capture the e4 ka pawn, it also seems quite loose to me. You can play rook e1, bishop c6, bishop e4, and I think you can capture the pawn. Then I think Leon will have some chances here. Yeah, he should. He definitely should. And I think उनका भी एक problem है, but I think he can take care of it long term. Uh, I don't know how, but the first to win a pawn probably will have an edge. And especially if he wins this pawn, तो ये F pawn pass pawn हो जाएगा, and that would be a huge asset long term. So yeah, Leon some chances. Time फिर से समय का चक्कर है Leon का. So hopefully he can make sure कि 16 move वो 10 मिनट में खेल पाएंगे. But yeah, I agree. I think he does look slightly better. बट बिशप एंड गेम थोड़ी बोरिंग लग रही है। गोइंग बैक टू द गुकेश गेम, जहां गुकेश अभी भी सोच रहा है भाई। Yeah, I think again I only see knight a5 as a probable move, but probably there is some. Let's do a deep dive there. Okay, so after knight a5, what is happening? Do you go rook b8? I think. कैन आई कम बैक? I didn't even look at that. Maybe queen c4, just to c4 deny your the move knight knight d2, and I d2. just take the pawn on c6. Okay, now do you want c4? The question is c4 working here? Ah, it is. Okay. Maybe bishop c5, Or bishop b4 also. bishop b4 as Because मेरे well. को c4 का pawn looks a bit loose. Rook ec1 defending the Ah, pawn. but white की position बड़ी cramped सी हो गई ना. All the pieces are just all the major pieces are just defending one pawn. Hmm. Maybe optically, Pragg doesn't like this. If you had to choose one side, white or black, chat, which side would you choose and Sajma, which one would it be? Right in this position, probably black, I would say. And in this But yeah, position? ऐसे यहाँ पे I'm not sure. I think I can also I'm 50-50 here. uh, And you? I don't know. I mean, I would. I mean, ऐसी complicated positions में ना, I mean, it's really depends on the one who blinks first. And blink first वो करता है who is worse at handling pressure. So I know Gukesh ka strong suit. In fact, I just conducted an interview with Humpy ma'am like 10 days back. And I think she also became the world champion and Gukesh also became the world champion. And realized कि दोनों का एक strong point है and that is handling pressure. And it's not like just a coincidence that both of them became world champions. So if I have to look at handling pressure, I am betting on Gukesh the most. कहीं ना कहीं पे. So I will choose black. Okay. Okay. I don't know. I think that these players are very close to each other. But yeah, for sure, Gukesh having is the more experienced one because he's played a world championship match before. So that definitely plays a part. यथार्थ भाई मेंबरशिप मिल चुकी है आपको भाई आपके उस आईडी पे। यू कैन गो एंड चेक, इट हैज बीन एडेड भाई। एनीवेज हाँ, Yeah, so rook b7, knight a5. Is rook b1 my only move there, or can I go rook takes b8 as well? नहीं रुक बीट ऑब्वियसली पॉसिबल भाई। आई थिंक आफ्टर After knight a5, yeah? हाँ नाइट After f5 knight. रुक b8, दैट्स द मोस्ट लॉजिकल मूव। एंड देन द क्वेश्चन इज डू यू वांट टू एक्सचेंज द सेकंड रुक एज वेल बिकॉज़ रुक b2 तो आ रहा है एंड नॉट मेनी डिफेंसेस टू दैट मूव। Yeah, rook b1, and I think it becomes comfortable for Pragg here, more or less.
Queen c4 Yeah. possible है This तो is what we queen saw, right? c4. We saw this, I think. We saw this. And यहाँ पे, this is where we left. But let's say I played knight d2. I attack the queen. Oh, c3 मर रहा है. Sorry. पहले c3, पहले queen c2. Let's say queen c6, knight c6. Which one do you want to take with? Maybe queen. Yeah, maybe queen. Queen c6. Let's say knight d2, stopping knight c4. Yeah, this becomes equal, na? More or less. Yeah. Yeah, this is equal. Maybe bishop c5, queen b5 would be something, but bishop c5 maybe? Yeah, but takes knight b3, that's just equal. अरे यार exchange मत तो खत्म करो, है ना? come on. So Saj, I have a question for you, ठीक है? Would you prefer a draw or would you prefer one side winning this? Because if they win, they get sole lead, very likely. It depends on the position. Depends on this. I think looks like a draw. I don't. Maybe it's possible, Sahil bhai, that your point that maybe he missed rook b7 or he underestimated rook b7 in some way. Yeah, a3 probably wasn't the best move here, and yeah, looks like a draw to me. And chat 1500 लाइक तो नहीं कर पाई, but 1000 जरूर करी. So प्लैटिनम मेंबरशिप का सवाल इनकमिंग चैट जल्दी से रेडी लिख दो जब आप लोग रेडी हैं, and then we will ask the next question. Okay, I'm looking at other games. Okay, Leon is going for the e4 pawn. He definitely has some chances in this position. By the way, maybe we should have a look at the challenger section briefly. Yeah, just 10 seconds each at the game. And I think this is the position for, what's this Frostino's game? Sorry. Vaishali's game, we saw it till here. Bishop c4, a4, b6, rook e3, and c5. And this is the current position. Like, she's improving her position gradually, I think. Yeah, she's just a free pawn up now. There is no compensation whatsoever. So, why I told you, Pele. You asked me Vaishali or this game, who would you choose? It's the better prepared guy here, yeah. She's 1 point behind the leaders chat. So if she wins, this is amazing. She might be half a point behind soon. So she's playing very well. And looking at the game of Divya very quickly, who's not had the best of events. Bishop b7, rook e8, bishop f3 at 6, right? And look at this. Oh, wow. Chat. Okay. The question is, what is I the know. best move in this? What is the best move in this position for Divya's opponent that he played in the game? Black to play and get a better position. The first person to answer gets a platinum membership. Let's go. But Saj bhai. I knew the question also that you were gonna ask. That's how I knew the move instantly. साहब मुझे लग रहा है मे बी बिशप b5 बिकॉज वी रिमूव दिस नाइट हमारी क्वीन को अटैक किया है भाई इतनी जरूरत क्वीन a6 देयर इज नाइट c7 सो मे बिशप b5 Yeah, bishop b5 is what I would have considered if you didn't ask the question. That's for sure. nice But भाई chat ने तो निकाल लिया भाई chat ने तो निकाल लिया. and chat you are absolutely correct queen takes b4 a brilliancy sacrificing the queen pawn takes bishop takes b5 oh I so wish we had Vishy sir here now Saj bhai यार क्या गेम हो गई है दो pawns push हो रहे हैं भाई past pawns rook c1 another slight mistake I think knight e4 was apparently just winning but okay rook c8 and black is still better and ये दोनों pawns बहुत ही खतरनाक दिव्या I think she's just also a bit unlucky yeah I think वो luck साथ नहीं दे रही उसका कुछ हद तक Yeah, queen takes b4 is. I didn't actually know that this happened over the board, which is insane to me. Bhai. This could be yeah a move of the tournament. It's very yeah very cool. could be and Shuryansh Thakur you are the first person to write so please अपनी ID डाल दो and आपको मिलेगा platinum membership so yeah great move by Divya's opponent and hoping Divya can hold this rook c8 is a good step in that direction कुछ उम्मीद है but अगर ये pawn c3 पे आ गया that will be game over so Divya trying to hold and meanwhile Gukesh took on b7 okay I am genuinely surprised he took on b7 allowed the pawn to come to b7 rook b8 and now Pragg is thinking Saj maybe the plan is indeed rook b1 and knight b2 maybe he thought that endgame जो हम देख रहे थे
जहाँ पे queen b1 selection, maybe this is too dull for him and he feels this was more like a draw. Mm-hmm. And knight b2 ke saath, at least he keeps the rooks, which increases his chances. And also he has Yep. some pressure on the a2 pawn as well, which can also come in handy. By rook b2 to nahi mar raha na yahan pe. We are discussing sacrifices left and right. Is rook b2 a possibility? No, probably not. Because take c6 I have and I just get queen b7. You mean sacrificing the exchange, yeah? Yeah. Rook b2. You think you have c6 or Hmm. something, and then you just Yeah, c6, c5, and yeah. b7 folds. So crazy game, and Saj by rook b1, knight b2. So we were thinking c4, right? I think c4 हमारे दिमाग में था. So let's say black anyway plays c6. Uh, so if he takes rook b7, is that possible? First of all, Maybe I have c5 and I can put my other pawn on c6 as well. But then your a2 pawn is kind of left hanging, so maybe not. अभी तो नहीं मारोगे. Maybe you go bishop f8 or something, and then you have the a2 pawn as a target. Maybe, but okay. Instead of c5, I just go something like knight d2. saving the ठीक pawn. है, मैंने Yeah. बचा लिया अपना मतलब c4 का pawn. What's your how do you progress now? Maybe bishop b4. But yeah, this looks tricky for Pragg indeed. And maybe this is the good decision, because if couple of variations we saw are leading to a black advantage, that is great. And if there's only one way for white to get an equal position, maybe this is the practical try. And Gukesh is very good at putting practical pressure. We can see Noderbek observing the game of both these players. And आपको मिल गया सुधांश भाई, do check your account, you've got the platinum membership. अगला challenge करेंगे भाई 1500 likes पे. Absolutely. But ये तो I think almost forced ही हो गया ना? Why is Pragg thinking? So it's takes and rook b8. Okay, so he's deciding whether to go rook b1 or something else, right? Yeah. Is there something else though? Not that I can see. Queen b3 perhaps, but I can just play knight e3 na, and then I just capture everything and take away the b7 wala pawn. Okay, maybe you don't take. Yeah, that Why would rook only help. b2 looks very risky in that position. Yeah. So maybe let's say you take rook it. I don't know. You take rook with the rook. Yeah. डर लग रहा है वो तो. हाँ. You don't leave the back rank because queen b3, a b3, rook b7, and I don't know. This pawn looks strong, Sahaj. Maybe It white has does. beef. You know? Mhm. Maybe you can probably save it with बार को देख के, या we can say नहीं है उतनी dangerous, but practically ये तो कभी आप allow नहीं करोगे. अगर Yeah. आपने Yeah. b4 भी खेला, I can always play something like c5 for example, and then eventually what happens is like my a3 pawn is fully protected. Yeah, It, I agree. it And this is not easy. So going back, this is the current position. As Pragg calculates, he only has 9 minutes to play 15 moves. So this is not easy for Praggnanandhaa, who's had a magical tournament so far, leading the event throughout with not a and Queen B3 played. So he was thinking about that position. Yeah, so maybe that 93 endgame is happening over the board. Ooh, Sahaj. So we are going to see that, and that means complications heavy game, and the game is not over yet. मजा आएगा भाई. बिल्कुल. कोई पूछ रहा है चैट में why knight d2 is bad. I mean, your plan is just to trade my knight, right? Okay, let me think. First, my first thing is I have to think between rook b7 and knight e3. Rook b7, knight c4, queen c4, and rook b1. And then I think But C3 is hanging, I no? can just take on c3. Yeah. This is like a same position, a tempo down जो हम देख रहे थे end game. This is Mm-hmm. same position जहाँ black ने pawn मार लिया free का. So Hmm. maybe this is not worthwhile. If you wanted this, there were other ways to do it. Yeah. So I think queen b3 के बाद, yeah, knight d2 probably is a bit slow. It's not really ideal. I mean, you should try to save this pawn, right? Direct pawn को देना भी क्यों है? Like if you can save this, try to save this. And this is the queen, yeah. True, true. Now I think Gukesh probably wondering knight e3 or knight f5, but knight e3 probably is what I would go. If I don't play knight e3 immediately, then it can be a bit of a problem also because मेरा threat bishop a7 का है साहिल भाई. So you have to act fast. So h6 loses to bishop a7, and that's the end of the game. So both sides have their threats. So knight e3 is a move. Unless you can possibly attack this. So can we play c5 here?
Ooh, the bar doesn't like it. That it doesn't like it. My what's the story here? Is Rook D1 or Rook B1 or something, or what's going on? You're Rook B1, yeah? But Rook B1. Just defending the B7 pawn, and now I think you will have to work hard to take that pawn on B7. So knight E3 probably looking the most logical. C5, Rook D1. What about knight B2? Just Queen A3. Yeah. Hmm. Oh, so maybe C6, defending this pawn. अरे Yes. बाप रे, रुक B1 and knight B2. भाई क्या ही चेस, क्या कॉम्प्लिकेटेड गेम है भाई. भाई. बट अभी भी यार क्वीन ट्रेड कर लिया फिर तो जीतने का चांस गया ना, बिकॉज क्वीन F7 किंग F7, आई जस्ट ब्रिंग माय किंग टू द सेंटर, हाउ आर यू गोना विन दिस? Hmm. ये तो Maybe पॉसिबल ही नहीं bishop होगा. C1. Yeah. किंग F1 ई ना, किंग F1 E2 ले आओ सीधा, मतलब कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी डायरेक्ट करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे. Hmm. Yeah. So maybe it's not that easy and देखना पड़ेगा. So knight E3 has to be the move maybe then Sahaj. Maybe C6 is just a draw. या 93 से थोड़े कॉम्प्लिकेट, पर वो भी इक्वली है मतलब, बट सम मोर चांसेस देयर आई गेस. Hmm. 20, my 5 moves completed only. I know 26 now and 9 moves for 9 minutes for Pragg. So it will not be easy. What about Queen A4 instead of Queen B3? That is an interesting try. Maybe not as relevant. The idea is Rook B7 pe Queen A8. Check, winning the Rook. But maybe we are not forced to take. Maybe just why C5, C6 with the idea of Queen B7 या Rook B7 at some C6 point. तो Yeah. खैर अभी क्वीन C6 मर रहा है, बट मे बी यू गो C5 या, और ऑल्सो साहिल भाई, व्हाट आई एम थिंकिंग इज if I go knight takes E3, I think you have queen A7. Oh wait, there is C5. Oh wait, there is C5. Never mind, never mind, never mind. Only chalti hai actually, I think. Bhai sahab. But yeah. Okay, going back, Bhai. instead of after knight E3, I go rook E3. हाँ, rook E3. मैं जो चाल चल रहा हूँ कंप्यूटर को खराब लग रही है वो. Queen A2 apparently Oh, is losing. I, you know the reason, because you cannot play queen A8 because there's queen B1, queen B7. Oh. And the bishop defends the pawn. Yeah. Bhai, so this is complicated. Maybe there are some variations, and I think, okay, that was Queen F4 though. I think Knight E3 might be the best guess. That's my understanding. Knight A5 कई लोग कह रहे हैं, but I think this is not the ideal setup. I feel. I don't know. I don't know what's the best move here, but Knight F5 feels weird. Also, pieces going backwards. I feel queen exchange, again, I think I've said this before, but queen exchange करने के बाद chances जीतने के zero हो जाते हैं मेरे हिसाब से. Takes rook b1 and you, even the rook is getting exchanged. I mean, you had that fantastic b2 का square ना. वो b2 के square पे अगर rook भी नहीं है, queen भी नहीं है, तो what's the point of that? Your bishop is also dark square, तो आप a2 के pawn पे कोई pressure नहीं डाल सकते. तो this I think fizzles out into a draw. Yeah, if you had a light square bishop, imagine the bishop sitting on e6. Suddenly the position changes a lot, which is a luxury black doesn't have. इसलिए bishop pair की value यहाँ दिख रही है साजा. अगर दोनों Hmm. bishop होते, like suddenly a2 pawn hanging है, a3 भी defended, that would have been deadly. Absolutely, and that's a good example of the double bishop advantage. And chat में काफी लोग पूछते भी हैं question कि भाई double bishop advantage क्या होता है? This is exactly what it is. Yeah, yeah. So maza aega chat. Going back to the live position, which is this one, and he just took on e3. Knight takes e3 played. We discussed this is the only move arguably to put pressure, and now Pragg has to make a difficult choice. Does he trade queens? Does he take the knight? And if he takes the knight, with which piece does he take the knight? It's not an easy choice. अब विशी सर ने बोल ही दिया है गोल्डन पॉन कुछ नहीं होता है, ऐसे फालतू में मेरे को बोर मत करो. अब तो अब एफ ई थ्री एनालाइज करते हैं साहिल भाई. इवन दो No, fe3 looks I logical have to I because have to I have to go back and revisit my life. my life basically. Literally since like 9 years old I used to have this in my mind कि F pawn को जितना कम टच कर सकते हो उतना करो. Yeah. So But let's say still, I fe3. mean, to an extent, I think he did say that the F pawn is the weakest pawn, and you should not touch it regardless. Maybe my coach just had a different way of explaining something like that. Yep. And Saj, now the question is, ye pawn attack there, we clearly can't go b4.
Rook b1, there might be a2 ideas, and then rook b3 anyways at some point. So I'm guessing knight d2 probably saves Mhm. the pawn. Then how can black push here basically if he had to? So the immediate thing is that comes to mind is you can play a2, bishop a3, bishop b2. The problem is after a2 I can go rook a1, rook a7. अब आप bishop a3 कभी भी नहीं खेल सकते because I can just capture on a2. Hmm. So now I can just bring my king from g1 to e2, or maybe of course I would like to bring it to b2 all the way, but maybe उसका time नहीं होगा मेरे पास. And black doesn't have any improvement. So you're saying this should be equal, yeah? There's no way for black to improve. Absolutely. And by the way, a quick update from the chat. Thank you, chat, for letting us know. But Leon and Jordan's game has ended in a draw. It was a repetition. Oh, so let's have one look at that. So that is another draw. This is where we left it. जहाँ पे c3 के बाद हम देखा था rook e1 खेला indeed to attack this pawn. Bishop f5, bishop c6, rook d3, and c4 was apparently the mistake, which is not not really easy to understand why it is a mistake. Yeah, I feel like the most logical move in the position. Rook d4, bishop e3, and they just repeated moves. And technically, the bar does say that white is better with bishop d5 and a5 both, but that's easier to understand with the bar rather than actually the looking at the position. Absolutely. I think the point was instead of c4, you could go bishop e4, rook c3, and maybe bishop h6. Correct me if I'm wrong there, Sahil bhai. Bishop e4, bishop e4, rook Rook e4. e4, rook c3. मेरे पास bishop h6 I think यहाँ पे. Is that the move? Ooh, yeah, yeah. Maybe directly just takes, and bishop h6 as well is Yeah, yeah, also yeah. good. मैं थोड़ा fancy हो रहा था. Yeah, But yeah, three bishop pawns. Yeah, h6. maybe that's there are too many pawns, and white should be better here probably. Yeah. Maybe he didn't like that black spawns are a bit more advanced and he chose a safer Huh. option. Rest day bhi hai, Yeah. so kind of makes sense. So this does Okay, so that we mean have. only Huh. one game is left now? Yeah, so three results. Pragg drew against Anish. Arjun drew against Sarana. Leon drew against Jordan. And now we come back to the star game and the only game and the longest game for today. That is Pragg against Gukesh. And after FE3, which was played by Pragg, Queen takes B3 played, Pawn takes, Rook takes B7. The material is now even 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6. And now comes Knight D2, the only move, and King to F7. So we have this exact position, Sahaj, the one we looked at. Who's better? If any side can win, which side it is? मुझे लग रहा है कभी ना कभी ये king आएगा इधर C2 पे, then knight C4 takes and draw. I don't know. White लेकिन जीतने के लिए भी तो खेल सकता है ये. Hmm. So I mean, Pragg also has chances because a3 का pawn. See, अगर middle game में that pawn was an advanced pawn, but there is such a thing as and when a pawn is too advanced, like you don't have that a1 ka square. We already know that. So eventually, if the white's king sits on c2, white gets to play b4, knight c4, thoda improvement. That a3 pawn is about to fall. Maybe this gives Pragg some winning chances too. Yes, absolutely. And Gukesh has to calculate both. Can he push here somehow? And if he cannot, then maybe there is some long term danger. And Pragg, of course, for the first time, I think he has a calmer position. So his time trouble maybe means less. And he's trying to calculate, is there any chance for me? Does Gukesh have any chances? And King, हम कहते हैं King कभी चलता नहीं है. Suddenly, King becomes the most important piece here, Sahaj. Suddenly, out of the blue. Yeah, जैसी Queen trade हुई, the Queens are out and the Kings are in. Absolutely, absolutely. King becomes a piece itself in the end game because there is no risk. So we should treat it like that. दोनों players अब king center में लाएंगे. We know what White's plan is, but I think Gukesh ka plan can be before the king has all of this time to go to c2 and do all of these things. He can maybe create some complications on the king side. Yeah, g6, f5, something like that. Just to create some mess on the king side. तो वहाँ पे भी नजर रहे. Plus, also if White's king ever goes to c2, maybe your e3 pawn also becomes a bit weak. But now that I think about it, there's also knight c4 जिससे बच जाएगा. So yeah, probably he has to go for some king side attack very soon. Otherwise ये गुकेश के लिए भी problem हो सकती है. And this is very interesting. Rook a1 instantly. And let's say king e6. Okay, and just continuing with our normal plan. Is b4 the idea? Because I was wondering कि इसको मार देते हैं. And let's say I don't know what you play. Do you play c5? What do you play here?
भाई सी B4 तो यार मैं खेलूं क्यों, मतलब B4 मतलब मुझे जरूरत नहीं है ना खेलने, बट यू विल प्ले C5 probably to just exchange everything on the queen side and then it becomes equalish type of an end game. ये तो But ड्रॉ ही है ना B4 I भाई, think, ये तो but ड्रॉ ही है। B4 खेलना नहीं चाहिए आई थिंक प्रग को दिख रहा होगा उसको जीतने के चांसेस, there is nothing attacking the B3 हाँ। pawn, आराम से पहले किंग लेके आओ, C2 पे रखो, फिर नाइट C4 का थ्रेट दो, फिर उसके बाद B4 खेलो ताकि C5 ना आए। हम्म, ट्रू ट्रू। साहिल भाई, सो who would you pick here? If I told you कि आप ये पोजीशन ब्लैक से खेल सकते हो, व्हाइट से खेल सकते हो, व्हाट कलर डू यू चूज एंड व्हाई? आई वुड चूज वाइट बिकॉज मुझे वाइट्स के मूव आसानी से दिख रहे हैं। ब्लैक का मूव हम्म ना मुझे इतना क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट एम आई सपोज टू डू। एंड rook a1 king e6 actually played, and now king to f2, you're right, he does not go b4. He's simply saying कि pawn is under control, you cannot push it anymore, and my king is coming to control the rest of the problems. एब्सोल्युटली, आई couldn't agree with you more because again white की moves बहुत बहुत easy लग रही है and black को counter play ढूंढना is not easy. So I would also choose white here. क्या एकदम कुछ time पहले Gukesh was looking so comfortable, but just by allowing rook b7 just the things completely change. Yeah, chess is very very hard like that. आई थिंक वो A3 मूव, यही पॉन जो ने चला था, वही इनको प्रॉब्लम कॉज कर रहा है अभी। एंड वन मूव कैन चेंज द गेम इंडीड। एंड चैट 31 मूव्स हो चुके हैं प्रग के, सो 9 मोर मूव्स टू बी प्लेड इन 7 मिनट्स। एंड आई थिंक उन 9 मूव में वी विल हैव अ प्रिटी डिसेंट आइडिया कि रिजल्ट क्या होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है आज। Looking a bit tough, bhai. That's all I can say. If he finds G6 F5, maybe I think Gukesh will equalize this. But ये equal 0-0 वाली feeling नहीं आ रही, मुझे लग रहा है प्रग को chances हैं इधर. I'm Oh, very G6 realistic. played. He Mm-hmm. plays it. So he looks for And some king side play, yeah? yeah, and एक brief look मारते हैं, keeping the same camera at the women's challenger section. Sorry, Queen F4 खेला, C3, and look at what Queen E5 played, and look at what Black plays. Knight BD5, एक और brilliancy भाई, एक और brilliancy. And the idea is, chat, if you take on D5, chat, Black to play and win. Let's go. Okay, knight d5, queen d5, d2 में तो you will go queen takes d2. So d2 straight away. Yeah, indeed. D2, Rook D1, and C2. Oh, wow. This is looking very very nice. By the way, just to show the chart as well, knight अगर d2 से पहले अगर knight d5 मारा होता ना मैंने, knight d5, bishop d5, knight d5, queen d5. Now d2 doesn't work because there is queen takes d2 and rook c8, Ooh. rook c8, rook d8 is defending. Wow. So एक और क्वीन सैक हो जाता है यहाँ पे भाई। क्वीन फॉर अ Hmm. पॉन। क्वीन फॉर अ पॉन सैक कभी देखा नहीं है मैंने वैसे। नाइस। So 95 played, and Divya unfortunately seems to be struggling. Queen d4 is the only move for her, hoping she finds it. And meanwhile, Vaishali game, Rook h6, f5 played, and एक और brilliancy भाई, brilliancy ही brilliancy दिख रही है आज भाई। Rook sacrifice, exchange sacrifice. And also, this wasn't a brilliancy. This was planned. Yeah, I think the Hmm. brilliant move is not rook g6. It's rook h6 actually. क्योंकि वो सोच के आया था. हाँ सोच के आई थी कि after f5 I'm going to go rook takes g6, and now she knows कि g6 का pawn is a bit loose. a4 का pawn, e4 का pawn. They are all looking like weaknesses. I really like Vaishali's chances here. I'm going to say she's going yeah. to win here. Yeah, Vaishali looks in amazing form, and she is cruising with the black pieces. Double bishops का असली पावर यहाँ पे दिखने वाला है। सारे वीक पॉन्स एक एक करके खाए जाएंगे विद कैचअप, बड़ा मजा आएगा। एंड गोइंग बैक टू द मुकेश गेम, हमने देखा था यहाँ पे G6 किंग, ओ सॉरी, रुक A2 पहले खेला, सो कंट्रोलिंग दिस पॉन, एंड नाउ F5 एंड किंग टू F3. And I agree, Saj. For example, F takes E4, King takes E4. Suddenly, you are like, you know what? Pragg could win this. Already, I feel King f3 के बाद he has very good chances. वो a3 का pawn, maybe that this endgame with the a3 का pawn wasn't, the most comfortable for Gukesh, and it shows already. One bad exchange and the things can turn really really fast here. Yeah. Also, time भी कम And है दोनों players के पास. Sahaj, do you think they will repeat moves somehow? I don't know, like यहाँ पे कोई repetition, because it's also like a positional stalemate. So because white wouldn't like to take, because black का pawn takes आ जाएगा. Black wouldn't like to take because king takes आ जाएगा.
And you can't move the king back. I mean, you can, but you have to be a bit more careful about these pawns now. So could this be like a positional stalemate जहाँ पे कुछ draw हो जाएगा? I don't know. बिल्कुल Look, सही बोला आपने. Also, if you go b4, then there is c5, yeah? हाँ. अगर So अभी rook b4 a1, खेला. bishop e7, rook a2, bishop d6. Hmm. Maybe you can play g4 as white and do some, create some chances there. So let's But say, before say game can continue. Also, Sahil bhai, another idea that that I'm thinking about is instead of g4, I can go e takes f5, g takes f5, and then throw e4 again. इससे मैंने कुछ किया नहीं, but at least the game continues. Oh wait, you have true. bishop g5. Unless you have bishop g5, which I don't like. But knight c4 and ये pawn भी जा रहा है. Now But b3 का b3, pawn जा रहा है ना यहाँ पे, तो rook maybe a3. I don't want to give up the b3 का pawn that Got it. easily. Got it. So I'll probably go for this EF5. देखो अगर रिपीट ही कर रहे हैं तो बिशप E7 के बाद वापस D6 पे आएगा ना, तो उसके हाँ. बाद मैं EF5 GF5 तब खेलूंगा E4 जब आपका बिशप D6 पे है, ताकि ये बिशप G5 वाली So चालें ना आए आपके पास. nice. h3, bishop d6, and अब now you खेलूंगा. will take Yes. e4. This makes sense because now you don't have this bishop G5. That feels a bit annoying to me as white. I agree. And यहाँ पे मारोगे king e4. I have 2 against 1 here. So कहीं ना कहीं पे this knight cannot move now, but pressure बन सकता है. I agree. बिल्कुल. तो लग रहा है भाई ड्रॉ होगा और कुछ नहीं लग रहा भाई. एंड अगर आपको याद हो वो गेम, गुकेश वर्सेस वेई फ्रॉम द ओलंपियाड, अगर मैं वहाँ की चैट्स उठा के देखूँ ना, और मी एंड साहिल भाई इंक्लूडेड, एटलीस्ट हमने कम से कम 100 बार बोला होगा कि ये पोजीशन ड्रॉ है, ड्रॉ है, ड्रॉ. एंड पूरी चैट में किसी ने नहीं बोला था कि दैट पोजीशन गुकेश इज, ही हैज दैट ही कैन पुल इट ऑफ, बट ही डिड. Yeah. ही डेफिनेटली डिड. सो चांसेस अभी भी हाई हैं यहाँ पे. अर्जुन का क्या हुआ? अर्जुन का ड्रॉ हुआ. साहिल स्टीज मेकिंग दिस बोरिंग गेम इवन स्कैरियर. भाई आपको शादी थोड़ी करनी है मुझसे, भाई गेम देखनी है, भाई गेम देखो. एंड h5 प्लेड बाय गुकेश. तो गुकेश इज नॉट बैकिंग डाउन. Yeah, he takes away the idea of g4. Uh, Potentially, maybe I can go h3 g4, but I don't see the point of doing that just yet. But draw हो सकता है अभी if the king doesn't get to d3. I also like ef5, gf5, e4. But I feel that because Pragg has less time on the clock, maybe he wouldn't want to liquidate the position like this. क्योंकि यहाँ पे tactically you can make mistakes. Maybe he waits a bit, 40 साल complete हो जाए, and then he goes for something like that because he has more time. Got it. Got it. Got it. Got it. बट लुकिंग एट So ऑल द मास्टर सेक्शन गेम्स भाई सबका ही इक्वल लग रहा है. बाय द वे, वार्मर वर्सेस वेई, ऑल्दो द बार से 0-0 वहाँ पे, इट्स नॉट अ गिवन ड्रॉ. जस्ट वांट टू पुट इट आउट देयर. true, true, but I think Vei itni game draw कर चुका है, and Max is also won his last game, so probably likely to end a draw, let's say. मे बी. भाई आज सारी गेम्स ड्रॉ होने वाली है मुझे लग रहा है. सो यू लुक एट दिस. लियोन जॉर्डन ड्रॉ. केमर कारुआना इज 0.00. अर्जुन असराना ड्रॉ. नोदरबेक फेदोसीफ इज 0.00. हरिकृष्णा अनीश ड्रॉ. मैक्स वेई इज 0.00. एंड सिर्फ प्रग हुकेश चल रहा है, एंड दैट आल्सो इज टेक्निकली 0. सो आई थिंक सारी मास्टर्स गेम्स आज ड्रॉ होने वाली है. वाह, दैट इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी. बट अगेन मेरे को लग रहा है कि वेई वाले गेम में इट विल, that game will last quite a bit. Maybe it's a draw. And Pragg also might find some way here to push this. या. Let's see what happens. But yeah, it's a possibility. नथिंग इज फिनिश्ड अंटिल इट इज फिनिश्ड. आई अग्री भाई. मैं भी तभी अपनी एक्स के पीछे बहुत भागा था, बट उसका फिनिश पहले आ गया था भाई. एंड h5 के बाद साज कुड वी प्ले h3 g4 विद द सेम आइडिया, और डू यू थिंक टू मेनी पॉन्स आर गेटिंग एक्सचेंज्ड? पता है साहिल भाई, मैं ना अपना मैं ना काउंट कर रहा था कितने दिन हो गए 2025 में कि साहिल भाई ने अपना एक्स वाला जोक नहीं मारा अभी तक. एंड आई हैव एन अच्छा. आंसर नाउ. तो 25 दिन 26 दिन हो गए थे यार. मतलब स्ट्रीम में तो 7 ही दिन हुए थे ना. कितना रोका होगा आपने अपने आप को. पर आज निकल ही गया विश्व सर के आते ही. वाह. बस भाई क्या करें, ट्रॉमा ही बड़ा डीप है. हाउ मेनी मोर मूव्स प्रग हैज टू प्ले, कैन यू टेल? ही हैज टू प्ले 7 मोर मूव्स चैट. सो 7 चालें खेलनी है. एंड
it should not be difficult in this position. He can play h3, rook a1, like ऐसी casual moves तो मजे मजे में खेल सकता है if he wants to. ना थोड़ा टाइम पास करो आराम से एंड यू नो गेन गेट टू 40 मूव्स एंड देन उसके बाद यू लुक फॉर अ वे टू या पुट द प्रेशर. कितनी मूव 33 so only 7 more moves left. That's not a lot. And increment भी है तो it's like 1 minute to move basically, including the increment, so he should be okay. But yeah, he has to play and he's यार कितना considering all मजा his options. भाई यार आई हैव टू से कितना मजा आता है जब विशेष सर आते हैं यार. इतना मजा आता है. वी शुड डू दिस मोर ऑफन भाई. हाँ, and also I think हम भी like we also in awe ना थोड़ा सा, like जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज्यादा ज़्यादा we will होगा also get. आई मीन और तो तब भी उतनी रहेगी बट लेकिन वी विल गेट मोर यूज्ड टू काइंड ऑफ Oh, यू नो. they agreed to a draw. Oh, I think Gukesh offered a draw after h5, and they have indeed agreed to a draw. That is an excellent result because both of them, maintain not only their rating but also chances to win the entire event. So a decent game by both. I mean, amazing game by both players. 97.6 accuracy. Pragg puts some pressure, Gukesh puts some pressure back, and at the end they agree to a draw. इसके साथ ही chat, I think that's all the 4 games in the Masters among Indian players, and no का game भी draw ही चल रहा है, so they will maintain their lead. Wow, I wasn't expecting a draw because I thought maybe he can still put some pressure with b4, like we saw. I mean, maybe probably because he didn't have enough time, he just went for it. But yeah, it's hard to kind of make improvements here of any kind. After b4 also I have c5 now that I think about it. So yeah, Yeah, great yeah, result then. b4 c5, yeah. You So are right, chat, bhai. that is a draw, and maybe as we see them adjust the piece, Gukesh of course will never forget to adjust pieces. Pragg also does the same, and दोनों king e4 e5 square पे आ चुके हैं, and maybe it's time to go to the challenger section because I think that's those are the only games remaining. Niri bhai, do we have the cameras? Can you find the cameras for Divya or Vaishali, at least one of those boards? It will be amazing to have them, and maybe we can. Divya's game was about to finish, right? Or am I mistaken? Queen d4. Can we have Divya's camera? Because I think the game is crazy with 2 passed pawns. Can you reduce the size of the board a little bit? Also, she has 34 seconds on the clock. Or am I? She Oh, played with 4 seconds on the clock. She played the only move in the position, queen d4. wow. Chat, this is Divya also not having the best of events. I think she's at the second last in the rankings, ahead of Rina Bulumaga, but she deserves a lot more here, and hoping she can somehow at least hold this. But this is so complicated. And what happens on d2 now? Queen takes d2 तो नहीं है ना? Queen takes d2 ही होगा शायद. Man, if I have to give up my queen for a pawn, then भाई he रुक सेट plays मर रहा है ना d2. पीछे. Rook set Yeah, मर रहा he है ना. plays. Takes, Wait, takes, takes. Rook c8, king h7 and rook c2. takes this king h7 and rook c2. Oh, she goes for it. But do you think this game is equal, or do you think one side is better? d2, queen d2, cd2, rook c8 played. So I think if we can assume that both the b4 and the d2 pawns are gonna get taken here. So we can talk about this position कि भाई ठीक है हमारे पास 3 pawn side में है and एक pawn कोने में है, right? If we can remove the a वाला pawn, then this would be a draw. Agreed. But a pawn के होने की वजह से that the chances to win increase by a lot for black. However, we should also understand that it's rook for 2 knights. So that's the worst kind of that's the worst kind of minor pieces you can have against the rook. एक bishop or knight होता तो this would be very close to winning for black because there are 2 knights. I would say Divya can actually hold this position down. Yeah, just to kind of clarify this, so let's say king h7, rook c2, knight b4, rook d2. अगर ये दोनों pawn नहीं होते तो this would be a dead draw. I think there's no weakness for either side to attack. This offers black some chances. Let's say आपने a6 खेला, bishop solidify कर लिया. Now you try to pressure this long term, and black बहुत देर तक खेलेगा ऐसा है ना. He will just keep trying for the next 30 moves or so. Yeah, I would say so. I would say so. कि a pawn तो नहीं मरेगा. साहिल भाई,
हाँ we've been discussing, rook bishop versus rook versus bishop, all of these crazy end games. But हाँ. since Divya's opponent has two knights on the board, I feel obligated to ask this question: Are we gonna get the rarest end game possible, which is black having king and two knights and white having king and a pawn? King and a pawn. नहीं 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 Yes. This is नहीं one नहीं. of the rarest end games possible in chess. Yeah, and it's very complicated. So I would say कि let's not have it. But life में simplicity चाहिए भाई, complications नहीं. तो I would prefer not having it, but I think Divya will hold this relatively comfortably because I think everything in Divya's position looks solid now. There are no weaknesses. The bishop on f3 is perfectly placed, complements the pawn chain, and yeah, साथ में माइक में आया. Yeah, sure, no worries. So what's up, chat? Two knights को देख के, of course, we were talking about Gukesh versus Veyi. वहाँ पे भी दो knights थे. So maybe we can see a similar game like that. But I think this looks way more um, plausible to equalize. But let's see what happens here, chat. Okay, he plays. Wait, he just brought something back. Do we have the same position on the board? Okay, knight b4 हो चुका है board पे. I think the camera is a bit lagging at the moment, if I remember. But yeah, board पर क्या हुआ है? अच्छा नहीं, हम तो एनालिसिस पे छोड़ के चले गए यार आप साहिल भाई. ये तो एनालिसिस है. But yeah, in this position we have rook takes c8, which has already been played on the board. ये position नहीं आई अभी तक board पे. King h7 खेला है उसने, and now I think he's thinking. Keemer blunder. नहीं, blunder तो नहीं है. It's a bad move, I think. But I think they're going for even in this match, it could be a draw as well. Let's see what happens. Sahaj bhai, why knight d5 was a brilliancy in Divya's game? Probably because it defends the bishop on b5, and uske saath saath your plan was to play d2, and maybe it was the one of the only moves to keep that advantage for black. So that's why it was a brilliancy, and it was knight bd5, I think, not knight fd5. Oh, she just played another move. यार वो moves update नहीं हो रही है sadly. Um, okay, so we'll just stay on this then. Rook c8 हुआ है, and this is where we are. I'm just keeping the tab open on my other side. There we have it. Thank you so much, Niri bhai. ये तो मास्टर्स का है ना. अगर challenges का भी हो तो प्लीज़ वो भी लगा दो. If not possible, we can just look at this as well. Yo, एक what's up? भाई आपने वो एनालिसिस वाला वो आपने छोड़ दिया था तो हाँ, it sorry, wasn't I updating. think this happened. Bishop e8 खेला उसने, and now king to f1 played. This apparently is an inaccuracy, although I don't know why. The point is simple. I just want to play king e2, king d2. Why is this an inaccuracy? Do I go Maybe knight knight takes b4, king e2? knight a2. अच्छा, एक और एक्स्ट्रा पॉन मर रहा है, बट वो पॉन तो मर जाएगा ना वापस. king d2 king d2, let's say. मर जाएगा ना ये तो पॉन a7 का. If you can pick this up, it's over, yeah. But knight b4, rook a8, rook a8, e6. king c3, I think. Which check should I give? Does it matter? king d4. Yeah, I mean still हम लोग थोड़ा और deep जा सकते हैं इसमें, but I think, oh, I don't have rook a7. Yeah, so some tricks here. So I think king f1 looks logical, but tactically maybe there are some problems. जो clearly मैं तो logically निकाल दी, but I'm not sure black can find them. Time उतना नहीं है इनके पास. Divya literally has like 40 seconds, so she has no time on the clock. Opponent के पास भी 5 ही मिनट है. I don't know how much time that is. How many moves are left? So we still have what? Oh, 12 12, moves to 30. play. Oh, That's a lot. this Yeah, is that's difficult. not ideal. This is difficult. Sunday this was became a very draw day. अरे भाई, dry day सुना है. Draw day भी कभी ना कभी तो होना ही था यार. क्या चलता है भाई? ठीक है यार. जिंदगी में कई बार सहना पड़ता है draw day. Vaishali is still playing. Yep, she's also playing. Saj bhai, HSFI Arjun has now lost 30.3 points of ELOs down to 2770.7.
He lost half the yellow he gained in the entire last year. Oh, that is heartbreaking, actually. Yeah, indeed. Okay, knight takes a2 played. And now king d2 is the move. Bishop c6 also looks interesting just to take away the bishop wall advantage. But Divya having to play 12 moves here is not ideal. Yeah, king d2 played, and now there's a sequence of moves which gives black an edge. He can somehow save this pawn, but will he able to find? Will be able to find this with, like, I don't know, 4 minutes to go and 12 moves to go. So that is not easy. I don't think it's easy at all. But let's see. He just has to find a way to just defend that a pawn, and then it would be close to winning for him. But doesn't look. Oh, he plays knight before. Might be four played. Yeah, he sees a6 is possible. Yeah. And ideally, even a5 and a4 incoming. So you have to attack the pawn or do something here. Rook 8 maybe. Otherwise, a5 also मैं रुक possible. मैं रुक भी 8 सोच रहा था just to just kick the knight away and then a5. I go and now rook 8. Rook 8. I was तब तो thinking a4 भी आ रहा है ना a4. a4 भी आ रहा है यही And now पॉइंट I था save this pawn and ठीक है bishop d1 let me just take this pawn away. bishop d1. Oh, I missed that. Sorry. Then no a4. तो फिर क्या मूव है यहाँ पे अगर ये नहीं तो you just go into the end game. Yeah, फिर तो कुछ है ही नहीं. Maybe then a6 ही खेलना पड़ेगा फिर. Oh, but I can't play a6. a6 तो मर रहा कैसे है. खेलोगे ना आप okay wait she just played a move king c3. King c3 played, okay. Okay, activating the king provoking a5 By the looks way, logical. chat करिए Fabi game में कुछ crazy हो रहा है. You wanna check for a second? Yeah, sure. Ooh, bishop c1, queen e7, rook f1, bishop h4. I don't know what's happening. Still not sure what's happening here. Yeah, knight g3 खेला क्या उसने अभी Yeah, ruin it. yeah I moved Honestly, the I think queen away. Divya's game is more of a time scramble than this one. So I would actually stick to this one. 40 seconds. And Kemal Fabi में draw हो जीते हमें घंटा फर्क पड़ता है भाई, to be honest. Divya looks tired. I'm sure she is. I think this is a long event. Uh, let's have the camera for Divya back, Nidhi bhai. Uh, I think even players who are winning must be tired. So I can imagine somebody who's not had the best of events must be really, really tired. A loss really breaks you down sometimes. Absolutely. Also, Divya also kind of in that phase, yeah? Not exactly having the best event. No. By the way, chat, just putting it out there, there is also a kind of एक वो luck factor भी होता है इस position में if you think about it कि अगर ये bishop knight versus rook की position आई 3-3 pawn के साथ the h pawn again is going to be the right pawn. So that really increases Yeah. black's chances of pushing in this position. Yeah. ये चलेगा भाई. I think he will push here for a long time. Also, I just checked that Divya has also lost 11.6 points here in this tournament. And she's lost less points because she's also playing significantly stronger opposition. Like Arjun was the second seed in his event, but Divya was among the lower seeds. So she's lost less points, but it will hurt like a lot regardless, though. Saj, maybe we go to हाँ सर बोलो. Maybe we go to Vaishali's game, you mean? Yeah, Vaishali का से एक ही minute है. So maybe we can have वो भी लगा one सकते हैं. look there as well. बिल्कुल. So this is where we left. B5 was apparently a slight error. Bishop f4, king d7. Wait, how is white better suddenly? G4, rook h8, g5, king e6. भाई कुछ भी चल रहा है इस गेम में यार. सारे pawns मतलब just push everything. Still some preference to Vaishali though. Maybe the advantage has gone a bit, but gf6, bishop f6, yeah. E5. So e5. gf6, gf6. तो But that looks. Reminds me वो of Gukesh's g6 game का भाई. pawn. हाँ. और g3 आ जाएगा फिर कभी ना कभी. Niri bhai swiping more cameras than chicks have swiped on Tinder ever in my life भाई. लगा दो भाई, ढूंढ दो सही कैमरा. Finally, we have the camera. Pawn takes. Now bishop takes पे e5. But okay, bishop h4 भी मर रहा है.
I Rook e2, probably. बचा लिया. come on, come on. There must be a way. Bishop पे क्या खेलोगे साथ भाई? E5 पे. E5 ही मतलब once you see it, you can't unsee it. Bishop h4, rook e2. I just want to take away that c5 wala pawn. And if C5 is hanging, so can you do even something here? I don't know what you do. Wait. No. Nidhi bhai. भाई मुझे लगा एक सेकंड के लिए मेरा इंटरनेट गया. हाँ नहीं ये निधि सेम भाई होता का है. था, but it's back. All good. एक सिंह के लिए गया था भाई, आई थिंक स्ट्रीम एक सिंह के लिए. निंजा लिंक बंद हो गया था एक सिंह के लिए. हम्म. नहीं सही है, अब सब सही है. अब सही है, अब सही. By the way, 45 seconds for Divya. She has to, oh sorry, Vishali, she has to play bishop 6. Maybe she's considering gf6 also because उससे position थोड़ी crazy हो सकती है. I mean, the bishop will not be No, she happy. has played. She has played gf6, Oh, भाई. gf6 she played. Oh, and white also makes us lighter, but gf6 does not look good. But I get it, yeah. With no time, what do? You see e5 and you panic. Yeah. Also, you see e5 and that's even more reason to panic. Hmm. Okay, 15 seconds a6. for Shali. What should she do? It's not even clear. Now the b4. bishops look passive. b4, C4. bishop b5, yeah, rook g8 looks good. She attacks the pawn. Rook g3 played in a second. Bishop e8. Can we attack this? Yeah, we can. We can also play b4 just to set that pawn there, play have some bishop b5 wale threats. That also something I like. 15 seconds. 15 seconds. Oof. Full pressure. b4 played indeed. Chat Divya की गेम वो एंड गेम में जा चुकी है, सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग ग्राइंड देयर. विल कम टू दैट सून. जैसे ही 40 मूव्स हो जाएंगे यहाँ पे, 4 मूव पेंडिंग है. विशाली लिटरली प्लेड द लास्ट मूव ऑन 3 seconds. Wow. And she still has a bunch of more moves here to play, no? She has what, 5 more moves to play. Yeah. 4. 5, sorry, 5. Oh, 5, yeah. not easy. So what do we do? King f2? King f2 looks Get logical. everything out. Maybe king comes to e3. The rook now becomes free to move around. So bishop b5, bishop a6 पे rook a1 instantly and a7 would fall. But I don't see a way to kind of make progress for any player here. Like one, एक वो हवा में वाली बात है, but I can go g7, rook g6, rook h6. But that's too far fetched, I think. Rook नहीं वो g1 तो पे नहीं रख के होने वाला. दूसरा. वो तो नहीं होने वाला. मुश्किल लग रहा है. आई एम शॉक्ड विशी सर ग्रेस दिस स्ट्रीम. क्यों भाई, ऐसा क्यों शॉक हो रहा है तुम्हें यार? साहिल साज भाई, वन क्वेश्चन. बेस्ट गेम सो फार इन दिस टूर्नामेंट अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ यू. क्या लग रहा है साज, विच इज द बेस्ट गेम? Hari versus Max, I think. Which But was that one? 95 check, 95 check. 95. That was brilliant. वो जो 20 चाल में. That was crazy. That was brilliant. I think hard to choose the best game. We've not even seen all the games, but maybe. From what we've seen, I think I हाँ really हाँ liked हाँ. that. G7, okay. But Oh, King F7 पे क्या plan है? probably he sees that rook g6, rook h6 wala idea. But King F7 See, है ना? No rook G6 possible then. see, this is something जो सारे 2400 के प्लेयर सोच रहे हैं, no? It's like we are aligned here. दोनों के दोनों हम दोनों के दिमाग में यही बात है. खुद को भी रोस्ट कर अगर रहा हूँ 2400 ये सोच रहे तो 2100 क्या सोच रहे हैं भाई? Bishop D6. मैं. अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है. But yeah, G7, it was a mistake, but I don't understand why he played G5, G7 immediately though. You could have played King F2 first. अगर रुक G1 की option तो रहती कम से कम. Now he has And the to question wait. is, let's say, oh, Bishop H6 he has to save the pawn. But Actually, that's not something I want to do now. I could have done that at any point.
तो बिशप h6 पे रख के एकदम बिशप वही जो जैसे क्वीन वो a2 को बचा रही थी गुकेश और प्रज्ञ के गेम में, वैसे अभी बिशप एक पॉन को बचा रहा है, व्हिच फील्स अननेसेसरी. By the way, maybe we can go back. Divya game में कुछ update हुई है crazy, so we want to go back and check quickly. I don't know how this happened. So this is where we left it, right? Knight b4, a5, rook c5, knight a6, and she got the pawn back. So it feels like this should be holdable. Knight c7, king d4, knight check, king e3. The king also drops back. Wait, what's happening? Something is happening, yeah? Can we go to We the saw her. Can we go full screen? Wait, what is she claiming? probably they are trying to see कि how many moves have been played. But how is they don't understand 40 moves हुए कि नहीं हुए, yeah? Oh, but why did she play h4 here? This doesn't make any sense. Why would she break her pawn structure like this? Saj, is this a good move or am I like... No, they stopped the clock also. What's happening though? I'm not sure what's happening. going on? The opponent just left. उसने क्या washroom के direction पूछा था? What happened? Wait, what happened? I could be that maybe one of them didn't notate everything properly. That's my guess. But I think I'm speculating. यहाँ पे क्योंकि जब टाइम स्क्रैम्बल होता है तो मे बी दैट हैपेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम वी डोंट नोटेट एवरीथिंग एंड दोनों की मूव नंबर गलत होगा समथिंग लाइक दैट. Interesting. Yeah, she has a minute and 4 seconds on the clock chart. We can see it on the camera. भाई कुछ चेस 40 में ना लाइक जब भी आर्बिटर आता है ना इट्स ड्रामा. हैव यू नोटिस दिस व्हेनेवर एन आर्बिटर शोज अप इट्स जस्ट ड्रामा भाई. एवरीबॉडी इज एक्साइटेड. अरे आर्बिटर है भाई कुछ तो हुआ होगा. Vincent blunder, really? I'm going to check for 1 second quickly. If he, oh, Vincent made a mistake apparently. Rook e7, and Fabi could be better if he finds it. Fabi might just win today. Wow. You are right actually. Why did she play h4? That feels strange actually. Now the chances are a bit higher for black to win. Yeah, because मेरा idea है कि the pawn chain was so homogeneous ना ऐसे साथ में है. Actually, black has to prove that this is winning. So we don't have to do anything. We just sit tight. King को मैं तो कह रहा हूँ आराम से बिठाओ, रुक को कोने में रखो, chill करो, and just wait for black to create something. Like h4 just ऐसे pawn अलग-अलग हो गए. I can imagine Also, the black king taking this pawn at the end, 20 moves down the line, or the knight. Yeah, the knight is coming to g6. Oh, have we hit 40 moves already? 38 moves. Wait. भाई there's something opponent wrong? उठ के चला गया, ऐसा कैसे possible है? Oh. Where is the opponent, भाई? Yeah, he just came back. अच्छा, he came back. कुछ तो चक्कर चल रहा है भाई, पता नहीं क्या है. Okay, so knight g6 check. Just a few more moves and then the position will be a bit slower. I can definitely see actually the h pawn falling here at some point. It could be an issue. Knight g6 कितना अच्छा लग रहा है ना. King g3 भी अगर आप गए तो knight e7 and knight f5 is happening. धीरे धीरे करके I think the h4 pawn will fall, no? भाई चेस की दुनिया में ड्रामा चलता रहता है भाई, बहुत बहुत ड्रामा चलता रहता है. साजा आप कंटिन्यू करो, मैं कुछ क्रेजी देख रहा हूँ अभी. अच्छा कुछ हुआ है क्या? हाँ कुछ देख रहा हूँ मैं क्रेजी, बाद में बताऊंगा. अच्छा. Okay, cool. Done. So knight e7 is what I was thinking from black. Okay, he just makes a normal move and bishop e6 के बाद he's just gonna go knight e7 and knight f5 and let's see what happens there. By the way, that was move 40. So yeah, now it makes sense for Divya to walk and go away. So everything looks awesome. Maybe it's क्या time हुआ to... बताओ तो सही. Hey, question. Maybe it's time to go to the Vaishali game, yeah, now, just to kind of make sure everything is okay.
because Divya has reached her 40th move. Um, but nothing has changed in this position actually. They're repeating moves. Kya? Oh, they're repeating moves. They are repeating moves. So it is going to be a draw in the Vaishali game as well. If we could have the cams once, I think they are going to shake hands soon. Would you say that's a good result? No, position was looking a bit shaky actually. Yeah, I think that's a yeah decent result. Vishali would not be fully happy. I think she found that crazy idea Rook Ketsu G6, but yeah. Got it. Yeah, they're also not on the board. Probably. Oh, they're probably just checking whether three moves have been, but whether it's a 3-4 repetition or not. Okay, so Bishop C6 on the board. साहिल भाई कुछ crazy देखते हैं but कुछ share नहीं कर रहे हैं. अपना all the interesting masala he's just keeping it to himself and that's not cool भाई. Let us know. Bhai, if I भाई could अब तो share, I कैरी would share. मेनाती भी अब तो कैरी मेनाती भी आ गया चैट में. Arre, arre. Anyways, so Vaishali's game has it ended in a draw already, or is his opponent just he's just thinking right now? Yeah, if he has something. Yeah, okay, probably it was a repetition, but since he's thinking now, maybe he's considering whether he should go for the draw or not. Hmm. Okay, so bishop c6 attacking the e4 pawn, and now rook e1 would just transpose, I think, yeah. So Vaishali basically offering the draw and her opponent thinking. But she had a really good chance, I think, the draw. She had that crazy sacrifice as well. So a bit heartbreaking. औरो वर्सेस टिक्कू चेस बॉक्सिंग. हाँ भाई, तुम मेरे को मतलब तुम वो डायन बना दो भाई, दुनिया का चेस दुनिया का भाई तुम. और by the way, Vaishali is not even at the board, so Arthur right now contemplating, does he have something? Maybe he does, but whatever it is not easy. So probably a draw would be a fair result. I think e4 pawn is hanging, and if you were to defend it this way, then king g6 and you lose the g7 Yeah. pawn. So I think it's just a draw. Chat में कोई लिख रहा है arbiter objected on Divya's genes. That's funny. भाई इसने आर्थर ने भी जीन्स ही पहने हैं भाई, so ऐसे बहुत लोग Hmm. ऑब्जेक्शन पे आ जाएंगे. Sahil's laugh is crazy. Yes, bro, my laugh is crazy, bro, and proud of it. फायर जी अपने पता नहीं कौन से डीएम की यहाँ लिख रहे हैं. Okay, just go to Divya. Yeah, we just want to see the final. वैसे draw ही होगी. We can switch because his तो सोच opponent रहा है is ना in. भी इसके पास है 47 minutes. Let's हाँ, just तो put let's go to Divya's thing Divya's ना. game. Yeah, yeah, let's go there because यहाँ पे वो सोचेगा आराम से वो. Vishali does arrive, but दिव्या का ही लगा दो ना कैमरा भी. yeah, let's have Divya camera Niri bhai. I think ये game draw ही होगी. Tomorrow matchup chat. Tomorrow is a rest day. बट वापस आके जो पेयरिंग्स है मैं मास्टर्स की अभी बताता हूँ कि क्या पेयरिंग्स है. एंड इट इज, let me quickly see. I'm loving it. It is Wei Yi against Erigesi Arjun. So that will be, a tough match, but Arjun, hopefully he can, get back his form. I am expecting a draw there. Then Gukesh against Leon. Sahaj. That feels like the moment jahan Gukesh just takes another, point somehow and pushes and probably takes lead. That could be possible. And Gukesh will be white as well, so definitely Yeah. that will be also break के बाद तो there'll be some Hmm. solid preparation there as well. So let's see what happens. Yep. And चारों का Anish draw हो गया. against Pragg. Anish against Pragg. Nice, nice. And Fedosi versus Hari Krishna and Caruana versus Nodirbek. So Nodirbek will have the black pieces, Pragg will have the black pieces. So Gukesh with the white pieces against Leon has a great chance to take over the lead.
in the next round. So we will of course be fully, coming with full energy bhai for that round. Bada maza aayega dekhne ke liye if that can happen. But as of now, the tournament is, yeah, round number 8 is still on. Absolutely. Also, Nordirbeck also looks like that game is going to be equal. Maybe some, okay, maybe some very, okay, there's no chances that this is going to be a draw as well. Sabhi ka hi draw. Yeah, master section में भी सबका ही draw लग रहा है. Okay, Vincent has just, yeah, Vincent is probably not going to have a good day. Apart from that, all looking good. पीछे केमर भी खेल रहा है बेचारा, कह रहा है कारुआना, आई थिंक ही मेड अ ब्लंडर अगेंस्ट कारुआना, सो वो भी गेम चल रही है. Fabi jeans too. Yeah, I mean jeans is very common. I don't think इतना फर्क भी पड़ता है. I mean most black jeans anyway look like pants, yeah. So it's very that देखो ना इसने बंदे ने jeans ही पहनी है, but it's very hard to see the difference. Saj bhai, what is Black's plan to win? Because I think he has activated his pieces the most. But how is he winning this? 97 knight f5. I did say this a bit earlier. 97 knight f5 looks very logical to me. King ko Okay, hata and let's wale say I play. Okay, this pawn is, so I will have to push h5, yeah. h5 खेल दे फिर तो pawn गया ना वो लाइट स्क्वायर पे भी है वो गया वो But pawn let's say कभी ना rook कभी तो जाएगा. b5, knight e7. You have to play h5. Now what else? No, I can no, but I will take that pawn for sure. Then वो तो गया वो pawn. But what do I do? Like there's nothing King I can f4 do. maybe. King f4, भाई डर लग रहा है. But I you're don't know not कैसे just डर. not allowing knight f5 check, no? Maybe knight d5 check. Yeah. If I go bishop d5, probably it's not the best trade. But I can come back. मतलब मेरे को कोई जल्दी King नहीं है. f2, king g3. g3 हाँ ये now. खेल सकते हैं ना. Maybe she has some chances there. Actually, I have defended a position like this against Gopal, where I had a king and rook 2 pawns and he had king bishop knight and 2 pawns like this. But difference ये था कि हमारे pawns टूटे हुए नहीं थे. Right? We didn't have f and h pawns. We had f and g pawns instead. So it was a bit easier for me to defend. Still वो game चला था भाई 5-6 घंटे चला था. And I remember I had to defend this for 2 hours. And मुझे इसलिए याद है कि उस दिन मेरा बर्थडे था. तो I was just भाई गेम खत्म करो. Like I want to celebrate, but ये गेम इतना लंबा चला था. So yeah. भाई आई थिंक हम आज मास्टर्स जल्दी खत्म हो गया तो आज चैलेंजेस लंबा चल रहा है भाई. हम लोग तो लगे रहेंगे साथ. भाई मस्त है. ये गेम You तो never. पक्का चलेगा. At least another 2 hours, 1.5 hours, something like अरे that. बाप रे. And also by the way, Vaishali's game has an opponent played? No, not yet. He's still thinking. So he will have some time. Who has the harder games coming up between Gukesh, Pragg and Nordirbeck? I think it's very hard here. Every opponent is strong. I think round by round लेते हैं. It's still like what? 5 games to go. It's a lot of games. I think balanced ही होगा. Last 2 round में you can start calculating this कि भाई किसका ज़्यादा easy है, किसका difficult है. But as of now, it feels like it's just equal that way long term. Did Vishy sir ask about me? भाई हाँ. But why? Yes. क्या पूछा उन्होंने? वो बाद में यहाँ नहीं stream के बोल बाद सकता. बताते हैं आराम से. Discord पे बताता हूँ तुझे. By the way, 97 played, so he is going for your plan, and the h4 pawn we are hanging. I don't think rook h1 has. I mean, rook h1 maybe is the move. Like knight f5. Now you can go back, but king g6 coming up. Yeah, h5, knight d5. Maybe I can reroute this knight somehow. I don't know, to g6 again, attacking this pawn, forcing h5, then coming back. Like it's a long game, and black, yeah, keep trying. ये ऐसी पोजीशन है कि अगर ये दोनों का टाइम कम होता तो आई वुड से वाइट हैज़ अ वेरी लिटिल चांस ऑफ सर्वाइविंग दिस. बट बिकॉज यू हैव मोर टाइम
That gives Divya better chances of holding. But again, अगर वो 40 मिनट, I think she will use them for sure because she's not gonna make a mistake before that. और कोई इसमें और कुछ crazy हो नहीं सकता. But I think time pressure में time फिर से आएगा यहाँ पे time pressure, I feel at some point. Got it. They both will draw. What do you think? Carry Minati पूछ रहा है भाई सीधा. तो आपका बैच आपके कुछ स्कूल में था ना वो? मेरा हाँ मतलब आई थिंक टेक्निकली था वो लाइक स्कूल में था बट आई डिडंट नो ही इज इन माय स्कूल. तो आई डोंट नो कौन से बैच में था क्या था. लव यू बोथ. अरे वी लव यू टू कैरी भाई. आ जाओ भाई वॉचिंग लेके आ जाओ भाई. टू वाला सीन आज भी है क्या? हो सकता है भाई. वेट फॉर अनदर 1 hour क्योंकि उससे पहले टाइम प्रेशर तो नहीं आएगा. विदाउट एनी टाइम इश्यूज आई डोंट सी दैट वी आर लूजिंग दिस. Pragg Gukesh draw हुआ chat. We already know that. Bro, why North Indian states are lagging behind? भाई दोनों हम दिल्ली से हैं. दोनों के दोनों. कहाँ से लैग? टिकू भाई कोई गाना सुना दो. एक गाना है मेरे पास यार. एक दिल्ली वैली मूवी का बड़ा फेमस गाना है. एंड फिलहाल के लिए भाई हम लोग वेट कर रहे हैं 97 के बाद कि क्या करेंगी दिव्या यहाँ पे. या रुक H1 King F4 all possible moves. H5 नहीं खेलना मुझे यहाँ पे. बस H5 नहीं. मतलब मुझे वो मन में बात बैठ नहीं रही because if you play H5 that's too far from my pieces. जुदाई नहीं हजम होती साज भाई को मतलब बेसिक. सॉरी चैट हम रात के लग 12 रहा है बजे की तरफ बढ़ रहे हैं. समझ में आ गया विशी सर नहीं है चैट. रात के 12 बजे की तरफ हम जा रहे हैं सो वो इफेक्ट इज स्टार्टिंग सो आई अपोलोजाइज. How good is your memory in general? See, things that I want to remember that are important to me वो मुझे याद रहेंगी. But in general very bad, yes. जैसे नाम मुझे बिल्कुल याद नहीं रहते. मुझे भी याद नहीं रहता एक्चुअली यार नाम. फेसेस एंड नेम्स आई एम वेरी हॉरिबल एट देम. फेसेस आई एम ओके बट नेम्स में आई एम वेरी बैड. लाइक कोई मेरे को जैसे Names. पहले चेस टूर्नामेंट्स में लोग बोलते थे वो तूने उसका गेम देखा उसके साथ यू नो एंड आई वुड जस्ट बी क्लूलेस कि भाई आप कौन से गेम की बात कर रहे हो. जज भाई कल परसों की पेरेंट्स भाई कल तो रेस्ट डे है. कल आप आराम से फिर आप चिल कर सकते हैं. परसों मैच होंगे व्हिच वी विल शो सून भाई वंस द गेम्स आर फिनिश्ड. साले क्या आप सागर भाई से पहले जीएम बन जाओगे भाई. दोनों का ही मुश्किल है बट कोई करेगा तो सागर भाई करेंगे. वो तो उनके पास तो 2 नॉर्म भी है. सागर भाई के पास 2 GM नॉर्म्स हैं. हाँ. Really? I didn't know that. That's very cool. He got them around the time we met. I think 2016 में I think को मिले थे. Then he left. तो Jay Saldico, do you remember my name? Yes, I do remember your name. Of था course. ना मिस्टर बेव कुफानी. यही था ना नाम इनका शायद फायरम का नहीं. Connect the dots. But yes, no. In all seriousness, I do. I do remember the name. आराम से चिल कर सकते हो. मंडे है कल. अरे भाई स्ट्रीमर का क्या मंडे क्या संडे. हमारा सब बराबर है भाई. क्यों साज भाई. Exactly. आज भी तो है ना. Sunday. Most people are chilling, but you know. But yeah. नहीं आई थिंक द मेन थिंग इज लेकिन आई लव कि भाई मंडे संडे में कोई डिफरेंस नहीं है. दैट्स एक्चुअली ग्रेट टू बी ऑनेस्ट. तो बढ़िया ही है. एंड फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं दिव्या कैलकुलेटिंग. आई थिंक शी अंडरस्टैंड्स कि ऑब्जेक्टिवली मे बी देयर इज अ वे टू होल्ड दिस बट प्रैक्टिकली दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. So she's trying to think कि कोई easy way मिल जाए but I don't think it exists unfortunately. And Vaishali's opponent also not playing. Yeah, he's just calculating and seeing कुछ. Yeah.
साज भाई मेरे को 5 मिनट डिनर करके आता हूँ फिर यार। आई थिंक मुझे लगा गेम जल्दी Yeah, हो yeah, जाएगा, sure. एक बार कर लूंगा तो मैं बी बैक इन 5 मिनट्स। तो ये गेम ऑन है, ठीक है, मूव चलती रहेगी। Absolutely, no worries. What's up, chat? क्या हो रहा है? Why women top GM have low elo compared to top men GM? अरे, I think that's because there's less women grandmasters in the world. So it's just pure statistics at this point. इसलिए I'm surprised that Saj didn't say my name rhymes with Nalayak. It does, but मैं रोस्ट नहीं करता usually, you know. वो सिर्फ आप करते हो. Fedosiv has an accuracy of 99.6 with Kramne. भाई ये साहिल भाई का अच्छा, I just saw him. I just thought I saw something. Saj भाई ये नौदरबेक ने वैशाली what? I don't know this भाई. बढ़िया भाई, आप बताओ यार। पोजीशन डिस्कस तो कर सकते हैं। अगेन वी हैव 50 मिनट्स एंड 37 मिनट्स। दिव्या बहुत सोच रही है इस पोजीशन में। ऑफ कोर्स देर आर सम स्लाइट टैक्टिक्स पॉसिबल, जैसे नाइट F5 चेक देके H4 का पॉन उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो देर आर वेज टू डू इट। देर इज रुक H1, देर इज H5, देर इज किंग F4, ऑल ऑफ दीज मूव्स आर पॉसिबल। बट मेन चीज़ ये है कि H4 का पॉन यहाँ पे बचाना ज़रूरी है। एंड इफ यू प्ले H5 देन वो पॉन बहुत दूर चला जाएगा हमारे किंग से। एंड ऑल्सो इट्स ऑन अ लाइट स्क्वायर, मतलब ब्लैक का बिशप भी उसको अटैक कर सकता है। तो H5 आई वुड रियली अवॉइड प्लेइंग, उसका भी कोई नीड नहीं है। तो रुक H1, किंग F4, समथिंग लाइक दैट कीप्स द पोजिशन बैलेंस, कीप्स द पोजिशन इन चेक। वेदर दिस पोजिशन is a theoretically winning one, I would say yes, with absolute correct play. मुझे लगता है कि ब्लैक जीत सकता है ये पोजीशन। आई कैन सी इट्स ऑलरेडी -1.5, बट मुझे लगता है ऑन अ स्ट्रॉन्गर कंप्यूटर इट्स गोना बी मोर। Just a feeling, and practically I think this is hard, very hard for white to defend. तो स्पेशली बिकॉज वो जी पॉन चला गया इस पोजीशन से। अगर वो शी डिडंट प्ले H4, वो एफ जी एच रहता, तो मे बी शी वुड हैव एन ईजियर टाइम डिफेंडिंग everything here. But yeah, because of the pawns, I think she's gonna struggle for sure. What about Gukesh and Pragg's game? Bhai, they drew. It was a great game, but they drew. Thoda sa, maybe Pragg had some slight pull somewhere, but like in end mein jaake it was equal. There was no way to make progress for any of them. Gukesh just offered the draw and he accepted. Bhai, matlab rest day bhi hai kal, so it makes sense. Also, this is one of the reasons why Masters section mein, if you take a look, right now, 4 games already draw हो चुके हैं. And 7 में से 6 गेम आर स्टिल लुकिंग काइंड ऑफ इक्वलिश। एक गेम है सिर्फ फाबिका हु इज लुकिंग रियली गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीवन इज लुकिंग प्रीटी इक्वल। एंड होता है यार रेस्ट जैसे पहले यू वांट टू टेक अ ब्रेक, एंड या रेस्ट डे पे, ताकि मूड खराब ना हो, आई गेस। Arjun game status. Arjun was one of the people who actually drew. I'm not sure exactly what happened because Vishi sir was here and everything was happening so quickly. But there is a big possibility कि Arjun didn't realize कि वो 3-fold repetition था वहाँ पे. But उसके opponent ने claim किया and Arjun didn't immediately accept it as far as I could see. तो इमीडिएटली अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो प्रॉब्ली ही वाजंट श्योर कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट हिज अपोनेंट क्लेम्ड एंड इट वाज द राइट क्लेम एंड दे जस्ट वेंट इनटू अ ड्रॉ। ऑल्सो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अर्जुन हैड अ क्लियरली बेटर पोजीशन और एनीथिंग लाइक दैट। ड्रॉइश सी थी, सॉलिड सी ड्रॉ थी, बट अर्जुन के पास थोड़ा पुल था। वो मतलब इफ ही कुड ही वुड हैव प्लेड देयर। बट ठीक है भाई, ड्रॉ इज नॉट अ बैड रिजल्ट. Also, it stops the bleeding. Maybe after the rest day, Arjun will feel a bit better. Let's see what happens. What are Sahaj sir's future and endeavors? भाई ये तो मुझे खुद नहीं पता. But yeah, I'm thinking about playing some events. कुछ जगह पे मैंने लिखा भी है. I will announce it soon. But yeah, I do plan on playing some events in the future भाई. Vaishali games draw. Is that confirmed? I will just take a quick look. Yes, Vaishali game has drawn indeed, chat. So that is a great result, I would say, for Vaishali. Okay, she did have some chances after the opening, and she had that crazy rook sacrifice. But unfortunately, in time pressure, that advantage slipped away. It was also better for her opponent as well. But at the end, they just agreed to a draw. I think it's a decent result. Rook g1, knight f5, king h3 check, move the king, pawn h5.
देखो रुकजीवन अगर आपने खेला तो मैं आपको ऐसे नॉर्मल चेक तो नहीं दूंगा, मतलब आपको अलाउ तो नहीं करूंगा नाइट F5 चेक की। मे बी आई गो नाइट D5, क्योंकि मेरे पास ना आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड हियर, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग डायरेक्ट, मेरे पास बहुत टाइम है ब्लैक से। रिमेंबर चैट, यहाँ पे 50 मूव का जो रूल होता है वो एप्लीकेबल होगा इस पोजीशन में, बिकॉज ब्लैक कोई भी पॉन यहाँ पे टच नहीं करेगा एंड यू विल ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन द H4 पॉन एज मच एज पॉसिबल। So after rook g1, I have time. I can go knight d5. भाई king f4 नहीं आने देना, king h3 नहीं आने देना। Also मैं अपने king के लिए भी f6 का स्क्वायर खोल रहा हूँ ताकि king आगे बढ़े। That makes a lot of sense to me. हैज भाई आप भाई ऐसे सवाल का मैं जवाब यहाँ तो नहीं दे सकता। डोंट से यू आर प्लानिंग टू प्ले इन। हाँ यार, मेरा एक फ्रेंड है वो जिसके साथ मैं जाता हूँ खेलने, एंड इफ़ ही कम्स टू विजिट मी अगेन देन प्रोबेबली आई विल, बट विल सी यार। लेकिन वो टूर्नामेंट बहुत बढ़िया था। चेस में इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। Who's the best female chess player in history? I think that's a it's Judith Polgar, and actually she lives in Budapest. मेरे घर से 15 मिनट दूर। ओके सो रुक g1 तो नहीं, मे बी आई गो रुक h1 या आई गो किंग f4 आई फील इज द मोस्ट लॉजिकल यहाँ पे, क्योंकि मेरा किंग एक्टिव भी है एंड मैं रुक g1 चेक नेक्स्ट मूव में भी खेल सकता हूँ, रुक h1 भी खेल सकता हूँ। सो किंग f4 फील्स क्वाइट लॉजिकल टू मी अभी, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट्स गोना हैपन आफ्टर दिस। Maybe he goes knight g6 check, or maybe he finds a way to slowly improve again. Other than playing Wei, Gukesh has the entire bottom bit of the table. He's played अच्छा सबसे to play, whereas Nadirberg and Pragg will be paired with stronger opponents, so Gukesh has a good chance to win the tournament. Yes, but देखो performance सब कुछ नहीं होता. Of course performance matters, आपकी form matters, but at this level कोई भी player weak नहीं है. हर मैच में प्रॉब्लम्स होंगी एंड हर मैच में कुछ ना कुछ क्रेजी हो सकता है, बिकॉज दे आर ऑल एलिट प्लेयर्स। तो फॉर्म मैटर्स टू एन एक्सटेंड, बट लेकिन किसी को भी लाइटली नहीं लेना। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब इससे आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, आई वुडंट से दैट। दिल्ली में चेस का माहौल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। काफ़ी इवेंट्स होते हैं दिल्ली में, हर साल एक्चुअली देयर इज़ अ वेरी बिग इवेंट दैट यूज्ड टू हैपन। आई एम नॉट श्योर इस साल हुआ था कि नहीं, आई थिंक हुआ था एज फार एज आई कैन रिमेंबर, बट दिल्ली ओपन होता था, उसको पारसवनाथ ओपन कहते थे पहले। जनवरी में होता है वो हर साल, एंड इट्स अ ग्रेट इवेंट। इट्स वन ऑफ द OG इवेंट्स आई वुड से ऑफ चेस, इन ऑफ इंडियन चेस। गुकेश रिजल्ट, गुकेश का ड्रॉ हुआ ही अगेंस्ट प्रग। बेसिकली सारे इंडियन प्लेयर्स का अभी तक ड्रॉ हुआ है। ओनली एंड वैशाली इज ऑल्सो ड्रॉन, ओनली दिव्या इज प्लेइंग, एंड दिव्या को मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे से बचाना होगा, अदरवाइज इट डज नॉट लुक वेरी प्रॉमिसिंग। भाई अर्जुन का गेम का क्या रिजल्ट? अर्जुन का भी ड्रॉ हुआ भाई। दिल्ली और बुडापेस्ट, यार ऐसे सवाल नहीं पूछते स्ट्रीम में। अगर आप एयर क्वालिटी की बात करो तो बुडापेस्ट, खाने की बात करो तो दिल्ली। Don't you think Gokesh's opponent would be in pressure of facing world champions? That would give him an edge. Yes, of course. We are talking about the world champion effect, जो मतलब बहुत important चीज़ है चेस में। Also, we are seeing it from time to time. छोटे मोटे snippets दिख रहे हैं को world champion के, but where the opponent is more interested. But yeah, these players, majority of these guys are very used to, um, playing against elite players all the time. तो उतना effect यहाँ पे नहीं होगा, I feel. Where are you from in India? I'm from Delhi, भाई, born and raised. बुडापेस्ट में लोग बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। बड़ी क्रिएटिव वाली ऑल्सो। और श्रेय क्यों मेरे को कैंसिल कराना चाहता तू? सहज भाई, नॉर्वे वाला आर्मागेडन फॉर्मेट बेस्ट रहेगा इन क्लासिकल, ड्रॉ सीम्स बोरिंग। हाँ, दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग फॉर्मेट आई हैव टू से, क्योंकि अगर कहीं पे भी अगर ड्रॉ होता है तो दे प्ले एन आर्मागेडन, वहाँ पे एक रिजल्ट आ जाता है। पर उसमें ये भी एक इंसेंटिव है ना कि अगर आप क्लासिकल में जीत गए तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आप आर्मागेडन में जीते तो आपको कम पॉइंट्स मिलते हैं, तो क्लासिकल में भी जीतने का ज़्यादा इंसेंटिव है। तो आई रियली लाइक दैट।
format. So Saj bhai, you're telling me कि मैं डिनर भी करके आ गया और अभी तक एक भी मूव नहीं आई है. I Nah. think that guarantees us कि भाई maybe this is not the ideal time control. You might be right, bhai. You might be right. How often you come to Delhi? Well, last time I was in Delhi in December or November में था मैं in Delhi. It was तब AQI एकदम best well I must say worst था उस मोमेंट में. भाई आपके आते ही दिव्या ने खेल दिया. साहिल भाई यहीं बैठो. आपके आते ही चाल चल दी उसने. रुक H1 on the board. मेरे आते ही, अरे nice. So she does not commit to H5 clearly, agreeing with Sahaj, and दिल्ली वालों के लिए नॉर्मल हुआ क्या? नॉर्मल होगा दिल्ली वालों के लिए? नहीं मैंने बोला कुछ तो वो बोल रहे थे दिल्ली और बुडापेस्ट. मैंने कहा वैसे सवाल नहीं करते. बिकॉज फिर मैंने बोला AQI होगा तो फिर तो मैं बुडापेस्ट ही चूज़ करूंगा. बट खाने की भाई बात करो तो फिर मैं दिल्ली चूज़ करूंगा. मैंने कल ही कहा था ना, आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में कि दिल्ली इज बेस्ट एयर ऑफ 2025. एक क्यू आया था 201. आई वाज लाइक भाई क्या बोला, हमारा रेफरेंस पॉइंट ही चेंज हो चुका है भाई. वी थिंक लाइक 200 इज गुड एयर. हम्म. सहज बैंगलोर. भाई साल, हाँ बोलो बोलो भाई. वही पढ़ रहा था. बेंगलोर बेलागवी में एक बिग टूर्नामेंट होना चाहिए. अरे हुआ था एक्चुअली. चेस माइन हुआ था ना एक बार 2017 में. रैपिड बैंगलोर में तो था वो. भाई 17 में तो पैदा भी नहीं हुआ था फायराम, तब कहाँ खेला होगा? 2017 में हुआ था एक्चुअली. वहाँ पे मेरे को याद है क्योंकि मैं वहाँ पे अरविंद से हारा था. वाज लाइक 20 मतलब उसका रेटिंग मतलब उसके लेवल क्लासिकल और रैपिड में उसकी उसकी रेटिंग सेम नहीं थी. एंड मैं प्रग से आ रहा था आई थिंक. आई लॉस्ट अगेंस्ट प्रग एंड प्रग वाज लाइक सम 1900 2000 रेटेड समथिंग लाइक दैट रैपिड में. एंड आई वाज थिंकिंग क्लासिकल में ऑलरेडी ही वाज मच हायर. बट रैपिड में ही वाज वो था ना पहले कि एक डिफरेंस होता है विद द डिफरेंस रेटिंग. एंड इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग. ट्रू ट्रू ट्रू. एंड बाय द वे, घुमाते हुए पीछे रुकेश नाइट E8 खेला है. दोनों नाइट पीछे जाते हुए. यार लाइफ में आगे बढ़ना सुना था, ये पीछे क्यों जा रहे हैं? एब्सोल्युटली भाई. मैं पीछे जाने का पॉइंट ये है सिंपल कि देखो अगेन मेरे पास 50 चालें हैं. ठीक है. थैंक्स टू यू साहिल भाई मेरे को भी वो पॉन वाला रूल समझ आ गया. नहीं तो मैं फिर ऐसा वही बोलता कि मैं अगर ये सेम मटेरियल रहा तो यहाँ पे आप ड्रॉ क्लेम कर सकते हो. हम नहीं कर सकते चैट. अगर ब्लैक ने H5 खेल दे तो द मूव विल रिसेट अगेन. तो 50 मूव का रूल यहाँ पे अप्लाई होता है बिकॉज यहाँ पे दोनों के पीसेस या पॉइंट्स टच नहीं होंगे. तो ब्लैक के पास बहुत टाइम है. तो ही गोज नाइट D8 नाइट D6 नाइट F5 किंग F6. आराम आराम से खेलो. कोई जल्दी नहीं है इस पोजीशन में. कोई जल्दी नहीं है. बाय द वे, फायराम इज मैरिड. भाई आई डिडंट नो दैट. You ऑफ knew that, कोर्स Sahaj? फायराम इज ओल्डर देन मी. यस. How old is Firearm? इज इट 30 समथिंग. आई एम नॉट श्योर. He's my age, but I didn't know he was married. Oh, Firearm आई न्यू दैट. भाई. आई न्यू दैट. भाई तुम बहुत टाइम स्पेंड करते हो रे फालतू के जोक्स निकालने के लिए भाई. If I was married, मैं भी चिल कर रहा था भाई. बिशप G4 ऑन द बोर्ड. अगर बिशप ट्रेड कर लिया तो आई विल से वी आर वन स्टेप क्लोजर टू इक्वालिटी. वन स्टेप क्लोजर. दिव्या बहुत कंफर्टेबल फील होगी बिकॉज अगेन माइनर पीसेस का जो वर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है वो होता है दो नाइट्स. एक बिशप चाहिए रहता है हमेशा. तो आई थिंक ही विल प्ले नाइट F5 चेक टू नॉट अलाउ दैट एंड देन ब्रिंग द अदर नाइट टू D6. तो बहुत टाइम है ब्लैक के पास. यहाँ पे आराम से खेल सकते हैं. Yeah, yeah. So 49 minutes. To, by the way, Vaishali did draw her game, yeah. So they did a kind of repeat moves, rook A1, rook E1. So that was another result, and only one game remaining, chat, and that is this one, Divya. I don't spend too much time to create the joke. I am the joke. Badhiya bhai. Self-realization is very important, Sahaj. Understanding your weaknesses and your super weaknesses is very important for Firearm. वाह क्या बात है. ओके सो यहीं पे ही बैठते हैं अब. तो बिशप G4 के बाद नाइट F5 चाहिए खेलना है. साहिल भाई ओके चांसेस प्रिडिक्शन टाइम. Is it more likely that we will see a bishop and knight की mate,
या इज इट मोर लाइकली वी विल सी 2 knights versus 1 pawn? आई थिंक इट इज मोर लाइकली कि ओपोनेंट कहेगा आई थिंक आज संडे है थोड़ा चिल करते हैं, तो वो ड्रॉ ऑफ कर देगा भाई. एक्चुअली मैं चैट से पूछता हूँ, ठीक है चैट, चलो आपको 3 ऑप्शंस दिए मैंने, ठीक है. ऑप्शन ए, वी विल सी अ बिशप एंड नाइट वाला चेकमेट यहाँ पे, या उसका वो थ्योरी. ऑप्शन बी, 2 knights versus a pawn. या ऑप्शन सी, साहिल भाई सेइंग कि ये टाइम बहुत ज्यादा है यहाँ पे दोनों प्लेयर्स के पास. नाइस. विच नाइस वन, ऑप्शन नाइस. वुड यू चूज यहाँ पे चैट? आई थिंक मल्टीपल चॉइस से लग रहा है मुझे साथ भाई. Sahil, do you think watching Super Giants play improves your understanding, which is somehow same for Sahaj? I think, of course, like, मतलब, and looking at their games, looking at what plans they have. जैसे विशिष्ट सर ने बोला नाइट D6. अब अगर नाइट बोर्ड पे होगा भी नहीं तब भी मैं नाइट D6 प्लान तो देख ही रहूंगा ना भाई हर पोजीशन में. So it definitely helps you. चैट लिख रही है ए भाई, मतलब मिक्स्ड है, वैसे मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं चैट के. नहीं, सी भी कह रहे हैं एक्चुअली, ऐसी बात नहीं है, सी डी भी भी कह कह रहे हैं लोग भाई. रहे हैं. क्या बात मैं क्विट करना चाहूंगा. बिल्कुल है. आपके ऊपर है भाई. आप घर would you लेके would you जाते हैं. would you like 50-50? 50-50 में मैं ऑप्शन ए और बी हटा देता हूँ. इसमें एक ही सही आंसर है. भाई ड्रॉ कर लो, इंडिपेंडेंस डे के मजे लो भाई. खत्म हो गया. कितने मजे लोगे भाई तुम 45 मिनट में? नहीं, मेरा तो है ना अभी भी. हाँ, साज भाई के मजे है भाई. साज भाई के यहाँ पे भी कितने 7 बज रहे हैं. हाँ, 6:45. ओ माय गॉड भाई. भाई क्या मस्त टाइम है भाई. अभी पौने तो दिन 7. शुरू हुआ है, अभी तो दिन शुरू हुआ है, क्या बात कर रहे हो आप? एंड फिलहाल के लिए अभी भी दिव्या स्टिल कैलकुलेटिंग. आई थिंक शी कैन जस्ट वेट. सो देयर इज नो प्रेशर नाउ. नाइट F5 इज नॉट पॉसिबल. ओके, शी इज ट्राइंग टू रिपीट. डिसेंट ट्राई, नॉट बैड. रेपिटेशन तो नहीं होगा यहाँ पे, जीरो चांस ऑफ दैट, जीरो चांस. ओके, बिशप G4 बैक मे बी देन. हाँ, फिर वो नाइट D6, नाइट F5, समथिंग लाइक दैट. बट यू सी वो बढ़ा टाइम, देंगे. वो भी आराम आराम से खेल रहा है. रुकी 1 खेल सकती है आई थिंक दिव्या. आई थिंक देयर इज नाइट D6 तब भी आ ही रहा है. नाइट D6 खेल दो ना सीधा. Yeah. Rook E1, knight D6, and you cannot take this because of knight F5. Check, winning the rook. यार मेरे को 2 नाइट वर्सेस पॉन वाला देखना है. दैट वुड बी इनसेन. देखो देखो घर पे देखो आराम से, अलग से अलग से एनालाइज करो भाई. कोई भाई जल्दी. एक्चुअली आई हैव स्पेंट क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम ऑन दैट पोजीशन, एंड आज तक मेरे बोर्ड पे आई नहीं है कभी भी. आई वुड लव टू सी दैट एट समवेयर. एक बार देखा था, हमने देखा था साथ में, बट इट वाज लाइक सम रैपिड और ब्लिट्स इवेंट. आई थिंक वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स में किसी का आया था 2 नाइट्स वर्सेस पॉन. Yeah. नहीं, Married guys watching था ना, someone shake their. Huh? फिरोजा वर्सेस मैग्नस में आया था ना, सीसीटी 2 नाइट्स वर्सेस पॉन. हाँ, फिरोजा मैग्नस में आया था I हाँ, think. शायद. वहाँ देखा था हमने, बट वो ब्लिट्स था. तो यहाँ पे मुझे क्लासिकल में देखना है, मजा आएगा उसमें. 1.5 lakhs membership giveaway. भाई मॉड गिव कर सकते हैं 1.5 lakhs पे. सोच रहा हूँ एक मॉड बना लेते हैं. फायर आर्म को कब तक इतनी पावर मिलेगी, तो एक बंदे को मॉड बना लेंगे. मतलब किसी को तो रिप्लेस करना है ना फायर आर्म. बट या हाँ. भाई लव फ्रॉम Bishop हरियाणा. G4 back. आसपास बेस्ट कोचिंग कहाँ से लें सर? यार आप ऑनलाइन ढूंढो, आजकल तो ऑनलाइन कोचेस बहुत मिल जाएंगे आपको. ऑनलाइन ढूंढो, वो बेस्ट है मेरे हिसाब से. बट अगर आपको 1-on-1 चाहिए तो हरियाणा में मैं ऐसे किसी को जानता नहीं हूँ. बट या ऑनलाइन इज़ द बेस्ट मेरे हिसाब से. ओ, हरियाणा में आपका मैं था रहता ना, हूँ भाई. आपका कोच था ना हरियाणा से. हाँ, but he was in Faridabad, so Haryana is huge. तो I don't know. मास्टर्स का गेम चलाओ भाई. भाई दही हो गया है उनकी गेम्स का भाई. इट्स ओवर. इंडियन गेम्स आर ओवर. एंड बस फाबी का बचा है अभी. आई एम इरिप्लेसेबल. अभी यहाँ पे एक बढ़िया जोक था मेरे पास, लेकिन मैं बोल नहीं सकता. तो फिलहाल के लिए लुकिंग एट द गेम ऑफ दिव्या. मैं पता है, मैं भी ये बहुत सोच रहा हूँ यहाँ पे. ये चीज़ मैं यहाँ नहीं बोल सकता. आज कुछ देयर हैव बीन 3-4 इंस्टेंसेस लाइक दैट. मैं अप्लाई कर सकता हूँ मॉड की वैकेंसी के लिए. सैलरी सैलरी कुछ नहीं है भाई. लाइक इट्स नॉट अ स्ट्रेस. बस तुम्हें हमारी 10 बार दिन में तारीफ करनी है, और कुछ सैलरी नहीं लेंगे हम तुम्हें मॉड बनाने की.
पैसे If मिलेंगे Noddy मॉड बनने के, wins, शर्म शर्म। क्या करो साथ में? if Noddy wins, he will be the sole leader. मैंने इसको I've never heard someone call him that, but yeah, he would be. But I think वो game equalish सा ही है. हाँ ये तो ड्रॉ ही है। तो इट draw है. कैन बी विनिंग, आई हैव सीन No, डिंगलन no. लूज दिस, बट एक पॉन के साथ, A2 वाले पॉन के साथ. नहीं सिमिलर था, लाइक ही हैड 2 पॉन्स, याद है ओलंपियाड में ही लॉस्ट अगेंस्ट समबडी, ऐसी पोजीशन थी, ये पॉन यहाँ था, समथिंग आई डोंट नो। Hmm. डिंग लॉस्ट दैट Could be. गेम अगेंस्ट समबडी, आई फॉरगॉट। 2 पॉन वर्सेस 1 पॉन। Hmm. बट स्टिल आई थिंक दिस शुड बी अ ड्रॉ, तो नॉट वरीड देयर। ओके, नाइट कम्स टू d6. Please don't ask coach information to Sahaj Grover. It's almost been a year since I asked for a good coach in Bangalore, but he hasn't answered till now. Wait, didn't I get Srinath on my Discord to answer that question for you? I'm pretty sure we had that मेरे Discord पे पड़ी हुई है वो. मतलब एक तो हेल्प भी करो, मतलब मेरे को नहीं पता था तो मैंने श्रीनाथ से पूछा और उससे मैंने जवाब दिलवाया एंड स्टिल ये मॉड साहब ना मतलब हाँ मॉड चैलेंज कर रहे थे यार, करो ना यार, इससे याद आया फायर को देखते ही. हाँ 1500 लाइक पे करेंगे भाई, जैसे होंगे। लेकॉन्गलियम, थैंक यू, मैं वही दिमाग से था, लेकॉन्गलियम एक्चुअली वही दिमाग में नाम नहीं आ रहा था, मेरे को शक्ल याद थी उसकी, सो उसी से ही लॉस्ट, या डिंग निरन, नाउ आई रिमेंबर। गुकेश का ड्रॉ हुआ, प्रग का ड्रॉ हुआ, हरी का ड्रॉ हुआ, लियोन का ड्रॉ हुआ, अर्जुन का ड्रॉ हुआ, एंड अभी वैशाली का ड्रॉ हुआ, एंड ओनली दिव्या's गेम इज रिमेनिंग। Yep, Okay, so Rookie Aro looking won. at Divya's game. Can you go full screen एक बार यार प्लीज? क्यूट मोमेंट था वो। हाँ सच है, बोलो। All hard work of Arjun in 1 year gets spoiled in a span of a week. -30 येलो सहज भाई आपका कोई इतना ड्रॉप हुआ है इन वन टूर्नामेंट? एक्चुअली हुआ है. मेरा लास्ट इवेंट जो खेला था मैं, लास्ट इवेंट जो मैं खेला था, आई वॉज रियली सिक. मेरे को कुछ डाउट्स भी थे कि इट्स नॉट लाइक नॉर्मल वाला सिक, एंड आई couldn't विदड्रॉ क्योंकि वो क्लोज जीएम वाला इवेंट होता है एंड विदाउट अ जीएम देर इज़ नो टूर्नामेंट. सो आई हैड टू प्ले एंड आई लॉस्ट अराउंड 30 पॉइंट्स इन माई लास्ट इवेंट बिकॉज ऑफ दैट. तभी 2467 हुआ, 68 और वट एवर. 30 से ज़्यादा ही था एक्चुअली, 35 था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. 5 गेम लगातार हारा था मैं वहाँ पे. होता है ऐसे. अगर आपका के फैक्टर 40 था तो आप यू वुड लूज लाइक 140 पॉइंट्स, नो? नहीं, के फैक्टर 40 होता तो फिर मेरी रेटिंग 2500 भी ना होती ना साहिल भाई. अगर 20 भी 2500 की होती जगह तो 2500 यू वुड की हैव जगह फिर लॉस्ट। 2600 2700 होती मेरी रेटिंग फिर. अगर 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 जब होती गिर रही है कि, तब के 40 के बारे में बात हो रही है, जब गेन होती नहीं है यार तब नहीं मतलब होती. हाइपोथेटिकल्स, इफ इट वाज 40 यू वुड बी लाइक 120 पॉइंट्स, यस. 2350 लेवी से कम रेटिंग आती यार। 1.5 के लिए कितने लाइक्स बच्चे हैं? बच्चे 2 ही अच्छे भाई। वी आर एंटरिंग दैट फेज भाई. भाई फेज 2 12 शुरू बजने हो वाले गया हैं, है. देखो इट्स नॉट फेज माय 2 फॉल्ट। शुरू हो गया है चैट. देखो भाई 12 बजने वाले हैं, इट्स नॉट माय फॉल्ट। एंड किंग नाइट G6, प्यादे पे नजर, चेक पे नजर, maybe just kind of रुके 5, रुके 6, रुके 4, बस ऐसे ही थोड़ा ड्रामा करने का इधर उधर। व्हाट डू यू थिंक? हाँ मतलब अभी तो दोनों प्लेयर्स चिल करेंगे आराम से भाई. 2 nights वर्सेस पॉन वाली पोजीशन आई स्टिल थिंक इज कैन हैपन. साहब बिहार बिहार में कोई चेस टूर्नामेंट होते हैं क्या? नॉट दैट आई नो ऑफ. नॉट दैट आई नो ऑफ. साहिल भाई आपको पता होगा ना, ये तो आप तो इंडिया में रहते भी इतना. भाई तुम, मुझे बिहार का कैसे पता होगा भाई? नहीं वो मतलब अनाउंस वगैरह होते हैं. आई मीन जब मैं इंडिया में रहता था तो मेरे को यूजुअली इनवाइट्स आते थे, कि वो ईमेल आ जाता कि ये टूर्नामेंट हो रहा है, यहाँ जाओ, वो सब करके. आई थॉट अच्छा। वो सबको भेजते हैं, वो सारे चेस प्लेयर्स को भेजते थे इस तरह के. अच्छा भी मेरे को भी गोवा का भी आया था, बट लेकिन तो आई थॉट बिकॉज ऑफ इंडिया में रह रहे हो यू वुड नो दीज थिंग्स. नहीं नहीं, मेरे को तो अपना कुछ यहाँ का नहीं पता भाई। यहाँ पे हो रहा है पास में हो रहा है एक रैपिड टूर्नामेंट, आई थिंक इट्स ऑन
8th और 9th कुछ, but we will have a stream that day, तो I don't think कि खेलने का मौका है. दिव्या कैन इजीली डिफेंड इफ ही मेक्स ब्लंडर श्योरली. यहाँ पर इस पोजीशन में ब्लंडर करना इजी नहीं है बिल्कुल भी. साहब चैट में देखो यथर से यथर चल रहा है. अरे भाई चलने दो भाई. डॉक्टर जेकिल मिस्टर हाइड वाली भी चीजें होनी चाहिए. ये एक अपना नाम यथर 2 रख लो ना, क्योंकि अब हमें फिर क्लियरली समझ आता है कौन कौन है. Sahaj Grover, you are a GM, so you get invite. But Sahil is cool. Sahil is cool. क्या भाई? इनवाइट साहिल भाई को डेफिनेटली आएंगे, जस्ट सो यू नो. 100%. भाई भाई मुझे मैं सोचता हूँ कि यार कभी खेलूंगा तो भाई कहूंगा भाई वीडियो बना दूंगा आपके लिए भाई. मुझे एग्जैक्ट, खेलने दो. मतलब नहीं, जस्ट बाय योर प्रेजेंस आई थिंक यू विल गेट इनवाइट्स फॉर श्योर. यू विल. अगर आप मतलब इफ यू वर यू नो वांटिंग टू प्ले दिस, मतलब आप खेल नहीं रहे ना उतना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट अगर आप खेलोगे तो डेफिनेटली मिलेंगे आपको इनवाइट्स फॉर श्योर. थैंक्स भाई दिल रखने के लिए. नहीं, आई मीन इट. 100. यार आपके आने से लोग, पीपल विल बी मोर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग द इवेंट ऑल्सो, नो. हाँ, रोस्टिंग द इवेंट. पीपल विल बी इंटरेस्टेड. आप सोचो ना, चेस में मतलब एक ओपन टूर्नामेंट में इंडिया में क्या मतलब होंगे, कोई कम से कम 6-7 जीएम्स होंगे. कितने एनएम्स होंगे ये सोचो. ये तो है भाई. एनएम तो रेयर है भाई. मैं तो कहता हूँ भाई एनएम को तो लिटरली यार लाइक जीएम से ज्यादा कंडीशन मिलनी चाहिए भाई. ये तो है, जीएम ज्यादा है भाई दुनिया में, तो आई एग्री. एक बार विशी सर से बुलवा देना, मैं मान जाऊंगा. भाई विजय सर तो सिर्फ यही पूछूंगा, सर सो व्हाट शुड वी डू हियर. आई थिंक या. बहुत सीरियस रहता हूँ यार. राकेश भाई ने मुझे इतनी मेल में सीसी कर दिया है. कुछ पता चला आपका वो जो, कैन यू स्टिल रिवील या नहीं? नहीं यार, सीन था. टू रिस्की रहने दो यार. टू रिस्की. टूरिस्ट, अच्छा. बाद में बताता हूँ. फिलहाल के लिए साल भाई आइडिया तो आप लग भी गया शर्म. मुझे. आइडिया तो लग गया, किसी ने चैट में भी मेंशन किया था वो. अच्छा, मुझे पता नहीं है क्या देखा चैट. साल भाई आप भी शर्म कर लो थोड़ा सा. शर्म क्यों करनी है भाई? ऐसा क्या कर दिया मैंने? बाय द वे, नाइट जिसे अभी भी सोच रही है दिव्या, 22 मिनट है उसके पास. शी इज थिंकिंग अबाउट मे कौन सा डिफेंस बेस्ट है यहाँ पे. नाइट F4 में भी नहीं अलाउ करो. दैट्स व्हाई रुक A4 फील्स लाइक अ नेचुरल मूव. बट यार मतलब जल्दी खेलो यहाँ पे, क्योंकि टाइम प्रेशर आएगा तो फिर गलती करने के चांसेस बढ़ जाएंगे बहुत. बीएम ग्रे एनएम भाई, वो तो है ही भाई. बीएम तो दुनिया में एक है ना, वो डिफरेंस है. एनएम शायद इंडिया में एक होगा, या दो होंगे, या तीन होंगे. हेलो साहिल भाई एंड साज भाई, हाउ आर यू? वी आर ऑसम. ह्यूमन जी, आप हुनान जी, आप कैसे हैं? माय नेक्स्ट टूर्नामेंट कब है? नॉर्वे चेस? नहीं नहीं, नॉर्वे चेस तो नहीं, फ्री स्टाइल होगा ना. दैट्स द हाँ, नेक्स्ट वन. ये खत्म होगा 2 फेब को चैट, एंड वो स्टार्ट होगा 7 फेब को. सो 4 दिन का ही गैप है. उसमें जिसको डेट पे जाना है, जिसको स्कूल के पेपर खत्म करना है, सब कर लेना. 7 फेब से फिर से चालू होगा भाई. 7 से कब तक है? आई थिंक 14 तक वैलेंटाइंस डे को हाँ खत्म होगा. मतलब सो वैलेंटाइंस डे भी मतलब यहीं तो पे ही. वैलेंटाइंस डे को तो क्लियरली तुम सब तो फ्री हो गए. दैट्स प्रीटी क्लियर टू मी. तो 14 तक ही है भाई पूरा. क्या मतलब न्यू ईयर्स भी आपके साथ सेलिब्रेट, वैलेंटाइंस डे भी, मतलब ये तो मतलब रिपब्लिक डे भी. भाई हम गलत फील्ड में आ गए भाई. हर चीज में यार ये तो हो गया. ईयर गैम्बिट नाउ मतलब नहीं भाई. किस यहाँ बात पर के लिए हिलाना है भाई? मतलब ऐसे हवा में थोड़ी ना होती है ईयर गैम्बिट, ऐसे नहीं होती. Do you think they should add a Super GM title in the official books? No, I don't think so. It will make sense. How do you decide? I think सत्ता इस out of the blue नहीं कर सकते. देन ऑल्सो इट बिकम्स अ क्वेश्चन, इज इट 2700 करंट या 2700 जिसने भी कभी भी टच करी अपनी लाइफ में. हाँ. And बहुत सारे लोग सुपर जीएम बन जाएंगे फिर सडनली, तो इट्स लाइक.
Is Divya losing here? So I think theoretically, I would say so. Yes, I would say this should be losing. And practically, I think, I mean, theory से अगर draw होगा भी ना तो बहुत crazy सा draw होगा, क्योंकि the one very important thing here is that कि black का bishop right color वाला है, तो bishop on h1 and the pawn on h6, that's the right color that really improves her opponent's chances to win the game. ये अगर dark bishop होता, हमारा भी dark bishop होता, तो probably it would have been a very different story. लास्ट टूर्नामेंट कौन सा खेला सालवे? आई थिंक माय लास्ट टूर्नामेंट वाज इन, आई थिंक वाज अ रैपिड नेशनल रैपिड एंड ब्लिट्स इन 2022. तब से आई हैव What, नॉट प्लेड इन 23 अ 24 में कुछ खेला ही नहीं आपने? नहीं, 23 में कुछ नहीं खेला. 24 में मैंने एक टूर्नामेंट खेला था चेसकॉम के मीटअप पे ही, जहां मैग्नस खेला था भाई. No. So that was the only event I've played in like since 2022, I think April or something like that. 3 साल होने वाले भाई. Damn, 3 साल होने वाले भाई. That would be crazy. भाई 3 साल चेसकॉम तो बहुत है, हो गया खेलो यार कुछ. चेसकॉम मीटअप मस्त होता है बाय द वे. चैट बहुत से होता है भाई. It was crazy, like कार्लसन से खेलने को मिला इस बार. It was complete surprise. तो बहुत सही होता है भाई चेसकॉम मीटअप. मेरा तो पहला ही था. कोई नहीं, आपको जब अनीशा जी क्या हो रहा है आज? आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था. अनीशा से एक्सपेक्टेड था भाई, और किससे एक्सपेक्ट करोगे तुम? अनीशा जी मतलब ऐसे यार, गुड पॉइंट. Okay, we have 18 And minutes left. and they were still thinking. I think, Saj bhai, what is I'm a bit worried ki what is there to think, because there's not much you can plan here for unless you're looking for a clear solution which solves the problem instantly. It's more about just defending for the next 1 hour. Yeah, it's just kind of doing that. So if that's the case, like if you spend all your time, you will probably blunder in the future. So I don't know. Probably Divya is looking for some safe way of, making it a draw, but वो कोई तरीका मिल नहीं रहा अभी. वही तो, वो तरीका है ही नहीं. एंड नाउ द प्रॉब्लम इज कि भाई यू आर आल्सो लो ऑन क्लॉक एंड यू विल लाइकली मेक अ मिस्टेक, बिकॉज यू सेड इट यार, यू नीड द क्लॉक, you need the time on the clock to hold this game, because practically it's very difficult. साथ में हमारे भी कमेंट्स पढ़ लो. विशाद जी कह रहे हैं, पढ़ेंगे पढ़ेंगे भाई. ना, आई वाज लुकिंग बट आपको मैसेज दिखा नहीं मुझे. भाई लिटरली आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस. हाँ भाई तनीषा, पता है रे. इतनी सारी करतूतें पता है. Back to chess, absolutely. Back to chess, but there's not much of chess happening, to be honest. That's the problem. वो तब भी सोच ही रही है. आई थिंक एक हर मूव के साथ साथ द एडवांटेज जस्ट कीप्स ग्रोइंग. इवेंचुअली ही विल जस्ट टेक द h4 का pawn. या बिशप एंड नाइट एंडिंग भी आ सकते. कुछ क्रेजी ड्रॉ होगा एज आई सेड, नहीं तो नहीं. पीछे कारुआना भी खेल रहा है. जस्ट वांट टू चेक कि like is there something happening in that game or No, क्या सीन है. draw. Caruana is Draw. completely winning apparently. Wow. It's an exchange up. So yeah. So he will also gain half a point there. Cameron also not having the best of events. Wait, Tanisha कौन है? अब से तनीषा बुलाते हैं उनको. तनीषा किसने बोला कि Didn't you play annual Green Pawn Showdown Blitz in November? भाई वही तो है ना, चेसकॉम का मीटअप का ब्लिट्स, वही तो कह रहा हूँ. अच्छा हाँ, That's what ग्रीन it's पॉन named. chess.com का ही तो लोगो है वो. That makes sense. हाँ, so that's the तो event. टाइटल मैंने ट्यूसडे थोड़ी भी नहीं खेला आपने अभी? टाइटल ट्यूसडे तो खेला है, but that doesn't count as rated ना over the board event. अच्छा, I just said तनीषा क्या? Oh, sorry, उसमें sorry, टी नहीं, वो टी साइलेंट है. Sorry यार तनीषा जी, that's not what I meant. एक बार रिजल्ट्स बता दो. कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट हुआ और बहुत लोग देखने आए, सबको मजा आया, सबने नाच गाना किया भाई. एंड साथ साथ भाई बाकी चेस गेम में सारी ड्रॉ हुई आज.
can't believe Vishi मेरा sir भी Coldplay की concert में गए थे. That was and विदित का टेक्स्ट मस्त था भाई, after like where I am here, where are you, भाई मस्त था. By the way, while we were switching cameras, Divya just shook her head like this. So, oh, she played H5, Sahaj. The move you were like, कुछ भी हो जाए नहीं खेलने का. She plays H5. I think the bar also takes a dip. Oh, this is not a good sign. Yeah, अब वो H5 का pawn, I think it will go away very soon. It's too far away. और वो light square पे भी है. ये दोनों तनीषा के कमेंट्स पढ़ रहे हैं. हम तो सबके कमेंट्स पढ़ रहे हैं भाई. तुम भी अपना नाम तनीषा रख दो, शायद पढ़ ले तुम्हारे. Fabi match, please. Fabi game तो completely winning है. It's just an exchange up and doesn't really change much for us. 1.5x होगा भाई, होगा. मॉड चैलेंज करेंगे, अभी हुआ नहीं है. साहिल्स लास्ट क्लासिकल टूर्नामेंट नेशनल एमेचर चेस. हाँ भाई, वो मनहूस टूर्नामेंट जो मैं मजे मजे में उठ के चला गया था. मैं ना जयपुर में वीडियो रिकॉर्ड करने गया था, ठीक है. और मैंने कहा कि यार नेशनल एमेचर है, खेल लेता हूँ 2 गेम. एक दिन खेल लेता हूँ, एक दिन खेला, गई गई 15 पॉइंट, तभी 2180 रह गया. 2200 था अच्छा खासा. फालतू में खेल दिया भाई वो मनहूस टूर्नामेंट. अरे दैट्स सैड. मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था. लाइक आई वाज प्लेइंग, दिस वाज इन 2022. आई वाज प्लेइंग दुबई. अब दुबई था कि अबू धाबी था, आई कांट रिमेंबर, बट वन ऑफ दोज प्लेसेस. एंड मतलब टूर्नामेंट के बीच में रेस्ट डे चल रहा था, ठीक है. और तो रेस्ट डे में उन्होंने ब्लिट्स ऑर्गेनाइज किया. एंड मेरी उस रेस्ट डे के बीच में ना, आई हैड सम 8 hours ऑफ कोचिंग और समथिंग. एंड ब्लिट्स कुछ तो शाम के 5-6 बजे शुरू हो रहा था. तो मैंने एंड एंड में बोला चल यार खेल ही लेता हूँ. मतलब मेरी क्लास थोड़ी जल्दी खत्म हो गई. आफ्टर लाइक 7.5 hours एट फिनिश समथिंग, आई वाज वेरी टायर्ड. मैं कहा चल यार खेल लेता हूँ, खेलने में क्या जाता है. खेला वहाँ पे 100 पॉइंट गए मेरे ब्लिट्स के. 100 पॉइंट. भाई ब्लिट्स में तो 20 का है ना, तो ये और कर सकता नहीं हूँ. नहीं, हाँ पहले 20 था, 20 भी नहीं है, अब 10 हो गया वो. हाँ. हाँ वो मेरे गिरने के टाइम पे 20 था, बट अब गेन करने के टाइम पे 10 हो गया. तो दैट वाज अ बिट Me अनोइंग. also, I think why I say I hate that tournament is not because the tournament खराब था, is because कि I played a guy in the second round. I won the first game. Second round खेला, एक 1800 था कोई शायद, I think 1850 या 1900 कुछ था. I was like आराम से पेल दूंगा. बंदे ने हरा दिया बुरी तरह भाई. And he won the event. He won like 8 games in a row, 7 games in a row and won the tournament. I was like under 2300 tournament है भाई. 1800 1900 कैसे जीत रहा है. So I was like कि भाई इंडिया में खेलने का पॉइंट ही नहीं है. I literally withdrew after that round and वहाँ जाके वीडियो रिकॉर्ड कर ली. तो इंडिया में नहीं खेलना भाई. It's just a rating trap. ट्रू, बिल्कुल. जैसे पहला राउंड, आई एम जस्ट लुकिंग एट दैट राउंड राइट नाउ. आई प्लेड प्रणीत वुपाला. आई एम श्योर पीपल नो हिम. Oh भाई, इज अ ग्रैंड he's मास्टर. also a crazy guy भाई. I played him as well. 1800 रेटिंग थी मेरी, 2200 थी. I played him. I was better. Offered a draw. मैंने मना कर दिया. बाद में हरा दिया भाई ने मुझे. और 1 साल बाद 2400 IM बन के बैठा था भाई. इंडिया में भाई खेलना ना, it's a trap. एग्जैक्टली दिस गाय ऑल्सो. विद व्हेन आई वाज प्लेइंग हिम, मैंने अब आई वाजंट दैट मच अवेयर, क्योंकि उस टाइम पे पहले आई वाजंट एज ये कोविड के टाइम था. आई वाज इन साउथ अफ्रीका एट द टाइम. तो आई वाजंट फॉलोइंग ऑल द इंडियन चेस प्लेयर्स. आई सी प्रणीत वुपाला, हिज रेटिंग वाज 2045 व्हेन ही प्लेड अगेंस्ट मी ब्लिट्स में, ठीक है. एंड फीडे रेटिंग उसकी 2450 थी. मैंने कहा ये क्या है. दैट्स सच अ बिग डिफरेंस बिटवीन योर रेटिंग्स. तो भाई कम से कम फीडे तो 24 होती. जब मैं इन सबसे खेला तो एक्सपेक्ट भाई, इंडिया में ना 500 पॉइंट का रेंज होता है. 1900 2400 की तरह भी खेल सकता है. और तो इंडिया में देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्लेइंग, तो इसलिए. हाँ, आई थिंक कोई कॉस्ट भी था. हाँ, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर. कौसव स्टिल, आई मीन, सिमिलर थिंग. एनीवेज, तो फिलहाल के लिए चैट, कमिंग बैक टू द गेम, H5 के बाद द नाइट हैज टू मूव. You could come to E5, you could come to F4. I think both these moves look logical. Even knight E7 is a possibility. And I think इस pawn को attack करना है. How do they attack this pawn? I think at some point king G5, knight, maybe F4 check also attacks this pawn. देखना पड़ेगा. बहुत टाइम है अभी तो ढूंढने के लिए. 97 किलो, नाइट F5 लाओ आराम से. She has 15 minutes on her clock, so of course it would be ideal to sort of heat up the game जब उनके पास 5 मिनट से कम रहे. क्या हुआ भाई, स्ट्रीम गई क्या? नहीं नहीं, नहीं है नहीं अभी भाई. तो. नहीं 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 नहीं. डॉक्टर श्रेय यार, अब क्या ट्रोल कर रहे हो आप? इंडिया में सबसे ज़्यादा चेस टूर्नामेंट कहाँ होते हैं, टॉप 3 प्लेसेस? आई एम नॉट श्योर यार. लाइक
चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में से एक ही होगा आई थिंक, और या फिर कोलकाता भी हो सकता है, कोलकाता में भी काफ़ी होते हैं, पर इनमें से एक होगा। भाई ओपन का 40 मिनट है यार, और वो दौड़ दौड़ के यार, डिड यू सी, और वो हाँ, लिटरली वो रनिंग, भाई ये क्या सीन है। सो क्यूट। Okay, so h5, knight e5, knight e7, knight f8, three possible moves. Knight f4 check also, of course. Knight f4 check is the most logical one actually. अरे भाई चल दे यार, आज मुझे लगा था भाई जल्दी फ्री हो जाएंगे, मगर हमारे कैजी बिक ने कहा नो, नो अर्ली। फ्रीस्टाइल इवेंट में विशी का स्पॉट किसको मिला? आई थिंक किसी नोदरबेक को मिला ना, दूसरे वाले याकूबोव को, या नोदरबेक वाले नहीं, को, it was किसको मिला है? सिंडारोव था या फिर याकूबोव था, उनमें से सिंडारो, एक या था। हाँ। सिंडारोव या याकूबोव, या Actually, I wanted to ask Pishi sir ki why did he withdraw, but I was like maybe there's a personal reason, so doesn't make sense. हम्म। साहिल टिकू He played played it. GM round robin in May 2021। भाई तुम उस टूर्नामेंट की बात मत करो, वही वाला टूर्नामेंट है जो तुम्हें पता है। क्या हुआ था वहां पे? ओ अच्छा, कुछ नहीं, ओ जो आपने कल बताया था, रियली यहाँ पे कल हुआ मैंने, था वो? नहीं नहीं भाई नहीं नहीं। एनीवेज मूविंग ऑन। आई थिंक दिव्या ने सर पकड़ा हुआ है, और औरों ने अपनी पैंट पकड़ी हुई है फॉर सम रीजन, बेल्ट बांध रहा है, मस्त बंदा है यार, ये क्या आदमी है। भाई मस्त है, चिल कर हाँ रहा है, और भाई हाँ, ये he's वही like है, बताया enjoying था मुझे। himself। राइट, सिंडारोव है, सिंडारोव, दैट्स ट्रू। पुणे में नहीं हुआ तो मेरा ट्रैवल फंड कराओगे आप? मैं करोगे आप? वाह क्या बात है, क्या बात है। पुणे में क्या नहीं हुआ? टूर्नामेंट नहीं हुआ तो होते हैं पुणे में भी टूर्नामेंट्स तो। होते होते हैं भाई, गूगल करो ना, नेट पे देखो ना। AICF की वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको। वो फिर से गया भागते हुए। भाई वो कर क्या रहा है भाई? चेस खेल रहा है या क्या कर रहा है? H5 भाई चल दो, it's taking too long. By the way, Nordirberg versus Fedosiv about to finish very very soon, unless वो किंग रुक खेलेंगे, but about to finish, वो भी ड्रॉ की तरफ बढ़ते हुए। आज तो लिटरली ड्रॉ दे था भाई, लाइक सारी गेम्स ही ड्रॉ हुई ना। हम्म, आई थिंक कारुआना इज द ओनली गाय, ही इज लाइक आज का दिन मेरा, बाकी सब ड्रॉ। हम्म। Which is the best country to relocate for an Indian chess player? Depends, why? Like, what do you mean by Indian chess player? Like, are you a professional player, or are you a chill, like chill करना है? Depend करता है बहुत चीजों पे। Wait, did she just allow knight f5 check? तो क्या प्रॉब्लम है नाइट एफ5 में, मार देंगे। Bishop f, but that's something you don't want to do, no? You don't want to give up your bishop, no, for the knight, because now this becomes very difficult for her to hold. I mean, but I don't know what else can she do. Like, She could have gone king g3 or king. but then we would have to stick around for longer, and king g5 भी आ रहा है भाई, so knight h5 check कर रहा है। I see. सहज भाई के साथ रह लो बिल्कुल, उनको तो बुलाया भी है मैंने, ये आते नहीं है। सहज भाई को काम है एक्चुअली कुछ भाई, जो मैं शेयर नहीं कर सकता। सहज भाई has a roommate. For a professional chess player, budding one. Yeah, I think ए everybody वेट है। गलत चीजें मत फैलाओ मेरे बारे में आप। दैट्स रॉन्ग। क्यों, आप तो कहते रहते हो चेस प्लेयर मेरे रूम में आते रहते हैं, आप भी तो कहते हो भाई। चेस प्लेयर्स आए हैं, बट उसका मतलब ये थोड़ी ना मेरे रूममेट है बट वो चेस नहीं खेलता। हाँ, अच्छा, तो है ना रूममेट, बस फिर क्या चक्कर है? तो वही तो चलो कह रहा अपना था मैं। अपना अपना चेस का बेस्ट फ्रेंड बता दो। मेरा चेस का बेस्ट फ्रेंड आई थिंक साहिल भाई का इंटरनेट ही हैक हो गया। बी स्टैट्स। 20 स्टार्ट्स। क्विक थिंकिंग। बाय द वे साहिल भाई किंग प्रिपेयर्ड d5 लग के रहे हो आज बाद। आज आज हाँ, एकदम प्रिपेयर्ड लग रहे हो आप। प्रिपेयर्ड यार, क्या करें, होना पड़ता है बस जिंदगी में।
Divya, thinking For a still 15 professional minutes. chess player, the, anywhere in Europe, I think is good. वहाँ पे बहुत इवेंट्स रहते हैं. आई थिंक दिस इज द बेस्ट की चाहे आप यूएस से हो या फिर आप इंडिया से हो. आई थिंक सब लोग यही कहते हैं यूरोप में खेलो. इट्स द बेस्ट. अनीशा के फैंटेसी वर्ल्ड में दुनिया काफी एक्साइटिंग है. दैट्स ऑल आई कैन से. किंग E5 के बाद अब now Divya has to think. By the way, he doesn't play knight F5, so he avoids that trade. Maybe he likes कि यहाँ पे तीन तीन पीस है. They can create some sort of net around the king maybe, या क्या सीन है? अगेन आई थिंक ही हैज़ ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड. वो नाइट एफ आई चेक होगा भी तो उसको अभी कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है. ही कैन डू इट लेटर ऑल्सो व्हेन हर टाइम इज अ बिट लेस. आई मीन आई सीरियसली डोंट थिंक शी हैज़ एनी चांसेस ऑफ ड्रॉइंग हियर. Anish, oh, by the way, this will be her 5th loss in this event. That will hurt a lot. Yeah, that will really hurt. I what do the games are interesting. यार आज के games थोड़े से ऐसे हैं, क्या कर सकते हैं. Do you know Anish Nayak? Yeah, of course, Anish Nayak भाई crazy बंदा है भाई. कुर्सी तोड़ आदमी है भाई मेरी तरह. And chat still waiting for a move. 13 minutes for Divya. Saj, I think this game will end in the next 10 minutes. या 15 minutes max. मुझे feeling आ रही है. नहीं लॉन्गर, वे लॉन्गर. नहीं 15 मिनट्स में हो जाएगा. साहिल भाई थोड़ा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. चैट में लोग हंस के रहे. ओ oh that's new. क्या हुआ? अनीशा जी was timed out. That's new. 1.8k seconds, 1800 सेकंड डिवाइड बाय 60. 30 आधा मिनट्स के आधा लिए टाइमर घंटा. कर दिया. आधा घंटा. अरे बाप रे यार. आधा अनीशा घंटा. जी. ओहो. अनीशा का दूसरा आईडी भी है आई थिंक, तो इसको आना हुआ तो वो आ ही जाएगी. अनीशा जी वहां से आ जाओ. क्या आप अनीस सरकार को हरा पाओगे? श्योर भाई, अगले 2 साल तक में भी. फिर वो भी आगे निकल जाएगा भाई. आदत हो चुकी है अब तक तो. What are the requirements to become a mod here? You need some. Yes, you definitely need some. Yeah, you're correct. लॉन्ग ओवरड्यू. वापस दूसरे अकाउंट से आ गया. यू वर राइट. मेरे पास 18 जीमेल है भाई. लेट्स डू अ कंपटीशन. मेरे पास कितने हैं मेरे फोन में लॉग्ड इन? लेट मी जस्ट चेक. आई कैन चैलेंज यू टू दैट भाई. सजा आपके कितने जीमेल लॉग्ड इन है अभी? आई विल चेक. आपसे तो कम होंगे मेरे. 3 है मेरे. मेरे 20 है भाई. नो वेज. आपके पास 20 अकाउंट है? 20 जीमेल लॉग्ड इन है की भाई. वजह से क्या? क्योंकि आप वो टेस्ट कर रहे थे वो सब कुछ उसके वजह से? हाँ, तो 20 है भाई. वाओ. लेकिन आपके तो अकाउंट भी इट्स अ सीक्रेट ना? हाँ और वो किसी एक मॉड ने निकाल भी दिया था आपका सीक्रेट अकाउंट. हाँ, बट वो बहुत पहले था, बहुत पहले था. टिकू डॉट. अब तो आजकल के मॉड्स में वो बात कहाँ. वाह, सारे मॉड्स रोस्टेड. मेरे पास अभी 43 अकाउंट्स हैं. अंशुल भाई, तुम कोई पॉन्जी स्कीम रन कर रहे हो क्या? समझ नहीं यार. 43 अकाउंट्स. मैं डर गया था एक सेकंड के लिए भाई. पता लगा कि अंशुल और निशा सेम ही इंसान हो. दोनों की डीपी का सिमिलर ही है. Possible. Okay, 10 minutes left for Divya. Bhai, she has gotten up. I think she might play very soon. Gotten up मतलब कहाँ पे बैठी तो हुई है मतलब she भाई. has sat up on the board now. You can see she's not like sitting normally. No, but I think I would rather play quickly and save time, because I think इतना सोचने में कुछ होने नहीं वाला. Like I'm sure she did not predict King E5. It's very likely she did not see King E5 here, because it's like there's so many options. Just kind of, I don't know, maybe I'm wrong, but I think it feels like ये time पे ही हारेगी. Like she will not have time to calculate out a
Very important Also, I position. have to say कि भाई ये position बचाना बड़ा बहुत मतलब औखा काम है यहाँ पे. It's definitely औखा, अरे very अरे annoying. अरे पंजाबी ग्रोवर प्रोवर. Is that a Punjabi word? हाँ, औखा इज पंजाबी. Oh, I I didn't think. know that actually. अरे हम घर पे तो फहाज use करते प्रोवर हैं. क्या हाल है भाई? तुसी Yeah, I just looked at it with a stronger engine and this is completely winning. It's not जो chess.com वाले कह रहे हैं, it's not fully accurate. It's minus 2.5. It is winning actually with correct play. तो holdable तो नहीं है यार ये बिल्कुल भी. And also practically बचाना बहुत मुश्किल है यहाँ पे. तभी तो प्रैक्टिकली कह रहा हूँ मैं यार, लाइक शी शुड सेव टाइम. एंड ऐसे तो Save time for what? कल rest day है. नो, आई मीन लाइक फॉर फ्यूचर मूव्स, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शी विल नीड दैट टाइम सून एंड शी विल नॉट हैव इट. Yeah, even I had messaged you on Discord like a month ago. You never responded. That hurts more than. Oh, वाह. आ गए ना अपने उसमें. तो हमारे मॉड जी ना मतलब हमारी बेइज्जती करते रहते हैं. वाह. गुकेश बचा सकता है ये पोजीशन. अनलाइकली आई वुड से. वंशी आर्य अपना एप्टीट्यूड क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है. भाई भाई चैट जीपीटी पैदा हुआ है, उसमें डाल दो, वो एक सेकंड बता देगा. 64 होगा इसका आंसर. नहीं 64 नहीं है, सॉरी. 124 कैसे हो सकता है यार? इसे ऐसे क्यूरियोसिटी कर दी मुझे अब. रुके 4 लिख रहे हैं. हाँ पॉसिबल है रुके 4, बट कुछ कर नहीं रहा. H6 का पॉइंट मिल जाए तो दैट वुड बी अमेजिंग, बट दैट्स नॉट हैपनिंग भाई. या सो दिस इज लॉस्ट, कंप्लीटली लॉस्ट. बस वो आई थिंक वो 81 होगा H4 नहीं भाई. खेलना था. 81 होगा ना, 81 होगा ना उसका आंसर. आई थिंक 81 शायद. सॉरी सॉरी भाई, मैं लॉजिकल क्वेश्चंस के लिए मैं थोड़ा हमें ऐसे सकर फॉर दीस क्वेश्चंस मस्त लगता है सॉल्व करना. एनीवेज. हाँ मेरे को, हम सबको पता है आपको लॉजिकल चीज़ें कितनी पसंद है. अरे यार, अरे यार, एनीवेज. 7 मिनट भाई. आई टोल्ड यू 15 मिनट से गेम खत्म हो जाएगी. चलो चैट से पूछो. चैट भाई चैट भाई बोल रहा हूँ. चैट साहिल भाई का फेवरेट रैपर कौन है? चलो ये बता दो. ऑड नंबर का स्क्वायर नहीं है यार, कुछ और है उसका. इट्स लाइक आई थॉट इट्स डिफरेंट. ऑड नंबर का स्क्वायर नहीं है. चलो उनका फेवरेट रैपर बता दो ना. दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू नो. देखते हैं कितने लोगों को समझ आए मेरा ह्यूमर. चैट भाई, अरे यार क्या सवाल पूछ लिया यार. नहीं वो नहीं था यार. दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट. ओके लेट्स सी. कोल्ड प्ले रैपर थोड़ी ना यार, क्या बोल रहे हो? किसी को नहीं कौन समझ है? आया. किसी को मेरा जोक नहीं समझ आया यार. कैसे हो यार? आपके आपके सिल्वर प्लेटर पे दिया था मैंने आपको ये इसका जोक. सिल्वर प्लेटर पे दिया था मैंने आपको ये. क्या यार, कैसे हो यार? कोई तो लिख दो उसका नाम बेचारे का. चलो क्या है भाई नाम? चलो इंडियन नहीं है, इंग्लिश है. नॉट अ वेरी वेल नोन रैपर बट ही हैज वेरी गुड सॉन्ग्स. Oh, there we have it. Pratik. Thank you, bhai. Thank you for saving me. It is indeed. There is a rapper called Logic. I don't know if you know. लॉजिक. नाइस. Yeah. मेरा वेब क्या भी फेवरेट लॉजिक टेक है, तो सारी चीजें ऐसी चल रही है लाइफ में भी. Yeah. अनीशा का दूसरा अकाउंट भी बैन कर दिया क्या? नहीं 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 वो अच्छा वो भी हो गया. सहज भाई या अच्छा I don't know this about I don't know about this भाई. We'll have some drama. We'll see. साथ हैव अ Logic. क्वेश्चन. सो पिछले 25 मिनट से वैसे बैठे हैं. What if we had just put a photo of both these players? Like, do you think chat would notice? नहीं ना. Maybe. Zero chance. Zero chance they would notice. नहीं यार वो घूम रहा है ना. नॉगर बैग घूम रहा है so. हाँ, अब ये फोटो ले लो. अब 25 ऐसे रखो. देयर इज नो वे चैट नोटिस की भाई वीडियो नहीं देखो. देयर इज नो वे दे नोटिस की चैट वीडियो नहीं चल रही. इसलिए क्लासिकल चेस हैज टू बी फास्टर. देयर इज नो वे यू कैन सिट अराउंड ऐसे. लाइक इट हैज टू बी फास्ट. आई थिंक टाइम कंट्रोल इज नॉट परफेक्ट. देखो
मैंने तीन ऑप्शंस दी थी आपको, राइट? ऑप्शन सी इज मेकिंग अ कमबैक राइट नाउ, लेट्स गो. She has 4 minutes on the clock, so okay, definitely she has to play very soon now. I also think it's pretty hard to kind of accept that this is lost because you are still latching on to that last hope कि भाई कुछ मिल जाए मुझे यहाँ पे जिससे पोजीशन मेरी बच जाए. One last trick, something, but it's just not there. वो H4, you are right, Salve. H4 was a maybe not the best decision there. तीसरा अकाउंट भाई अलग अलग ही चल रहे हैं बैन चैट में. एंड दिव्या looked at the clock, 4 minutes for her, and there will be no more extra time. She will have to play on increment, and this is going to get hell of a lot tougher now. Yeah, this is very difficult. I don't think she can hold this practically. It's just not possible. शैल सहज, प्लीज आंसर. भाई आपका पहले वाला सवाल क्या था? उससे पहले भी आपने साहिल वर्सेस सहज, भाई इन व्हाट? ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना है, तो ये तो आपने स्टेटमेंट दिया. सब देखो, ये जो फ्रेम है लिटरली फैबी के आने. ओ शी प्लेज रुक a6. ओके, That the what didn't like at all. What's the story? exactly my point. Why she should have played faster. I think इसमें correct move निकालना is just not like anybody's cup of tea. एक सेकंड, मैंने 93 खेल दिया था, आपको पॉन नहीं मर रहा सीधा? Maybe हाँ, f3, पॉन मर रहा है ना. तो ओके, F3 इफ यू प्ले f5. F5 खत्म. ये तो पॉन मर गया ना सीधा, आई थिंक आफ्टर 93. Yeah, I think this game is gone. आई थिंक जो अगेन वो इंट्यूशन में probably she had some other moves which she calculated but she wasn't happy with that and then she उसको वो थोड़ा अपने दिमाग में वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है. एंड नाउ आई थिंक 93 is much easier than probably what her first move was that she thought. I think we all know Divya is like one of the players who's going to be the future of Indian chess. Right now we have Humpy and Harika who have been leading the charge for so many years. Now we have Vaishali coming up and Divya coming up, who are basically almost strong as them and got Olympiad gold. उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता. I think World Championship is the only title which they don't have. And इनके पीछे पीछे there is Vantika and others. So I think at the end it's just a same as Arjun. Yeah, it's just a bad tournament. And maybe Vishi's a suggestion. Yeah, we're just kind of assuming, thinking of the like कि कल से नया tournament start होने वाला है. I would even take a train and go to another city for one day. कल rest day है ना, ट्रेन लेके जाओ दूसरी सिटी में घूम के आओ एक दिन के लिए, वापस आ जाओ. It will feel like a new tournament. That would be nice. And also Netherlands is a beautiful country, so definitely a lot to see. If someone says answer previous question and you don't know the question, right click. I know I have done that many times before. उन्होंने पहले की क्वेश्चन, उन्होंने पिछले 10 मैसेजेस में सिर्फ साहिल और सहज ही लिखा था, साहिल वर्सेस सहज लिखा था, इसलिए आई सेड दैट. अच्छा, वो chat activity दिखती है. बाप रे, I didn't know this. You can see all the old messages. अब पकड़े जाओगे तुम सब भाई, क्या क्या लिखे हो. I didn't know this actually. Wow. और क्या क्या फीचर मॉड होते के हैं साथ चैट में. मॉड के साथ मिलता है, मॉड के साथ मिलता हाँ है. वही चैनल एक्टिविटी, गो टू चैनल, रिमूव एज स्टैंडर्ड मॉडरेटर, फायर आर्म. आई थिंक काफी सारे ऑप्शन है. एक ऑप्शन है कि सिर्फ फायर आर्म को निकालने का, या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. साल भाई हर वीडियो में सेम थंबनेल क्यों लगाते हो, वही सेम फोटो. भाई भाई मैं वीडियो बनाता हूँ ना, सही बता रहा हूँ, लास्ट में बनाता हूँ. उस टाइम पे ना जल्दी जैसे आज तो मैंने एक वीडियो डाली थी आफ्टर अ वीक लिटरली. तो मैंने रात को रिकॉर्ड करी वो इस स्ट्रीम, कल की स्ट्रीम की बात. तो भाई उसमें कहाँ ताकत होती है भाई, फिर तुम थंबनेल मिला के तुम उसकी शक्ल उसकी प्रिटी बनाओगे भाई. जो पुराना पड़ा है उसको पेलो भाई. ब्लैक ने सर पकड़ा हुआ है. आई होप वो सर सिर्फ 30 सेकंड पकड़ेंगे, 30 मिनट नहीं.
गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। किसी ने लिखा साहिल भाई बेस्ट अवार्ड गोज टू। ओह अच्छा, मुझे लगा कि वो तुम दोनों को बोल रहा है, यहाँ पे गोलमाल आ गया। क्रेजी। गोलमाल है भाई सबको, दूसरी बार भाई। दोनों बार ऐसे ही देखा भाई। यू कुड जेन्युइनली क्रिएट लाइक वो एक मीम, इधर 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 बंदा और इधर वो। बिग फैन साहिल भैया, साहिल भैया आपका फैन, लेट्स गो। मैं कहाँ निकलूं भाई मैं। कहाँ दिख रहा है भाई बिग फैन। शायद भाई हैव यू एवर विजिटेड, मेरे को दिख रहा है ना अग्रिम जैन, ही रोड इट। अच्छा अच्छा। शायद भाई हैव यू एवर विजिटेड वॉर्सॉ पोलैंड? नहीं, मैं पोलैंड के एयरपोर्ट पे गया हूँ, वो भी अभी गया था मैं। बाय द वे आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू सी, डिड यू नो कि देयर इज अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू वॉर्सॉ, like direct flight, and it's packed, like it's fully packed. नहीं होती होगी फॉर श्योर, आई थिंक दिल्ली टू पोलैंड वॉर्सो में सिर्फ एक ही होती है। ओहो व्हाट्सअप चैट, हेलो। होती होगी फॉर श्योर होती होगी भाई। एक मतलब आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड बाय दैट कि पोलैंड इज नॉट नेसेसरली अ बिग कंट्री ना, इसलिए। हाँ ट्रू ट्रू। आई थिंक लोग जाते हैं भाई, इंडिया इंडिया के लोग तो हर जगह जाते हैं। या दे वर लुकिंग अ बिट Sahaj 93 played. I think this is devastated, yeah. No, I know going to she be. just played and Divya is looking really upset because I think she missed that the f2 pawn was hanging. I think we might get a resignation very very soon because she knows king g3 में तो f5 f4 आ ही रहा है, and if she plays f3 or something, still f5 and you lose the f3 वाला pawn. Can we go full screen मेरी भाई, एक तो मैं कैमरा थोड़ा चक्कर है नीचे ही है होके, मैं लेकिन। ऐसे नीचे होके स्ट्रीम वो करता हाँ, हूँ। and also I think Divya is about to resign, मुझे इस feeling आ रही है, she's shaking her head. I think it's about to be over soon. Unless नीरी भाई खुद खुद सो गए। नहीं नीरी भाई तो always strike पे है भाई। Yeah, Divya looking towards the heavens, but unfortunately the game is going to be over soon. Yeah, she's looking away. She's a bit upset because she missed 93, I think. कितना So what's up? हार्श है यार चेस, मतलब यू कैन प्ले फॉर 5 hours एंड एक मूव में गेम चली जाती है भाई। Like, this is हो गए ना 5.5 घंटे तो इस गेम को एटलीस्ट, या 5.5 घंटे हो गए। 6 घंटे हो गए होंगे यार, 5.5 घंटे हो गए हाँ। बिल्कुल शांति है because this game is definitely not going our way. Divya looks at the clock, 2.5 minutes. She will of course try to save the pawn once, but the problem is king g3 पे there is f5 knight e4 check. Oh I thought अच्छा f5 है क्या? f5 ही सोच हाँ रहा था ना, f5 f4 खत्म। 5 bishop f4 check f4 and yeah it's over. also she has 2 minutes on the clock, yeah, which is horrible. ये तो मेट ही हो जाएगी भाई मुझे लग रहा है। Hmm. At some point we have bishop, but okay, this is really bad and she has 2 minutes. Says भाई what's the weather like in Budapest? बहुत ठंड है यार, बहुत बहुत ठंड है यहाँ पे। Saj, if chat and Saj, if you could whisper a couple of lines of encouragement to Arjun and Divya, what would you say? Yeah, you can see the pain on her face. It's really heartbreaking. What would you, tell Arjun and Divya right now, or maybe tomorrow on the rest day, if you could? यार today तो I would let them be because I think when you're going through this phase you have to kind of you know um kind you have to sort of live through it. I mean जो भी आपका जो भी दर्द होता है हारने से, you cannot really escape that. And from tomorrow, yeah, it's a new day. भाई वशी सर का जो वो था, I think that makes a lot of sense. But Yeah, she almost हारने के plays बाद यार there is no escape, वो दर्द होता ही है, चाहे कोई कुछ भी बोले दर्द फिर भी होता है। less than a minute now, 56 seconds. Her head goes tilts down. Yeah, she's not happy. कैमरा आ गया आपका?
कैमरा तो आ गया भाई, बट आई थिंक फुल स्क्रीन रखते हैं बिकॉज द गेम विल बी ओवर सून, मुझे तो लग रहा है। कैमरा ऑन नहीं है आपका बाय द वे? क्या बात कर रहे हो? हाँ अरे ऑन नहीं है आपका। अरे हाँ, वो है। The opponent sits down, he knows कि opponent का टाइम ही नहीं है, so she will have to play. Let's go full screen रिवाइव। आई थिंक ये खत्म हो जाएगा गेम, मुझे लग रहा है, the next 5 minutes. As you said, as like जब भी कोई खराब मैच होता है ना, I feel there are no words that help, especially after a loss. You feel really bad and you need to feel like that. एंड चैट पता है क्या है, एक काम करना, जब स्ट्रीम खत्म होगी ना, सो जिस काइंड ऑफ राइट डाउन लाइक ऐसे कमेंट्स में ना एनकरेजिंग वर्ड्स फॉर दिव्या, अर्जुन, एवरीबडी, बिकॉज आई थिंक अभी जहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ ना, कम्युनिटी पोस्ट हो कुछ भी हो, इट्स जस्ट नेगेटिव, लाइक अर्जुन का ये, दिव्या का वो, दे नॉट इन फॉर्म, स्पेशली अर्जुन को ज़्यादा। सो हर जगह ना कमेंट्स में पॉजिटिव लिखना भाई, चाहे हमारी स्ट्रीम हो, कहीं पे भी कुछ देखो भाई, लेट्स एनकरेज देम यार। इन्हीं मोमेंट्स में सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। Absolutely. भी F2 का पॉन तो मर गया यार। हाँ, this is just resignable now. Bishop d7, she's threatening bishop c6. That would be a big threat, but very easy to counter. बिशप d7, अब क्या f5 knight e4 सभी विनिंग लग रहा है तो। f4 bishop c6 पे क्या है f5 में? ओह मैंने बिशप से नहीं देखा, knight e4 खेल दो चलो, व्हाट्स द इशू। हाँ, knight e4. f5 एक्चुअली माइट बी द वर्स्ट मूव हियर, क्योंकि अगर मैंने f7 पे होता ना मेरा, तो अब बिशप c6 नहीं खेल सकते थे क्योंकि मेरा knight f5 चेकमेट है। Oh, wow. नाइस Completely ना। missed that. Nice. तो f5 was crazy. And साज भाई, हमें मॉड चैलेंज करना है, सो यू नो व्हाट, एक काम करते हैं, ठीक है, मॉड चैलेंज सिंपल रखूंगा मैं, जब ये स्ट्रीम खत्म होगी, ठीक है, सो अर्जुन एंड दिव्या के बारे में पॉजिटिव चेस के कमेंट्स चाहिए, जो बेस्ट कमेंट होगा उसको मॉड बना दिया जाएगा डायरेक्ट, दैट इज द मॉड चैलेंज। क्यों साज भाई? Yeah, that makes फेयर a lot इनफ of है ना? sense. Do it. चेस कमेंट्स प्लीज। Also ये भी याद रखना कि आप जो भी एग्जिस्टिंग मॉड्स हैं उनमें से जिसका सबसे रीसेंट मैसेज मैं अभी पढ़ रहा हूँ, और जो जिसने भी बहुत रिसेंटली साहिल टिक्को लिखा हो उनको रिप्लेस किया जाएगा, बट इट्स नॉट बायस्ड। जिसने भी कमेंट्स में साहिल टिक्को लिखा हो सबसे रिसेंटली, वो बंदा रिप्लेस होगा तो। yeah. You'll be taking somebody's job, but it's fully deserved. only time in human history. Exactly. Are you guys cat guys or dog guys? We are guys, bhai. भाई लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, आई कैन गारंटी यू पीपल डू रीड कमेंट्स। आई डोंट नो भाई, मैं तो सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ भाई, आप पढ़ते हो साथ में कमेंट्स? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, सब पढ़ते होंगे फॉर श्योर। Maybe if it's the world championship or the candidates, they will switch off social media, but during normal events I'm pretty sure they're searching, like checking comments at some point, and वो negativity से यार, it's just too intense यार, you want people to support you. Imagine कोई low feel कर रहा है, एक comment पढ़ ले, there's no issue, I fully believe in Arjun coming back, and like it just feels very nice. I have cooked both so much that they just want me to go. It's shocking to me कि after all भाई of भाई this, that's थोड़ा घर पे भी that's कुक कर his लो, takeaway. घर पे भी कुक कर लो थोड़ा सा, शादीशुदा हो भाई, थोड़ा सा कुक कर लो। It's shocking to अभी भी इनको लगता है that's the reason. Why? Why Ram? Okay, 30 minutes for black. I hope 30 मिनट नहीं सोचेंगे वो। Will Arjun in this tournament affect his candidates? Of course, slightly. Like basically जो उसका वो event है ना, FIDE सर्किट के द्वारा क्वालिफाई करने के चांसेस डाउन जाएंगे, बाकी तो इतना। और रेटिंग से यार, रेटिंग कैटेगरी साज, इफ अर्जुन हैड नॉट प्लेड होल ईयर, he would have a rating of 2802 and very likely he would have made it.
नहीं बट हिकारू का भी तो सेम इशू है ना. But Hikaru will play the Grand Swiss in World Cup, na? So likely he will lose rating. India आ रहा है भाई. So if But he had not played it all, he would have but made it to Arjun the was the candidates, mo क्या? but he was the guy who played the most chess last year. Arjun. तो No, but it's technically true, right? If he did not play at all, he would qualify to the candidates with a rating spot. hmm. Unless somebody overtakes him, which is possible though. मिनिमम 40 गेम चाहिए. अच्छा ऐसा है क्या? फिर तो मुश्किल है भाई, फिर तो खेलना ही था. फायर Yeah, अलार्म F6 गया भाई. played फायर अलार्म F6. को बीवी का कॉल आ उसने गया. भी सॉरी. F6 इसीलिए खेला है साहिल भाई. F6 इसीलिए खेला ताकि बिशप C6 पे नाइट F5 मेट हो जाए. हाँ हाँ. यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी लिखो बट कमेंट्स में लिखना भाई जब स्ट्रीम एंड होगी, तो ध्यान रखना. कम से कम 10 कमेंट चाहिए मुझे. Hmm. Divya looked at the clock. 12 seconds, by the way. I just noticed. 11, 10, 9, 8, Moving 7, in. 6, 5. She plays king g3. Okay, I'm guessing a check. Yeah, check and then F5 and that's very very comfortable. I think it should be resigns. My guess is because बार बहुत कम estimate कर रहा है position. I'm guessing you can even start pushing the f pawn soon. I think even now is possible. Right You now, the can play bishop knight c6 F6. maybe. हाँ, Knight knight F6 f6 है no? actually. Yeah. और f pawn Yeah. बहुत जल्दी दौड़ेगा. There is no stopping it actually. It's okay even if they don't bounce back. No, they will bounce back, भाई. They will. तो मॉड का जो चैलेंज वो हम कल अनाउंस करेंगे ना परसों. नहीं, मैं अपने आप ऐड कर दूंगा कमेंट्स में. सो आई हैव रिटन इट डाउन. या अगर बाय चांस भूल जाओ तो कमेंट्स तो कहीं गायब होंगे नहीं ना भाई. यू कैन ऑटोमेटिकली सी. मैं सोच रहा था रुकेट शिट जाते पर रुकेट भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे. पॉसिबल तो है भाई, लेकिन इट्स पॉसिबल मतलब. लेकिन okay 7, she's trying the same. I think just push the f pawn now. और नाइट E3 Idea? इधर हो. कुछ नहीं. Just knight G2 check, knight F4 बोल रहा. I have all the time ना, so knight E3 just वो king को एकदम पूरा कोने में रख दिया मैंने. Then F5 F4 just come to the tempo. F5 सीधा भी खेल सकते हैं, no worries. Just I didn't like bishop F5 king F5 rook H7. I didn't like this rook H7. अब ये थोड़ा I'm not sure if this is winning. साहिल भाई अपने फेवरेट रैपर फिर से दिखाएंगे हमें. वन सेक. Nice. Nice. कमेंट्स में मॉड बना सकते हो? आई डोंट थिंक सो. ऐसा है क्या? तो फिर मेंबरशिप दे देंगे भाई, और क्या. ये फिर मेंबरशिप दे देंगे. कमेंट सेक्शन नहीं बन रहे होंगे तो कमेंट का रिप्लाई करके. But the support Because- shouldn't waver with form. Of course, yes, that's the point. Yeah, yeah. So yeah, I don't like this bishop F5 rook H7 knight D3 खेल दो ताकि bishop F5 ना आए and then push F5. Simple. GG. Come on भाई, थोड़ू तेज, थोड़ू तेज. उसके पास तो आधा घंटा है ना. क्यों है आधा घंटा भाई? किंग Yeah, F4 king भाई, वो F4. मेट के लिए जा रहा है शायद. Hmm. वरना अपना प्यादे के सामने क्यों रखेगा किंग? सहज भाई in a weaker position is it better to keep the king central or to a corner. भाई इसका कोई भी generic rule नहीं है.
It depends on the position. Everything depends on the position. Yeah, there are certain guidelines you can follow. जैसे किंग को एक्टिवेट करो, किंग को सेंटर में रखो. Yes, there are situations like that. But अब आप बोला एक वीकर पोजीशन वो भी होती है जहाँ पे ब्लैक का पॉन क्वीन कर रहा होता है और उसको स्टॉप करना होता है. वीकर पोजीशन ये भी होती है जहाँ पे आपका पीस कम है. यू कैन नॉट से कि दोनों सिचुएशन सेम है. तो डिपेंड्स ऑन द पोजीशन 100%. साहिल भाई को घर जाना है बस. नहीं रे, मेरे को टाइम कंट्रोल से थोड़ा सा प्रॉब्लम है. आई डोंट लाइक कि 50 मिनट मिल जाते हैं बाद में. इट जस्ट No, डजंट that's the मेक third सेंस. time since I did the poll, by the way. That's the third time. Just if anyone's counting, I am a third time. सही है भाई. साहज भाई का एंटरटेनमेंट चल रहा है भाई. साहज भाई के यहाँ पे 8 भी नहीं बजे अभी शायद. ठीक है, आठ बजने वाले हैं, बजने वाले हैं. Wait, is that the fourth time you mentioned time? So चार हो गए ना फिर तो चार हुए ना. Yes sir. यार पनीत, ग्रेट कमेंट्स. स्ट्रीम एंड होके कमेंट जरूर डालना यार. वी वुड लव टू सी दैट कमेंट. मे बी द प्लेयर्स वुड लव टू सी दैट कमेंट. एंड किंग एफ4 के बाद आई थिंक, I don't know how you finish off the game. Knight e5. This is like a typical Hikaru game, yeah. Title 2 में जो खेलता है, he's like he could win it in different ways, but mating net बनाना है भाई. I think he's looking at rook h7 and then knight g5, knight f3 is just mate. Knight King gf, h3? knight e3. अभी किंग h3 खेल सकते हो आप, but I meant after rook h7 अगर आप जाओ to take the pawn. Oh, she's offering a trade, which is kind of forced. नहीं, piece force to क्या? that. I would not want this. Bishop f7 or something. Bishop हाँ तो c4 knight actually. मारेगा ना. हाँ हाँ, नाइट तो मैं दे दूंगा ना. दो नाइट नहीं रखने मुझे. You didn't do air gambit for Divya. भाई वो पोजीशन ऑलरेडी लॉस्ट थी. लॉस्ट पोजीशन में एयर गैम्बिट तो वेस्ट हो गया ना फिर तो. एयर गैम्बलिंग क्रेडिबिलिटी पर डाउट आ जाएगा तो प्रॉब्लम है ना यार. एग्जैक्टली. Chances of stalemate, bhai, no chance yaar. White has a rook and a bishop. It would take a freaky move to lead to stalemate. I don't think so hoga yaar. Very unlikely. Can we go bishop e6? I was thinking knight f3 bishop e6 कुछ तो, बट हो नहीं रहा वो. बिशप e6 नाइट रुक f4 में knight f3 है भाई. हाँ तो वही मेरा प्लान था, तो लेकिन मार देगी ना वो. King e4 and then king g3. Wait, he just played something. Knight f3 check. King h3, yeah, यही बोल रहा था मैं. King h3 and now the h5 का pawn भी also feels really weak. So you just have to capture that and it's winning. Oh, knight g5 check maybe. The king will have to come to literal to g2 now. It's just over, I think. And then, yeah. Or you just go bishop e6, bishop g4 and just take the pawn on h5. But he has a lot of time. Black के पास बहुत time है इस position में, तो he can think. इधर शांत हो जाता है साहिल भाई after this. किसके बाद? जब मैंने बोला ब्लैक के पास बहुत टाइम है सोचने के लिए. भाई 27 मिनट भाई. नहीं यार, I think it's time to give up. Never stopped you before, could have done when I asked. No, when you asked, it was already lost, the position. It was already lost. So it didn't make sense. Yes, by today in master section, which player was more promising according to you, and who has disappointed you the most? Yeah, matlab, I think the leaders, I mean the points definitely show that, Pragg, Gukesh and Nadirvek are the ones who are leading right now. And I mean, बुरा disappointment तो नहीं बोलूँगा, बुरा लग रहा है यार मेरे को अर्जुन के लिए. Because losing 30 points. Oh, Max blundered by the way. Wei is apparently winning. His first game. इसका तो रुक था ना, रुक कहाँ चला गया मेरा? हाँ पता नहीं क्या हुआ भाई, but apparently Wei is winning his first game of the event, and Karwa is also winning. So सारी game draw हुई हैं apart from the two that are going on right now. So yeah.
ब्लंडर कर दे भाई, 5 रुपए दूंगा। वाह, ये एक ही बार में दोगे कि? इंस्टॉलमेंट्स। हाँ, चेक, किंग यहाँ। या चेक, नाइट G5 सब कुछ ही विनिंग है, नथिंग लेफ्ट। व्हाट्स द वर्स्ट मूवी आज? डिसअपॉइंटमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे सहज भाई, एक सेकंड। अफसोस। अरे वाह भाई। ऐसे आप मेरे को टेस्ट कर रहे हो भाई, व्हाट डू यू थिंक? ये पता है मैंने आ, उन सब के साथ किया था, अर्जुन प्रग के साथ, उन सब के साथ किया था मैंने। टेल मी द हिंदी ऑफ दिस, बहुत मजा आया था वहाँ पे। हंगेरियन में क्या बोलेंगे डिसअपॉइंटमेंट? हाँ वो तो वो तो हो गया। हंगेरियन में मेरे को सिर्फ कुछ ही वर्ड आता है जो यहाँ पे बोल नहीं सकता मैं। अच्छा अच्छा। बिशप E6, बिशप G4 F5। निराशा। अफसोस रिग्रेट होता है क्या? अफसोस नहीं, नहीं अफसोस इज लाइक रिग्रेट होता है क्या अफसोस? अफसोस, रिग्रेट। काफी लोग कह रहे हैं अफसोस होता है, रिग्रेट। हाँ एक्चुअली में भी निराशा मुझे नहीं पता था एक्चुअली। निराशा इज अफसोस, आज उसने कान नहीं हिलाया। लोल्स। हम्म। तो बिशप रिग्रेट इज E6, पछतावा। बिशप B7 सभी विनिंग है यार। F5, नाइट G5, ये सो मेनी मूव्स। ओ बिशप जी4 में कुछ गलती है अपेरेंटली। बिशप टेक्स, किंग टेक्स, रूक H7। आई मीन दिस हैज टू बी विन। अच्छा नहीं, ये तो पॉन मर गया ना F6 का, मे बी दैट्स ओ व्हाई। बिशप जी6। वाओ, वाओ, इमेजिन वाओ फेसिंग दिस। भाई, दैट्स अ फ्रीकी मूव। एंड यू विन, दिस इज विनिंग राइट, दिस शुड बी विनिंग। सो या, ठीक है। या आप आई हमारे वाज हमारे मॉड जी की बात सुन रहे हो? माई हिंदी इज सो बैड दैट आई डोंट इवन नो द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेट एंड डिसअपॉइंटमेंट। My Hindi is so bad that I don't know the difference between the words regret and disappointment. ओके, नाइट चेक प्लेड। Yeah, आर्बिटर जेस King G2 मुझे take take King G4 हो गई even. King H4 जाना पड़ेगा. You were right also in this, like she doesn't have enough time also now. exactly, like you know, this you really can't imagine holding this, even this was objectively somehow a way out because you have no time. So apparently the best variation is just taking the bishop, rook takes, knight f3 check, king h3, and king g5, just finding the pawn. And even that should be very easy. Check and f5. And then you take H5 and then it's lost. Yeah, g2, knight h4, Knight H4, King H3, King H5. Khatam. So even if that is also working, I think it's pretty much over. This is where Divya would resign, I'm pretty sure. So yeah. I love Divya setter. कर ले, चोरी कर ले भाई, कर ले। और क्या बोल। OTP resign नहीं कर सकते for those who don't know because there is no resign button. A moment of silence, जिसने भी ये लिखा था, प्लीज इनको मॉड बनाना। Relationship में breakup नहीं कर सकते because there is no breakup Oh, button. wait. Knight D6. That's nice. Bishop D5, Ooh. Knight F5 is mate.
अरे बाप रे भाई, ब्लैक तो भाई क्रेजी हो गया भाई. एंड चेक पे I don't know. Bishop e4, I guess. बिशप e4. ओके, जस्ट ट्रांस. ओके. Bishop e4, knight e4. दिव्या ने पानी की बोतल देखी है, पानी की बोतल खाली है. ओके, ओके फॉर चेक प्लेट. चंद्र प्रकाश जी बढ़िया कमेंट्स के साथ. स्ट्रीम एंड होने पे कमेंट्स में भी लिखना है. बिशप c4. Oh, she's desperate for knight f5 mate. Bishop c8 खेला तो it's the only move, I think, no? Did he miss bishop c8? Probably not. You can't. I'm played. शक्ल से पता लग जाएगा अभी. Because you can't take. Takes with check and then you pick up the knight also, and suddenly the game is at least equal. Yes. But you don't have to necessarily. Like you can play something else. Knight f3, knight e5 looks fine, for example. Yeah, that looks very safe. Just defending the bishop one more time. Check. King h3. Maybe king g5 as well. Yeah, just getting out of the pin and attacking the pawn. That just feels. I don't know. सारे pieces बढ़िया से बैठे नहीं हुए. क्या king g5 is fine though, I guess. Yeah, he plays king g5. Because next you can go knight e5. So. And just defend everything. Yeah. And the h5 pawn also falls down. सारे देखो इस सो बोल रहे हैं एम्प्टी बॉटल्स. भाई ऐसा नहीं है यार. सबसे हमारे व्यू में सबसे पहले बॉटल ही तो पड़ी है. ये बॉटल थोड़ी फनी सी है वैसे, है ना, गोल मटोल सी बॉटल है वैसे. हाँ मतलब हम बॉटल्स को के बारे में बात तो कर रहे हैं हम. That's true. बेचारा केमर अब तक खेल रहा है यार सदमे में, इतने टाइम से वर्स्ट पोजीशन. Yeah, I think she will resign. Or she waits for the h5 pawn to go away. And then she resigns. Annie, you can't But be this is articulating a woman in public chat and expect. क्या है भाई? I don't think you understand what articulating means भाई. But anyways, हाँ बोलो साथ में. एक मैच सहज और साहिल भाई के बीच में होना चाहिए लाइव स्ट्रीम पे. भाई करेंगे करेंगे. Bishop g4, knight e5. Bishop f1 तो नहीं आ रही. हाँ, knight e5 looks logical. Then you go bishop f7. Oh, logical. क्या बात है. Knight e5, bishop f7, easy. And then you capture h5. It's just also यार ये position लंबा खेलना ना भी it feels even more and more depressing. It gets even more depressing क्योंकि जब आपके pawns आगे बढ़ेंगे ना, it just feels really bad. So you have no chance here whatsoever to survive. Unless your opponent blunders a piece, there is no chance here. Knight e4 played. I think he's planning this check maybe. I don't know. Knight f2. Knight f2 आ रहा है. King g2. बिशप के पास घर है क्या कोई? बिशप के पास कोई घर ही नहीं है. बिशप c2 जा सकते हो मे बी आप. Knight f2, knight d3 game over, and then you win h5. Chat, update on the results. Maybe we can do one thing, Nidhi bhai. एक बार masters का ना एक बार standing दिखाते हैं. Anybody who's joining in, let's show all the results one by one very quickly. You can see at the bottom right. Veyi has won against Max Vamadam. Harikrishna drew against Anish Giri. Nodirbek drew against Fedosiv. Pragg drew against Gukesh. Arjun drew against Sarana. Leon drew against Jordan. And Kamer is losing to Caruana. So बहुत सारे games थे. And most of them are in a draw, at least for Indian players. And let's go full screen again. I think Divya's about to resign. There it is, handshakes, and Divya finally resigns in a game where I think we kind of knew for a while that there was no chance. She fought
hard, but I think Saj, hard luck at the end, yeah? Absolutely. It was not the nicest game. I think I'm sure she must not be in good spirits right now. But yeah, chat. कुछ अच्छा लिखना ताकि दिव्या उसको पढ़े and then she feels much better. Of course, tomorrow is a rest day. That's a good opportunity for both Arjun and Divya to get their thoughts together and start the tournament with a fresh mind. Yeah. The tournament, Tata Steel Chess 2025, 8 rounds are over. I think 5 more to go, 13 rounds in total. So this will be amazing, chat. Open section mein, if we can show the standings once, Niribhai, I think Gukesh, Nodirbek and Pragg, all three of them still in lead. I think Caruana will come to 4.5. Apart from that, we have the standings. Fedoseev still in second place, fourth place technically. And with 4-5 rounds to go, बहुत मजा आने वाला है. 2 Indians leading right now. And then we have the standings for the challenges section. Yahan pe Van Huen is leading. Again, I would like to remind everyone, this is the guy who won the gold medal on the second board in the Olympiad for Czech Republic. He's leading the event with 6 points. This actually gives him a great chance to actually play the Masters section next year, which is going to be amazing. And yeah, Vaishali on 7th place and Divya sadly on the 13th place, but hopefully she can make a comeback. Thank you, Shad, for joining. भाई रात तक यहाँ पे रुकने के लिए I know थोड़ा सा game slow हो गई थी last time because you're just waiting for the game to finish. But at the end, wishing everybody a happy Republic Day again and hoping that Arjun and Divya both strike back and Gukesh, Pragg keep going forward and all the Indian players do well. So chat मिलेंगे परसों कल के रेस्ट डे के बाद थोड़ा रेस्ट कर लो एनर्जी गैदर कर लो भाई कल हम भी करेंगे एंड परसों आएंगे फिर से बहुत मजा आने वाला है एंड नॉट टू फॉरगेट मॉड चैलेंज है भाई जैसी स्ट्रीम खत्म होगी instantly comments में सारे positive comments आने चाहिए especially about Arjun and Divya motivating them to get back in form. So पढ़ेंगे कल rest day है very likely they will read it and give them all the motivation you can. साज भाई thanks a lot for joining. बहुत मजा आया भाई आज कमेंटेट करके आज तो विशी सर भी थे भाई आज तो अलग ही लेवल का वो था सीन and thanks on Niri bhai for the amazing broadcast. What's the best way to follow any chess event from the World Chess Championship to the candidates, the Speed Chess Championship, Title Tuesday, and so much more? Chess.com/events has all of the top chess tournaments played both over the board and online. Analyze and review games from the world's greatest players with live commentary, cloud analysis, Opening Explorer, and table bases. Find all the key event information